I request all the guests to please be seated. Okay, but I'm from the state. अच्छा उससे कब हुए? 19 क्या चल रहा है? 2001 बैच 2001 BCS और प्रमोशन कब हो गया? हमारे यहाँ तो सबका स्टक हुआ पड़ा है अभी इसका कोर्ट केस हो रहा है वो एक स्टेज आती है फिर जब बहुत सारी पोस्टें होंगी तो निकलेंगे ऐसी बात है मुझे लगती है हमारा 95 के साथ हो गया था मेरा एक सर्जन जी था यूपी में तो we were two of us will stand with the 95 guys उनके साथ अभी चलो सर कोलैबोरेट करेंगे स्लाइड कौन बना रहे हैं आज की आप बना रहे कौन नहीं वो तो सर कर रहे हैं त्रिपुरा और उड़ीसा मैं तो अपना भेज दिया हमारा वो क्लाउड फ्लेवर की स्लाइड थी तो नहीं हरियाणा में बैठता हूँ सर आपके कहाँ से ऑफिस मेरा पंचकुला में है देवीलाल स्टेडियम में ओके आपका कहाँ है पर नंबर ले लो मेरा तो हॉकी स्टेडियम में मॉर्निंग हाँ वैसे स्टेडियम में बैठे होते हैं Ladies and gentlemen, please welcome our dignitaries. On dais, we have today with us Honorable Union Minister, Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakurji. Welcome, sir. Honorable Minister of Youth Affairs and Sports and Public Works Department, Government of Manipur, Shri K. Govindas Singh Ji. Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of West Bengal, Shri Arup Biswas Ji. Secretary Sports, Government of India, Srimati Sujata Chaturvedi Ji. Namaskar, and a very warm welcome to all the distinguished delegates on second day of Chintan Shivir of Ministers of Youth Affairs and Sports of states and UTs. Today, we have two sessions to deliberate and share ideas, followed by the concluding session, where we have 5 minutes presentations by each of the 4 groups formed yesterday. After the concluding session, we have customary Manipuri lunch, followed by visit to Loktak Lake, organized by the government of Manipur. I request Honorable Minister of Youth Affairs and Sports, Government of West Bengal, Shri Arup Biswas Ji, to please come to the dais, to please be seated on the dais.
May I request the Punjab Minister Gurmeet ji, please come. Is Himachal Minister here? No. No, sir. टिंकू जी कल आए थे मैं टिंकू जी कल बैठे थे टिंकू जी वर यू हेयर यस्टरडे टिंकू जी कल आप बैठे थे ऊपर तो फिर सिक्किम के मिनिस्टर साहब को बुलाइए लेप्चा जी को Now we begin our first session of the day 2. Our first session is issues and challenges in sports governance. In this session, we have 6 presentations followed by open house discussion. I now invite Shri Sandeep Pradhanji, Director General Sports Authority of India, to moderate this session and make the first presentation. Good morning, all the dignitaries on the dais and off the dais. Thank you, Jatin. As all of you know, sports governance एक ऐसा सब्जेक्ट है कि स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अगर स्टेट में या कंट्री में करना है जिसके लिए रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, लेकिन जो हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का चार्टर्ड है जिसके हिसाब से हम हर स्टेट में या कंट्री में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन या स्टेट एसोसिएशंस के माध्यम से वो स्पोर्ट्स को हम डेवलप करते हैं, उनको हम ऑटोनॉमी देते हैं, तो उनके साथ हमें काम करना ही है. So that is where the requirement of sports governance comes in, and that is where the requirement of understanding of what is the role and responsibility of the state government, what is the role and responsibility of the state associations or national sports federation. Generally हमें एक एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर या एज ए गवर्नमेंट एक ये फीलिंग होती है कि हम हमारे सेक्टर में हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेट एसोसिएशंस के साथ जिन्होंने भी डील किया है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ जिन्होंने भी डील किया है, वो उनको सबको पता है कि एक बाउंड्री या एक लिमिट डिफाइंड है. हम अगर फंडिंग भी करते हैं तो फंडिंग के साथ में हम फेडरेशंस को क्या क्या और कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि कौन सा काम कैसा कर सकते हैं और कौन सा एरिया है जहाँ पे उनको ऑटोनॉमी है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है. और सेकेंडली, जब तक हम स्टेट एसोसिएशंस को एंगेज नहीं करेंगे तब तक स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही लिमिटेड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कर सकती है. ये सिर्फ ये प्रेजेंटेशन का मकसद है. तो अब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो जनरल बॉडी है, उसमें 205 से भी उपरांत देश एफिलिएटेड है. उस 205 में से 15 सिर्फ कंट्रीज़ वो उनके जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं. सेम वे बहुत सारे वर्ल्ड फेडरेशंस एफिलिएटेड है, उसमें से भी 10 या 15 नेशनल स्पोर्ट्स वर्ल्ड फेडरेशंस उनके जनरल बॉडी के मेंबर हैं. इसके अलावा 70 इंडिविजुअल मेंबर्स है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के और कुछ एथलीट रिप्रेजेंटेटिव्स है. तो ये जनरल बॉडी, जैसे आप जानते हो, जनरल बॉडी किसी भी एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी या उसका एक बेस होता है, तो ये उनका स्ट्रक्चर है. जी एफिलिएशन जो वर्ल्ड फेडरेशंस को देते हैं, इसके साथ साथ में पैरेलल उनके एसोसिएशंस बने हुए हैं कॉन्टिनेंट लेवल पे. फिर कंट्री में हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो कि IOC से एफिलिएटेड है. सेम वे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एफिलिएटेड है और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के साथ में स्टेट एसोसिएशंस एफिलिएटेड हैं और ओलंपिक एसोसिएशन के साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ में स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस एफिलिएटेड है. कई जगह पे स्टेट में आगे बढ़ करके फिर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की भी स्थापना हुई है. तो 2011 में स्पोर्ट्स कोड जब ये लागू किया गया, तो उसके पहले भारत सरकार के बहुत सारे सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस थे. बेसिकली उसको इकट्ठा करके ये स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए स्पोर्ट्स कोड इकट्ठा किया है. मैं ये जानना चाहूँगा कि कितने स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स एक्ट या अपना खुद का स्पोर्ट्स कोड लाया. कैन आई नो फ्रॉम द डायरेक्टर और द स्टेट सेक्रेटरीज हु आर प्रेजेंट हियर, any of the state who has got the state act? We know Kerala has got the act, we know the Rajasthan has got the act. What do you have in your state? Sir, it's a code or administrative instructions or? No sir, it's an act. Which state? Bihar sir. Bihar, you have the state act. Yes, sir. Okay, then Kerala we know it. Kerala and Rajasthan we are aware. And Bihar has a sports act.
any other state which has come up with the code or issued the circular that will follow 2011 code? Sir, we are in the process of implementing it. We have Okay, just so we'll just restrict to those who have done it. सर हमने स्पोर्ट्स कंडक्ट कोड बनाया था, लागू भी किया था, बट एजिटेशन के बाद फिर 2 महीने बाद उसको वापस लेना पड़ा. ठीक है. Okay, so that's your experience. Is it for the state association governance and the state governance, or it is for running the sports by the state authority within the state? So does it deal with how the state association should function and what will be the funding pattern if they don't do anything that sort is mentioned in the act? I don't think so, yeah. Any other state? So now many high courts have held that in National Sports Federation's case, when they are mandating the general election, the election of a general body, they are allowing only the state association to vote only if the state association is following 2011 sports code. So sooner or later, for better governance, there has to be some kind of mechanism, either by way of act or by way of code or by way of some kind of instructions to regulate and to govern. Now, as all of you know, state associations are registered trust or registered society. Nowadays, the Section 8 companies are also formed. So there are, 7 or 8 or 10 people come together and form these associations. So how does state government get mandate to pass the act or to pass the sports code? It is only and only because the moment the state association governs that particular sports in the state, or the National Sports Federation runs the particular sports in the country, they get monopoly to run that particular sports, to field Indian team, to field your state team. So when any authority or any registered body gets a public function, they get a capability or they are authorized to do a public function, then the government is well within its power to say what is to be done and what is not to be done. So there are the broad components. All of you are aware what are the sports code ka broad components. But yes, we in ministry, we have many officials who deal with sports code, and any state government who need any advice, suggestions, all of you can contact the joint secretary, director, or of course secretary sports madam is also there for the guidance. Now model code has many guidelines, such as model code of election, then what should be the terms for the executive committee, who is eligible to vote, and so on and so forth. All the rights and the responsibility of the federations are mentioned. Now recent High Court judgment and the Supreme Court judgment mandates, and on the basis of which the IOA constitution has also been framed by the justice appointed by Supreme Court, it is still to be finalized, but the election of the recent IOA general body and executive committee was conducted on the basis of this particular code, in which the 3 maximum terms for the office bearers have been mentioned with a cooling off period. There is a president and the 14 executive committee members. The president of the IOA will be before you in some time. The representative of the sports persons, so that is the athlete commission concept has been recognized in the IOA. There is an athlete commission consisting of representative from all the national sports federation. They form their general body. They elect the athlete commission. Athlete commission then nominates few members to the general body of the IOA and 2 members into the executive committee of the IOA. So that's how the IOA has been structured. In place of Secretary General, now there is a Secretary General cum CEO post. So there is one president who is elected, and then the second person who is a probably professional person. That is the intention. Now we have, as many of you know, that in the central government we have a provision under assistance to National Sports Federation. To fund the National Sports Federation, we give the amount money to the National Sports Federation to do most of the activities, such as organization of the national championship, participation in the international competition, to conduct the camps, to conduct or host international competition in our country, to buy the equipments and things like that. So here I would like to know which are the states who are funding the state associations, and let us say assume that the state associations, the funding in say smaller state more than 1 crore and in the bigger state more than 5 crore. So I know for sure that I think Odisha does a good amount of funding to the state association as well as to the National Sports Federation. I know Madhya Pradesh government also has the policy to fund the state associations. Do you fund for hosting the state camps also? We fund basically for competitions. Competitions.
Not too much, I think. Which are the states who fund the state associations for conducting the camps? Sir, Bihar, sir. Bihar, Yes, sir. We do it. Uttarakhand, Gujarat, Jharkhand, HP. Sir, Telangana. also we take care of the camps. Pardon? We take care of the camps also, sir. So you fund them or you organize It's in a your combination, sir. Sometimes we fund them or sometimes we do it in kinds. in camps? So now it is very important to understand that even if you run sports nursery, even if you run sports school, even if you run center of excellence, ultimately the player will represent the state only if he is selected by the state association. And to be very honest, when I went to Gujarat and worked there for 4 years, in the beginning I realized that many of the officers or the officials who are dealing with the sports were not aware. And the Sports Authority of Gujarat, where I worked, we had a mandate of just doing a school game selection and sending the team of the school game to the national competition. That's all. We had no linkage, no funding to the state association. So therefore, please bear in mind that singular approach will not work. You like it or not, we have to work with the state associations. Or that their team will only represent your state. The player will be selected to represent India only if, while representing the state, the player performs well. We may be organizing many competition within the state, but those state associations, state championship, national sports federation, national championship only are relevant for representing the nation. So all the states, wherever you are spending good amount of money, please ensure that all the activities of the state associations are taken care of properly, because that is the core activity as far as the state is concerned. We give a lot of funding, apparels, everything when we organize the competitions ourselves. My suggestion to all the states, wherever the state government is organizing the competitions, please ensure that the technical conduct is completely done by the state associations. And that's the model we have developed in the Khelo India Games. Entire technical conduct, and it doesn't mean that we just hire or take the services of the qualified technical referees or judges. That's again a misnomenclature I have seen in many places. That, sir, we have taken a service of qualified technical officials. It doesn't make your tournament official. Only if the state association, they nominate a technical director to conduct the competition, they nominate the technical officials. We make a payment not to the technical official but to the state association. Only if then, only in that case, the official forum of state association comes into being. So that is my humble request to all of you. Now these are the examples, what is the structure in UK. So essentially, I'll not go into detail, but there are two funding models. In UK, the funding is done to the National Sports Federation. Like in India, we fund to the National Sports Federation. But like in Japan, Japan government gives fund to the Japan Olympic Committee. So US also has a very strong US Olympic Committee, which has been formed by the statute of federal US government. And very few people will be aware of this fact. Even though it is an autonomous body, but it has been made by the statute of the government. And they are accountable to their general, US government, and to the extent that even the regular audits are also conducted. So what type of moderation is required, it is also very interesting. Whether we should get into the selection policy, yes. How? Whether the selection policy is transparent or not. Whether it gives an arbitrary authority to the selection committee, state has a right to see. Whether you have a right to nominate your member in the state selection committee, no. We should not. We should avoid having our representative on the selection committee. We should only ensure that the selection process is transparent, and it has the element where the athletes are aware that yes, if I do this, I will get selected. It should not happen that there is so much of arbitrariness or a lot of authorities to the state selection committee which they can exercise. So this is where you are well within the right. Whether you can conduct a competition, you can conduct the competition. Suggestion is either you take a technical conduct completely from the federation, or you ask, better course of action is to ask the state association to conduct the election, fund them, and you ensure that the other than the technical conduct, rest of the things like event part of the competition is taken care of by you or collector or municipal commissioner. So the robust system is one,
where the state association role, especially in the competition, is very important. In most of the developed countries like in Europe or USA, it is the athlete gets registered with the state association and the national association. The clubs get registered with the state association and the national sports federation, and that's where they get a main source of funding from the registration fees. However, in the case of, say, UK, you see the football clubs organizing, say, European League or various league, the structure is slightly different. If you are interested, what is the structure of different leagues, our friend General Secretary from AIFF is also present here, so I will not dwell upon that. So now in the last slide, we are just trying to say, you must ensure that all the state associations have the internal complaints committee. You must ensure that their elections take time, are conducted in time. The age, tenure, some kind of guideline is there and it is followed when you give a recognition. And you should also see whether your state association is affiliated to the National Sports Federation, which is recognized by the Government of India. Otherwise, there is a dichotomy that comes in. Thank you very much. Thank you, sir. I will take a moment to just sum up what Mr. Pradhan said. It is very important that we look at the governance side of things also in the states. हर स्टेट में स्टेट एसोसिएशंस हैं और उन पर कई लोगों का लंबे समय से कब्जा है और बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट्स उनको ठीक से गवर्न नहीं करती है तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि एज और टेन्योर गाइडलाइंस क्या है या किस तरह से उनको मॉनिटर करना है. तो हमने आपको ये जो सेशन कंडक्ट किया इससे ये दिखाने की कोशिश की कि ये आपका भी काम है और ये हमारा जो स्पोर्ट्स कोड है या जो आपके पास भी जो लॉज हैं वो सब यूज़ करके आपको अपने स्टेट एसोसिएशंस को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए और उनके माध्यम से अच्छे खिलाड़ियों को ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सरकार को भी खूब इंटरेस्ट लेना चाहिए और पहल करना चाहिए. आई विल रिक्वेस्ट ऑल द सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, ACS to kindly have a meeting of these associations, whichever sports are prominent, whichever sports you think are prominent, to have a meeting with them and discuss what they're doing. And in case the governance aspect is not clear to you, please engage with us. We will help you to understand what is important in that. And then, you can fund them in a way that the best athletes can reach the international fora. So that is one important takeaway, I think, from this session, which I would request all the senior officers here to, and the honorable ministers to kindly keep in mind when they proceed with their work once back in the state. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have next presentation by the All India Football Federation. For this, I invite Shri Shaji Prabhakaranji, General Secretary, All India Football Federation. Very good morning, Honorable Minister Anurag Thakurji, all the ministers of sports from various states, Sujata Chaturvedi ji, and all the dignitaries present here. It's really an honor for the sport of football to be present here because you all are the important key pillars for the state of sport in India. And we are very fortunate that we are getting this opportunity to present before you what we think that the football, the direction is taking as All India Football Federation. First, we are coming to share with you the mega project, that's FIFA Football for School program, which was launched on 30th October 2022, when our Honorable Minister of Education, Dharmendra Pradhan ji, signed the MOU with the FIFA President, Mr. Gianni Infantino, and also with All India Football Federation. That was a landmark decision, and I'd like to thank the Ministry of Sports, Anurag ji, for his contribution to make this happen, because we moved very fast to sign this MOU just to bring the Football for Schools project, which is the FIFA's objective is to implement that project in 211 member countries, and it is already implemented in 60 countries, and it will cover in India
to 26 million children, 2.6 crore children, which will go to 140,000 schools in phases by 2026. And it is already on roll. The Ministry of Education, along with the Ministry of Sports, there is an MOU being signed, there's a steering group being made, the executive committee is being made, which is, the steering group is headed by the Secretary of Sports, School Education, Ministry of Education. And what we are already going to receive 3.6 lakh footballs by May 2023, which will be distributed to 15 states. And by August, we will receive 4.6 lakhs footballs. The idea is that to connect the schools through football, whereby through football, we can bring them, empower the children, empower their life skills and engage them in a way we create an environment for football to grow. At the same time, their life can change through football. So therefore, the distribution of balls will all start in due course of time, where the FIFA is funding the entire football, number of football that is going to be 1.15 million, and which would be one of the big support which is going to come from FIFA. And also FIFA has developed a mobile app which covers how the program will be implemented and how the trainers will be trained, what the trainers should do in the school. Therefore, and we also as All India Football Federation developing an app to monitor everything so that it doesn't become only in paper, but it is implemented in true spirit. And that is where we would going to engage this many children, and for the first time this will happen. And thanks to Government of India for all the support of what it is bringing it to football growth. And then the most important part, this is a new management which has come into effect from 2nd September. And our Honorable President, Mr. Kalyan Chobe, is here. When he got elected, he made an announcement that within 100 days, we will come up with a strategic roadmap which would define the future of football. And football, as you all know, is the #1 sport in the world. It engages 4.6 billion people. And we all experienced when the FIFA World Cup happened in Qatar, a tiny country, how it got engaged the whole world. And India also, though India was not the part of World Cup, but it was the second most participating country as far as visits from Indians to Qatar was concerned. So therefore, that big football is. And what we know is that we have to work as one team to make that happen. Because if we can engage the children in the right way, and that is where we have come up with 11 core areas, and it is divided into 6 strategic plans. Why 2047? One can say, we were in Mumbai with Anurag Thakurji, and in the discussion, Anuragji mentioned, we should look for a long-term plan. And it is his, one of the ideas. Like when India reaches to 100th year of independence, our sport, that's called beautiful sport, should be an incredible state of sport at that time. And we can assure you, as a football governing body, that we will make India proud with our work, with our commitment, but for that, we all need you. Each of the state can play a bigger role to make a sport which is loved by masses. And I am sure, we can engage in the discussion where each of the state can play a major role. So why 11 core areas? Because as we know, it's a team sport. In the short term, we cannot be a medal-winning sport, but we can create champion footballers who can be the greatest ambassadors India has ever produced in sport. Why not? Because the place we are here in Manipur, its economy is also defined by football. Because more than 100 players earns more than 50 lakhs a year, because
they are professional football. And this is a factory of football where we are. And what Manipur does is an incredible work. And we are very proud of the work what they do. And each of the state can recreate that. It can create employment, it can create value proposition, it can bind. But yeah, medal will come, because the last medal we won was 1962 in the Asian Games. But that was our golden era. We can get back to this golden era by 2047, that we believe in, but for that, we need to work as a team, work as one. And that is what we have a very strong collaboration with the Ministry of Sports and SAI, and we would like to extend that to all the states. And we are blessed that we are working closely with few states, and we are very sure that we will reach to every state in India and work closely. Our Vision 2047 was also greatly supported by AFC, Asian Football Confederation, as well as FIFA, and the Secretary General of the AFC visited and also met with Honorable Minister and extended the whole support to football in India. And the governance part, I don't want to touch. Already Sandeep Pradhanji mentioned its significance and importance. At the state level, we would like to strengthen the capacity of the state association, because each of the state associations are bigger than the European countries which are dominating football. And each of the states can reach to a bigger level than European countries in football. But what we need is to strengthen the governance part, build their capacity part. So we already started a support system of funding to all the state associations to build their capacity. And I'm sure we would like to work with the state governments, specifically the sports department, to strengthen the capacity of the states. Because unless we strengthen the capacity of the state, improve the governance practices, we will not be able to transform ourselves. And each of the sport, and we believe football being a leading world global sport, can set an example for other sports. And because, one football can glue 22 players, but sometimes 30 players are also playing, where, we see, and we ourselves also play, when we have more players. So therefore, this is a sport I'm sure you would like to adopt, which is a cheaper sport, economically viable sport, and it can engage children at that particular age, because we are dealing with so many health and other issues as well. So therefore, we would like to collaborate in the infrastructure side as well, because infrastructure is where the state governments will have to develop. And I am sure you will find it viable, a win-win opportunity to invest in infrastructure, because investment in infrastructure should not be seen as white elephant. No, we can give you plans and ideas to make it a viable possibility, commercially successful possibilities. We have the global experiences. We can bring the FIFA experts, global experts, to work with you so that you build stadiums, you build sports infrastructure, which is going to create value, not only for the sport, for the community, for create employment opportunity. It will be a commercial win-win situation. So therefore, we would like to collaborate and take football forward. And digital transformation is one of our core areas. Yeah, and we'll be fast with a few. I'll take 2 minutes more. As you know, the government of India is very focused working in the digital transformation, and we as sport governing body does not want to be behind. We want to take it forward, and the digital transformation will help to engage more children, take the sport forward. That we want to bring it the analytics part, the sports science part into it. And for us, the clubs are very important, the key strength. We have at present 4,500 clubs. How we can grow to 10,000 schools, 10,000 clubs. And the equally is the grassroots. We have launched a project called Blue Cups. Why? Because we are known as, our national team is known as Blue Tigers. So we want to create Blue Cups, who will ultimately become Blue Tigers and will dominate Asia, dominate the world.
And that is where we are working, and I'm sure we can collaborate for our grassroots project also with all the state governments. And talent identification is one of our key areas. Why? Because we have come up with a project called Project Diamond, where we would like to find an iconic star. In cricket, we have stars like Kohli, Tendulkar, Kapil Dev, everyone. In football, we would like to have a one star. Definitely that's possible. And we would like to work with you that, it should be a race among the state. Which state can produce a talent equivalent to a Kohli or a Tendulkar who will be the dominating the world? And we can. Yeah? There are enough talented children in India. And competition, as you know, some of the states have coming up with what is the ideal structure for the competition. We can say competition is our weak link. Our children who are talented doesn't play number of games required. We need to give them more game time. We need to, then only the coaches will also get the more game time. That is where we are restructuring the whole competition structure, so that we can identify talent who can grow, get the right platform, and that is where we'll find that kind of talent and 11 players who will change and transform Indian football. And the national teams, is very key. We already, when the new management took over, we were 106 ranked. We are now 101 ranked. And we are very sure, our president already made a statement that we will break into 100 very soon. And we are working on a target. And by 2026, we want to be top 10 in Asia. By 2047, we want to be top 4 in the world. And that way, we will be playing in the World Cup. And the last part is the commercialization and marketing. See, without sustainable environment in sport, we can't grow. We are working in a very thin budget right now, which doesn't justify that we are the largest growing economies of the world. But if you see football, we have less than 100 crore budget. What we can do? Nothing. So therefore, we have a target how we can grow 500 times by 2026, and how we can go to 5,000 crores. So that is what, I have to say, sum up. Thank you once again for this opportunity, and I'm sure, we will have more opportunities to interact and take this sport forward and make India proud. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, I welcome Dr. P.T. Usha ji, President Indian Olympic Association, and Shri Kalyan Chaube ji, President All India Football Federation and Joint Secretary Indian Olympic Association, who have joined us for this Chintan Shivir. Before we move forward, I want to request all the distinguished speakers to please strictly follow the allotted time limit. The buzzer will be sounded 1 minute before the allotted timeline and with a long press at the end of the allotted time limit. Please follow. Now we have presentation by the Indian Rugby Football Union, for which I invite Shri Rahul Bose ji, President Indian Rugby Football Union, on the dais. Morning. Firstly, I would like to thank you for organizing this. Thanks go to MYAS, Sports Authority of India, Government of Manipur, and the Union Minister for Youth Affairs and Sport, Anurag ji. 2 or 3 times you have intervened with us and they've always been effective. Thank you for your support. रग्बी खेल कोई नहीं जानता, ये सत्य है, हम भी मानते हैं। मैंने इंडिया के लिए 11 साल खेले और रग्बी 42 साल के लिए, वो भी कोई नहीं जानता, मैं मानता हूँ। So let us first introduce you to rugby. सत्ताईस स्टेट्स में हम हैं, 300 डिस्ट्रिक्ट, बाकी सब आप देख सकते हैं। करीबन 740 डिस्ट्रिक्ट में से रग्बी 310 डिस्ट्रिक्ट में खेला जाता है। इंडिया के 40% डिस्ट्रिक्ट्स में रग्बी इज प्रेजेंट, लेकिन कोई नहीं जानता।
2000 schools, universities, 25 national tournaments, सारे accreditations है, लेकिन फिर भी इस खेल को कोई नहीं जानता. क्यों? The answer is very simple. अगर आप एक स्पोर्ट्स NGO चलाते हो, तो जाहिर है आपका काम है ग्रासरूट्स डेवलप करना. जाहिर है आपका काम है लोग जो आगे बढ़ना चाहते हैं स्पोर्ट्स के माध्यम से बढ़ें. जाहिर है आपका काम है कि जिनमें भी काबिलियत है, you will give them a chance to shine. That is the work of a sports NGO. But if you are a sports federation, your primary reason for existence is to win. Is to win. आपको जीतना है. ये आपकी जिम्मेदारी है. Without winning, nobody will be interested. If you are a sports federation, which is why rugby is hardly known. इसके लिए हमने head-on फैसला किया. Internally, ethics and professionalism, we will be the most ethical and professional federation we will try in history. But what about winning? We instituted a high-performance system. Professional contracts. All the players are being paid now, national players. World-class coaching unit from South Africa with Indian assistant coaches. State-of-the-art infrastructure, चाहे वो camps में हो, चाहे वो sports science में हो, चाहे वो rehabilitation में हो. Sports science, psychological, we have a full-time psychological, mental health person on the rugby ecosystem. Analysis, obviously, we know how important that is, and international exposure. इसके बाद, what were the results last year? For the first time, we picked up 4 silvers. Under 18 girls at the Asia Rugby Under 18 Sevens, Uzbekistan, Nepal, silver. Indian women's team in Jakarta, silver. Indian Under 20 women's team in Angren, Uzbekistan, silver. This year, we want to convert all those 4 silvers into gold. जितना हम पैसा, मेहनत इस हाई परफॉर्मेंस में दे रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूं हमारे इसके पहले 20 साल में हमने नहीं दिया. Okay, so what's the situation? The Indian men's rugby team is 12th in Asia at multi-sport events like the Asian Games, Commonwealth Games, and the Olympic Games. The Indian women's rugby team, and this is to be noted, is 8th in Asia at the same multi-sport events. Indian Under 20 women's rugby team is 2nd in Asia. Indian Under 18 girls team is 2nd in Asia. Indian Under 20 men's rugby team is 4th, and the Under 18 boys rugby team is 4th. Nobody knows this. So then we said to ourselves, ठीक है, अब तक तो ये है रास्ता, आगे? For any federation to actually work with enthusiasm, you need a dream. It can be a crazy dream. Our dream is to make the Olympics in 2028. इसके पहले 75 साल के लिए सिर्फ एक टीम ओलंपिक्स में शामिल हुआ है इंडिया से, वो है हॉकी. उसके पहले फुटबॉल हुआ करता था. Can we be the next team in India's history to make the Olympics? In 2028, we have to be one of the top 2 nations in Asia. Today, our girls are number 8. What's the plan? Top 5 in the Asia Rugby Sevens in 2022, done. Women got a silver, not just top 5. 2023, top 6 in the Asian Games. 2024, qualify for the Asian Rugby 7 series. The men will medal. 2025, top 5 of the Asian Rugby series. The men will qualify. 2026, top 4 of the Asian Games in Nagoya for the women and top 8 for the men. 2027 Olympic qualifiers will happen. We will win the series. If we win the Asia series, it means we are then in the top 3 nations of the world, and in the qualifiers we have to beat one of 2 nations, probably Japan or China. This is the dream. It's a crazy dream, but it's a dream for which we have built a pathway with our intellect.
after you dream and after you strategize, the only thing left is parishram, parishram, parishram. Just solid hard work. Every single day of our lives, we work harder than most to try and make this happen. But our hands will always work more than our mouths. You will never hear from us again till we come back to you with results. Sujata ji, you are testimony to this. We come to you once a year, Sandeep ji, and we just come to you and tell you what we have done with the money you have given us. And this is the countdown to LA 2028, which when the Ministry of Youth Affairs and Sports saw this presentation, they said, can we please have this presentation for every other federation? It's every month broken down. As we speak right now, our team is in Sri Lanka. Every month broken down right up till 2028. Where we are, and if we fall behind, we know exactly where we fall behind. Asian Youth Games, Olympic Qualifier, Olympiad. Of course, ये सिर्फ स्पोर्ट्स एनजीओ की जिम्मेदारी नहीं है कि तरक्की करें through sport for all the underprivileged. 27 states, top left corner is the most important statistic. We are number 1 in the world in rugby. Number 1 over Australia, over New Zealand, over South Africa, over England for total participants who touch a rugby ball for the first time. 214,000 people. It's the number 1 program, and it's 90% rural and tribal, and the female participation is 47%. Outside of this, internally, I have no time. I can talk to you about the Prevention of Sexual Harassment Committee and policy we've put in, one of the most forward-reaching policies any federation has. I can talk to you about the gender justice and gender equality policy that we have. We pride ourselves on having every single national tournament for men, women, boys and girls at the same time with the same facilities and the same money given to every athlete. We pride ourselves on creating jobs for our athletes who have finished playing. अरे यार वो तो खेल चुके हैं, अभी इनका क्या करना है? नहीं करना है. There's a private initiative aside from all the government jobs that our players are getting, which is called Second Innings, and we're in the process of signing a memorandum for that. We can talk to you about the fact that we give 6 weeks of spouse leave. We give 14 weeks of leave for the person who is giving birth or adopting, but we give 6 weeks for the spouse because we know how important it is to be there for your partner when somebody gives birth or when somebody takes on a child. We can talk about all these things, but finally I want to talk about only one thing, which no sports code, no constitution, and no presentation will talk to you about. And that is, I have 60 seconds, and that is love. I will give you one story. सरस्वतीपुर छोटा सा चाय बागान है बंगाल और सिक्किम के बॉर्डर पे. 3 वहाँ पे गांव हैं. एक गांव का साइज होगा इस कमरे का साइज. 3 गांव हैं, 14 नेशनल प्लेयर्स. तो मैं गया वहाँ सर कि यहाँ पे रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है. वहाँ पे मैं गया, सबसे मिल रहा था. सारे नेशनल प्लेयर्स, लेबरर्स, चिल्ड्रन ऑफ टी गार्डन लेबरर्स. उनके झुकी झोपड़ियाँ हैं स्टिल्ट्स पे. एक जगह पे मैं जा रहा था, अनुष्का ने कहा सर जी आप मेरे घर में आइए. बहुत से घरों में जाना था. मैंने कहा ठीक है चलो, ये प्रोग्राम में नहीं था. अनुष्का कह रही है घर में लेकर कि मेरी माँ मर रही है, वो 2 साल से उसको कैंसर है, आप उनसे मिलिए. मैंने कहा ज़रूर. माँ को उन्होंने घर से निकाला है, चारपाई पे सुलाया है क्योंकि बहुत कम दिन है. शी इज़ ऑन टू पैलिएटिव केयर. लेटी हुई है चारपाई पे, थोड़ा सा शेल्टर है, आधा एक सेब है, आधा एक मैंगोला का एक ग्लास है वहाँ पे, और मैं बैठा हूँ वहाँ पे, और वो होश और बेहोशी से होश में आ रही है. हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैंने आपकी फिल्म नहीं देखी लेकिन आपके बारे में बहुत सुना है, दुख है, मैं अनुष्का को इंडिया के लिए खेल नहीं पाऊंगी देखना को. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आप देखोगे. बेहोश हो गई. मैं निकल गया.
अनुष्का मुझसे कहती है कि डॉक्टर ने उसने उन्हें 2 दिन दिए हैं, उसके बाद वो मर जाएंगे। वापसी पे 3 गांव देखकर मैं वापस आ रहा हूं। अनुष्का कहती है फिर से आओ, माँ बुला रही हैं। गया मैं। उसने सिर्फ एक चीज़ कहा, मैं तो मरने वाली हूं, अनुष्का का क्या होगा? तो मैंने कहा जब तक हम हैं, हम सब हैं, आपको किसी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए। उसने मुस्कुराई, फिर से बेहोश हो गई। अनुष्का को देखा मैंने, एक आंसू नहीं। 2 दिन बाद अनुष्का का फ़ोन आता है, माँ मर गई। नहीं, सेक्रेटरी से फ़ोन आता है। मैंने अनुष्का को फ़ोन किया, मैंने कहा अनुष्का कैसी हो? इस बार वो रोने लगी बहुत। और फिर उसने कहा सर आप आए, आपके लोग आए, आपने अभी मुझे फ़ोन किया, इतना काफ़ी है, मैं इंडिया के लिए खेलूंगी। और ये कोई नहीं सिखाता। इफ़ यू लव द गेम एंड यू लव द पीपल who play this game and you love the players, you will never do anything wrong. Thank you. Thank you very much. Now I invite the team Indian Olympic Association on the dais for the presentation, please. Honorable Minister for Sports, Sri Anurag Thakur ji, Srimati Sujata Chaturvedi, Secretary of Sports, distinguished Sports Minister and Secretaries of respective states and UTS. I feel proud and privileged to be here among the sports ministers of all the states whom I feel are the torchbearers and custodian of sports of their respective states, from where each sports person is born, given care, support, and finally lined up to represent our country in international arenas. I congratulate each one of you for giving care and wholehearted support to each sports and sports persons of your respective states. As being the president of the Indian Olympic Association, it's my first function that I am attending, where the most responsible dignitaries from each state are present with their valued visions and enthusiasm to ensure better development and achievement in sports, not only in the state but for the entire nation to become proud by winning medals in international games and championships. We have been given an opportunity to make presentation on issues and challenges in sports governance. Thank you to the organizers of Chintan Shivir for this opportunity. My colleague Sri Kalyan Chaube, who is the Joint Secretary and Acting CEO of the Indian Olympic Association, joins me to make this presentation. Our brief presentation will include about IOA and its objectives, key challenges and issues in sports governance, about recognition, affiliation of NSFs and SFAs, collaboration amongst key stakeholders, age and doping fraud, clearer roles and need for higher accountability, sports infrastructure, about technical, personal development programs for the sports person, etc. At the end, I would like to remind everyone about the necessity of the unified way of working among central and state governments, IOA, Sports Federation, state sports associations, state Olympic associations, other sports related agencies, etc. to make India a strong sporting nation. Thank you very much to everyone present here, and I hand it over to Sri Kalyan Chaube for the PowerPoint presentation. Thank you. Thank you, Dr. P.T. Usha, President, Honorable President of Indian Olympic Association, Honorable Minister of Sports and Youth Affairs, and also
Information Broadcasting Minister, dynamic leader and sports enthusiast, Sri Anurag Thakurji. We thank you very much for giving us this opportunity to share our views in this Chintan Shivir. Respected Minister, Secretary of Sports, senior officers from the states and union territories. Our subject of discussion here is given to challenges and issues in sports governance. Just prior to our presentation, when Secretary General of All India Football Federation was speaking regarding our plan for the development, whether it is football or any other sport, like how Rahul has also spoken. So in football, we have identified 11 points which Saji has mentioned, like governance, infrastructure, digital transformation, refereeing, clubs, grassroots, talent identification, coach education, competition, marketing, and national team. Similarly, in IOA, we have identified 8 points which we believe it is challenge and issues. Now, under the first women president and also renowned, globally reputed athlete, Dr. P.T. Usha, under her leadership, under her presidentship, IOA is nearer to its centenary celebration. It's formed in 1927. As you know that it is recognized by International Olympic Association, Commonwealth, Asia Committee, and ANOC. So unlike other NSF, IOA has very specific roles and responsibilities to perform. So it is like, it is promote Olympic values and education, promote IOC International Olympic academies, foster athletes, provide Olympic scholarship, create more athlete-centric programs, initiate to get more laurels for India, and celebrate Olympic Day that is on 24th June every year. So what are the challenges we have? 8 challenges. These are the first is affiliation. Sir, affiliation is an area where we find every week a new challenge. We have, according to our last electoral college, there were 33 federations who were affiliated. So out of 33, 1 is under dispute now, that is handball. So these 32, also there are 12 to 14 federations, they have some issues or the other, which we have to deal regularly. Apart from these 32, 33, there are 14 non-affiliated and around 7 to 10 associate federations. So we have to come with a proper guidelines or policy from your office per se, so that how IOA will function to sort out these affiliation issues. Sometimes there are, each federations are having 3 to 4 parallel lobbies who claim they are the official body. And for these athletes, they get hampered. So this is, I believe, the most challenging part in functioning IOA. The second in the collaboration of stakeholders. I'm very happy to say that the support and collaboration we get from your ministry, the Ministry of Sports, Sports Authority of India. So whenever there are issues regarding getting coaches, sometimes the federations, they have some challenges to get to host trials. So we take support from SAI, and also for these Asian Games, Olympic Games, to for the athletes, village, India House, all this area we get a very positive support from your ministry. But since it is not only between IOA and Sports Ministry, we also need support from respective state ministry, state association, National Sports Federation. So I think this is also area we need a proper collaboration between the stakeholders. I'm sure since you have
vast experience with sports. You yourself has been in head of BCCI. So there is an area where the age fraud for the youth and grassroots programs. There is also for the youth players, upcoming players, there is the doping fraud. So we have to maybe if we can create a database or app, something like that, where we can enroll these grassroots players who are, let's say, aged between 6 to 10, and if we can enroll them then and there, so perhaps we can address this age fraud issue. And your another department of your ministry, that is NADA, with NADA, IOA has hosted couple of seminars between the head of NSF to educate players and the coaches about the bad effect of doping. So this is the area we need to create more education or seminars for doping fraud and age fraud. We also need to understand what are the roles and accountability of each of these stakeholders we have discussed, and whether or not National Sports Code is going to be implemented in the State Olympic Association or National Sports Federation. So if this national sports is there, if we get any guidelines, then this will also be easier for us to work, because we get this queries also too often, and especially several RTIs we get every day or every week perhaps. You have several infrastructure in each and every state under the SAI, or there are SAGs also there. So I believe if IOA can come with a partnership with you and to maintain and to make a medium for revenue generation by PPP or any other mean, I think that will be nice. There are several infrastructure we can upgrade facilities also, which is much required in terms of modern sports science. We have coaches, there are coaches, most of them, they had been the ex-athlete, ex-players, and so they took coaching as their career. But we also need to upgrade their skill with the time. So we need to have more and more coaching education programs. Also, we have athletes in the grassroots level or youth level. Perhaps they are the good athlete, but on a professional level, some of them, they miss the bus. So for that purpose, if we can have a vocational professional development training for this athlete or sports person in their young age, so perhaps if those could not able to reach top of the pyramid, they can make their living through these courses. We can call it professional development program or PDS through sports school or sports hostel. Last is the 8th. Access of information. Sir, as you are also heading the INBIN ministry, so, and our national games is later of this year, so we believe this information in terms of for the hosting trial, scouting system, etc., social media, but also broadcasting of our events. If we can have a very strong broadcasting partner with a quality production, so then I think this is one of the main area for any sport to generate revenues. I was told by someone that this IPL, they get 115 crore per match through broadcasting and media rights. I believe IOA's prime property is national games, and sports always it get suffer because of lack of funds within the federation or the other bodies. I'm very happy that your ministry has supported immensely, and that fund never has been an issue. Whenever there is a ACTC or any other program for exposure trip, your ministry has been always cooperative enough. But still, if we can get a support from broadcasting partner, I think national games can be one of the area which can make us Atmanirbhar or self-sustainable. Thank you for giving us this opportunity. I thank from Indian Olympic Association and President Dr. P.T. Usha. Thank you very much. Thank you very much to
to both our esteemed guests from the Indian Olympic Association. Now we have next presentation by Kerala, and I invite Shri Prem Krishan S. G. Director, Sports, Kerala Government. Honorable Minister, respected dignitaries on the dais, thank you for the opportunity. Before getting into the presentation, I have been working as the Director of Sports in Kerala for the past 1 year. So whatever I am going to discuss right now is whatever that has come out because of the discussion with various stakeholders. And most of the points that I am going to discuss, all of you will be aware about this thing, so I am just addressing the elephant in the room. So this is just a table of contents. So Kerala was the first state to enact a Sports Act, appoint Sports Commission, and we have an elected Sports Council also. This is the general structure of the sports in Kerala. We have a directorate, then we have the elected Sports Council, and we have set up a Sports Kerala Foundation. It is a PSU that has been set up for the infrastructural needs. It was set up 2 years ago. There's a major shift in strategy. So I just get right into the topic, the issues and challenges in sports governance. As I mentioned earlier, all these points data has been collated with discussion with various stakeholders who are involved in this sports sector. The first major challenge is the multiplicity of the controlling agencies. In Kerala, if you take Kerala as an example, we have a sports department, then there is an elected sports council, then there are numerous associations, federations. I'll just like to give an example. So the Department of Sports, I don't want to name the sport, name the event. We gave a financial aid to one of the associations for conducting an event. So after some time, another person filed a case by saying that this association is not affiliated. I am the person who is responsible. I am the affiliate association. So he filed a case against us. So right now we are fighting the case. So what I suggest is that we need a national framework on this thing. There is a lack of clarity. There are overlapping powers. So if the central minister can take a note of this thing, it will be really helpful. Next is the budgetary constraint. Yesterday also we were discussing about the same thing. Compared to other departments, Kerala, the total budget is around 130 crores. So compared to other departments, the amount of budget that is allotted is really less. But we are working on things like PPP, CSR funding, and also the Khelo India scheme has come up. So I hope that in the coming years, this can be sorted out. This is one of the major challenges, the infrastructural issues. I would like to classify it in 3 layers. The first thing is the grassroots level infrastructure. For example, playgrounds. The grassroots level playgrounds are not sufficient in most of our panchayats and villages. And then coming to the training centers, if you take the training centers and sports hostels, there are lack of proper facilities are not available. That is one of the major challenges. And another thing is the world-class infrastructure where we can host big events, etc. So what Kerala has done is that we have created a separate PSU called Sports Kerala Foundation for addressing the infrastructure needs. And there is one panchayat, one playground scheme has also been recently announced. But I would like to quote an example right here, how we can collaborate with the states, how Chintan Shivir was actually helpful for the state of Kerala. Last year, I met the director of Madhya Pradesh during the Chintan Shivir in Kevadia. So what happened was when I was interacting with him, he said he has a foreign coach for fencing. So we had one girl who was really good in fencing, and I talked to the director, and he was very kind enough to send to admit the girl in the academy. And I would like to put in record that after he sent, she has won the gold in national games. And she has went on winning a lot of medals right now. So I would like to thank the government of Madhya Pradesh in this. Thank you so much for the support. Next is one of the major challenges, the proper identification of talent. Sir, I was few months before I had an opportunity to talk to Mr. Thomas Tuchel. He was a previous coach of Chelsea and PSG. So when I was talking to him, so I was just interacting, got an opportunity to talk to him. So I just asked him, can we create a Neymar or a Messi from India? So his answer was you can create, you should focus on the grassroots. The Rugby Federation was also telling about the same thing regarding the grassroots level development. So we need more grassroots level programs. We need more proper scouting methods, more professional scouting methods. And one major concern that I have noticed is that we are not tracking the athletes properly. Once these athletes go out from the school or go out from the training center, we don't have any track record of these things. Maybe, I don't know, other states are doing, but Kerala has not been doing that. So we are implementing one scheme for that also.
because we want to track their career throughout their career. We want to track them. Otherwise, once they go out to the school, we don't know where they are landing up. So some of them will excel in the sports, but many of them drop out because of other various reasons. So and at the same time, we are also starting different grassroots level programs on football, hockey, etc. We have started a lot of grassroots level programs. So that is one challenge that is there. Then this is one of the major challenge, that is a lack of quality manpower. Last year, I sat in one of the interviews for selecting few of the coaches, but unfortunately, many of the coaches are not they are not up to date. They are still relying on many trial and error methods, age-old methods for training the kids. So, Honorable Minister was talking about this introducing IT in sports, etc. But, sir, I would like to mention one thing, that Kerala introduced, because in one of our schools, we introduced one IT system, and for tracking the kids, tracking their progress, etc. But after 3 years, I was just checking the progress, the system has failed. Because the problem is that the coaches were not aware of how to properly use this IT infrastructure. So whatever app that has been developed, it has failed because the coaches were not interested, or they don't know how to use this thing. So what I suggest is that there should be a coaches empowerment program, there should be given more exposure, and there should be continuous assessment of these coaches also, so that we get the best coaches. And right now, many governments, even we are also trying to get foreign coaches, but one important thing is that these coaches are very, very expensive. They charge a hefty amount of money. But what I suggest is we can use them for training our coaches, like a training of trainer programs, and the ultimate solution is creation of in-house manpower is the ultimate solution. Then lack of scientific approach. This is one thing that I have noticed, that because of especially with respect to injury management, most of the people go into early retirement because of lack of proper injury management. They don't know how to properly utilize these things, how to treat the injury properly, or their coaches will ask them to continue the training even ignoring the injury, then resulting in ultimately in early retirement. So Kerala has come up with this concept of high performance center. We want the latest skills, latest scientific technologies to be adopted in this center with proper injury management treatment of the athletes. Issues of doping, already it was discussed. So, sir, that was also one take from the last conference that was held in Kevadia. I had an interaction with the DG madam in NADA. So, Kerala had conducted the first conference last month. We have associated with NADA. And what happened was, like, NADA was helpful, and the conference was really helpful. And after the conference, we took a feedback from the people who came from NADA. And they were telling that most of the people who attended the conference, most of them were coaches, medical practitioners, etc. They are not aware about the issues of doping. So if they are not aware about the issues of doping, then the athletes are much less aware about these things. So it will result in a lot of disqualification. And DG ma'am was actually telling the number of people who got disqualified because of unintentional doping, and the numbers are pretty huge. So right now, Kerala has entered into a three-year-long association with NADA. Our aim is that we want to create some master trainers, we want to create some medical practitioners, and we want to create a framework by associating with NADA. So that is one thing. And finally, even though we talk about sports culture and all, still a lot of awareness needs to be created among the public regarding this thing. So Kerala has taken one step, that we are planning to introduce sports as a subject in school. As a topic in school, and hopefully that we hope that in the next academic year it is going to come up. And in the one more thing that we have done is that also was a good thing that we got from the last conference. There was a best that was there, fitness assessment best was there in Kevadia. So we actually collaborated with them, and we brought the best to Kerala, and we actually conducted a fitness assessment throughout the entire district of Kerala, random sampling of people, around 10,000 people, basic fitness test was conducted, just to create an awareness about the fitness. We are still awaiting the result. So the athletes, school children, and public, everybody participated in this thing. So just to create a awareness regarding the Fit India movement. And finally, my final point is that address the issues of inequality in sports. Still, a lot of women need to come to sports. Tribals, coastal areas, all these lot of potential are there. So, a lot of programs need to be done in that field also. So, that's it. That's it from my side. And Minister was telling about the collaboration. I hope that more states can collaborate. We today also are discussing with different states, so that we can collaborate in the future for the betterment of the sports. Thank you. Thank you so much.
Thank you very much. Lastly, in this session, we have presentation by Haryana, for which I invite Shri Ajay Singh Tomarji, Director Sports. Respected Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Government of India, respected ministers from various states, various senior officials of Sports Department, Federation, Olympic Association, respected fellows. Sir, I would like to start with just some small observation that I joined Director of Sports only 1 week ago. And though I was working in field for 11 years and closely associated with different sports, because I have been a sports person during my college days and played for my college in inter-college competition. So I have fair knowledge, but I might be having some technical difficulties related to more advanced topics. So I will apologize in the beginning itself. Sir, regarding the issues and challenges, my respected colleagues and senior officials have already stated, and there are of course issues related to the functioning of various association, federation. One of them is of course a lack of clear-cut hierarchy. Multiple organization, associations are there. There are disputes between the legality also, like my friend from Kerala was saying. There are court dispute, court battles, and in general, the very purpose of association, federation, that was to actually promote the sports, to create the infrastructure, to organize the tournament, to find the talent from the grassroots. Those functions are maybe lacking, and probably our federation in various sports, some of the federation are doing wonderful job, but some of the federation, maybe because of resources or institutional supports, are not able to do their duty for which they were interested upon. And will not, so these issues are known to all of us, and I will not delve deeper into these particular things. I will like to highlight that how Government of Haryana tried to overcome these difficulties, the lack of promotion of sports by federation, and how the government itself took up the responsibility and to make Haryana as #1 state in the country in matter of sports. So sir, what we did back in 2016 is that we brought a Haryana Sports Council Act, by which we made a council for the entire state of Haryana, in which our Honorable Chief Minister is the President, Honorable Sports Minister is the Vice President, and Administrative Secretary Sports being the Secretary General. The purpose of this State Sports Council is to promote sports, to promote the infrastructure in the state, to promote the tournament, to promote the talent gathering in different sports. So all the sports are covered. And through this State Sports Council, we also made a District Sports Council, for which we made Deputy Commissioner as the Chairman and District Sports Officer as the Secretary of the Sports Council. And District Sports Council function on the similar pattern as the State Sports Council, that is to promote. Now, first of the thing that we tackled through this is that we gave all the state government aid through this council to create a world-class infrastructure in every district. So we have 22 districts, one of the district is newly created. We have 21 district level stadium in there. So every district has got a district level stadium, and the level of infrastructure is quite good. So we have AstroTurf for hockey, we have athletics track, the world-class athletic tracks on those synthetic rubbers. We have football Astro ground as well. We have archery indoor stadium. Everything is there in that sports stadium. Usually that is a 25-acre facilities in every district that we have created. Through this council also, we initiated a lot of other initiative, one of which I would like to highlight, and this is
one of the key state government initiative which is excellent and it tackles lot of problem at lot of level. I will just explain briefly. So this is the sports nursery. These are like stated objectives: grassroots development, talent identification, maximum utilization of resources, and sports upliftment. And I will go with this one. These are the incentives and how it is good. So when we start looking at talent, like catch them young, that is a motto that we always speak about. And when we say the catch them young, we are catching them in the school. So class 1 to class 12, usually age of 8 to 19. So that is the young age when there is a formative year of any student, any sport person, and we want to catch them there. One of the things, I also from a middle class, and when I was growing up, my parents also questioned, this is one of the difficulties regarding the sports, कि sports खेल के क्या मिलेगा, and why should we spend? Middle class income, there is not lot of scope of spending. So what we did is that these nursery, we give 1500 rupees per month for age group 8 to 14 and 2000 rupees per month for age group 15 to 19. And that is a support. Okay, so we will take care some of your nutrition requirement and some of your consumable items in the sports. It's not sufficient, but yes, we give something. So nobody can say कि sports खेल के क्या मिलेगा, खर्चा क्यों करना है. We will provide you. So this is one thing that we took up, that we started providing monthly stipend to the students, sports person who are enrolled with us. Second thing that we did is ki the future, right? Okay, so sports person has no future that is there in the middle class in India. Ki khel ke kya banoge? Of course, one of the key thing is that you should become a coach, but then there are not many scope for government coaches and everything. So we give it to the coach. So whoever is NIS diploma holder, we get 25,000 rupees per month, and certification cost 20,000 rupees per month. That is that nursery that coach start. He will get 25,000 rupees per month, and his student, his pupils, will get 2,000 or 1,500 rupees per month. So that is another thing that we tackle, that those nursery students, they will know that, okay, when we grow up, even if we are not able to win the medals, we can still become a coach and we still have a future. We will earn 25,000 rupees per month and we will train the next generation of sport person in India. Third thing that we cater through this initiative is, we say the lack of infrastructure. So every federation, I don't think most of the federation has any infrastructure. They are not able to create. In Haryana, I have not seen any stadium that is being run by federation, created by federation. It's all sports government. There are a lot of infrastructure already created in school, colleges, village level, universities, that was being used, but not for that particular purpose. So what we did is that we actually asked anyone, so anyone from NIS diploma holder, NIS certificate, these are the coaches qualification is there. So any person can tie up with any institution, arrange for a stadium and apply for a nursery. So when we started this one, these diploma holder coaches, they went to their back to their town or school. They found out, okay, there is a let's say badminton court in one of the school. They tied up with that okay, we will teach your student with free, but you let us also run the nursery, in which I will have 25 students of my own choice. They tied it up, then they applied to us and we allotted them a nursery. And he started teaching 25 of our students and maybe probably a similar number of students from that particular school. And suddenly we have created 1100 nurseries in the state of Haryana. You can say 600 of them being private nurseries, 600 stadiums immediately got utilized for the promotion of the sports in Haryana. And that is a very focused approach. Every facility created in private school, government school, private stadiums is being utilized. The coaches themselves, they are going, so it's you can say PPP or you can say participation from the coaches itself. Any coaches who has done their diploma, they can actually enroll through this particular nursery. Our underutilized, whatever we have, the facility is being utilized. Coaches are getting good stipends. Athletes are also getting a good stipends.
Another thing that I would like to highlight is that these are 516 private nursery, and of course government coaches has also started doing their nurseries. Sports infrastructure. So this is again I would like to highlight, this is an advanced scientific training and rehabilitation center. So there is a lot of injury, sports, there is a lot of injury, and there was no specialized, and the treatment cost is also very high. So if a talented person, 16-year-old got injured, if he does not get a proper care, he will be out of the game for 1 year, and that will be the end of his career. So we started this. One of them is already started in Panchkula, and 2 more is coming up. It's a very good facility that has been created, and we have physiotherapy, nutritionist, and everything that is there. And the last one that I would like to highlight is the Haryana Sports Academy. So these are on the same pattern of Sai Center of Excellence, in which we are trying to give the similar level of facilities to our good sportsmen. That will be end. Thank you very much. Thank you. Thank you. Now we begin the open house discussion for this session. अभी छोड़ दो open house. Sir. To the point, अगर सुझाव या सवाल. सर एक स्पेसिफिक मेरा सवाल भी है सर, सुझाव भी है, क्वेरी भी है, परेशानी भी है. सर स्टेट में जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं वो सभी अपने इंडियन बॉडी से या अपने रिस्पेक्टिव जो भी उनकी वो है वो नेशनल बॉडी से, इंटरनेशनल बॉडी से एफिलिएटेड होती हैं. एक स्पोर्ट्स में सर कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा एसोसिएशन जो हैं वो रिकॉग्नाइज है अपनी अपनी डेफिनेशंस के हिसाब से. प्रॉब्लम सर यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है जब बच्चे उससे सफ़र करना शुरू कर जाते हैं, क्योंकि उस स्टेट के बीच में, उस एसोसिएशन के बीच में आपस में डिस्प्यूट. समझ आ गया, 2 एसोसिएशन है तो बच्चे सफ़र करते हैं और सरकार को भी पता नहीं चलता किसको रिकॉग्निशन है. ये आपका पहला विषय. सर नेक्स्ट ये है कि उससे प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है तो बदनामी सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की होती है. इतनी डिटेल में मत जाइए, आप वे आउट पूछिए ना. अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या करना है सर? इसका सोल्यूशन चाहिए सर. वो दे देते हैं सोल्यूशन. अभी पीटी उषा जी बैठी है, वो आपको बता देते हैं. सर मैम से भी सर यही आप बहुत लंबा खींचते हो भाई. आपका सवाल ये है कि अगर 2 फेडरेशंस, एक फेडरेशन राष्ट्रीय स्तर पे है, 2 एसोसिएशन अगर राज्य पे है, किसको मान्यता प्राप्त है सर? और अगर नहीं है किसी को तो कंफ्यूजन क्रिएट है जिसके कारण बच्चों को दिक्कत है. इस स्थिति में आईओए को क्या करना है सर? ये आपका सवाल हो, जवाब दे देंगे. अतुल्य जी. This is the classification of nursery you had shown, A, B, C. Just elaborate a little on that. How do you call it A, B or C? From Haryana. So regarding the sports nursery, because of lack of time, I had to miss the gradation, of course. So what happened that the first year of the thing, because there is a 20,000, 25,000 rupees stipend, lot of people also came, undeserving people, and a lot of political pressure probably also came with that, and they got it. Now they had to be weeded out because they are not contributing anything. So we started the grading the nursery, and we made a 4 grade, A, B, C, and D. So if you have A grade, and there is a different criteria for grading it, I can share it also in details. So if you get A grade, of course you will continue for 1 year. So sports nursery is for 1 year only at all stages. It is renewable after a year depending on the grading. For A grading, you continue for another year, and you also get 3 lakhs rupees for upgradation of your facility. For B category, again you get 1 year extension and get 2 lakhs rupees for continuing. For C category, you just got the permission to continue it for the another year. And D grade, you are disqualified. So no more support for you, no 20,000 for you, no nothing for your people also. And what we are doing that with this grading, we are weeding out those people who got this undeservingly. That gradation also, see, one of the things is that the subjectivity involved in it. So while grading, we made it very objective, and one of the to get A grade certificate, only thing without getting a medal in national levels
tournament, you cannot get a grade certificate. So immediately, that's the objective criteria. You are one of those 25 people that you have should get a medal in a national level tournament, otherwise no. And this way, there was no subjectivity, and we are getting very good kind of response from this. थैंक यू। पीटी उषा जी, जो उत्तराखंड ने पूछा है, would like to reply on that? Having an affiliation committee for that. If you have any problem of Olympic State Olympic Association, you can come, you can approach us, because lot of issues are going on now there. The issue is, for example, Rugby Federation have 2 associations in Uttarakhand, and the state department doesn't know which one is an affiliated unit, or both are not affiliated. It creates a situation where the players suffer. So what is the remedy for that? That was his question. Normally, we take it as a government is having a support. That one we will take it as a the actual one. सर Kalyan want to add something? मैं प्रेसिडेंट मैडम के साथ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ आपके दोनों फेडरेशन है एक ही स्पोर्ट के लिए, तो एक तो क्या कि इनके पास इंटरनेशनल एफिलिएशन है वो बता दे, और फिर वो खुद ही आकर के जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस किसके पास है। बहुत समय ऐसा होता कि 2-3 साल में बन जाते हैं, तो जो जेन्युइन है वो जब पेपर जमा करेंगे आप उसकी वेरिफिकेशन आईओए से करवा सकते हैं। आईओए के पास एक डिस्प्यूट एंड एफिलिएशन कमेटी बना हुआ है, वो इसकी सुनवाई करती है। सुजाता मैम वांट्स टू ऐड समथिंग। एक ये देखना होगा, अगर आपको ऐसा डाउट आता है तो आजकल सारी सूचना वेबसाइट पे तो होती है, तो जो आईओए के एफिलिएट्स हैं वो आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा इनको एक ईमेल करके पूछना पड़ेगा। और मुझे क्लैरिटी नहीं है, आपने शायद ये बोला कि कोई स्टेट एसोसिएशन को इंटरनेशनल एफिलिएशन मिला हुआ है? नहीं, इनका देखिए, इनको उसका आइडिया नहीं। जो नेशनल फेडरेशन ने रिकॉग्नाइज करना है स्टेट एसोसिएशन को, जी मैं वही यही करते बता रही हूँ कि इसकी सूचना आप मतलब आपको कंफ्यूजन है तो आईओ इज द राइट प्लेस, जैसे सर ने बोला, और ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट। हाँ बोलिए ना। बहुत सारे टाइम पे मैम ऐसा होता है कि आईओ से ही इनको दोनों बॉडी को मान्यता ही आईओ से मिली है। एक को प्रेसिडेंट ने दिया हुआ है, एक को सेक्रेटरी ने दिया हुआ है, एंड बोथ आर क्लेमिंग दैट कि वी आर रिकॉग्नाइज्ड एंड वी आर एफिलिएटेड। चेंज हो गया है, तो यू कैन ट्राई नाउ। ये अभी ये प्रैक्टिस बंद हुआ है। अभी आप यदि लिखते हैं तो इसके हम जवाब देंगे। देयर इज वन क्वेश्चन सर। सुहास जी सर, Maharashtra there are 7 federations, associations basically. They have disputes. The National Federation has given affiliation to X District Sports Association or State Sport Association, and the State Olympic Association has given to Y. Now it is become very difficult for the administration to basically decide which federation is the. क्या आपके उसके कोई ऐसा रूल है कि मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा कि रग्बी वालों ने किसी को मान्यता दी और स्टेट की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसने दूसरे को मान्यता दी है। मेरे ख्याल से तो जो फेडरेशन ने मान्यता दी है, नेशनल फेडरेशन ने, उसी की मान्यता को बल देना चाहिए, यही है जी। और स्टेट एसोसिएशन को मान्यता देने के अधिकार नहीं है। ऐसा है। मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई गलत होगा तो आप लोग उसको ठीक कर सकते हो। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने आईओ को मान्यता दी है। भारत में आईओ ही प्रिंसिपल बॉडी है। इनके अंतर्गत सारी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं जिनको मान्यता उनकी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने दी है। ठीक है, वहाँ पे भी कन्फ्यूजन आता है कि कहीं पे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने किसी और को मान्यता दी है और अगर इन्होंने किसी और को दे दी तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। एक कॉन्फ्लिक्ट नेशनल लेवल पे है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट आप कहते हो कि राज्य के स्तर पे आता है, जहाँ पे स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन किसी एक को दे रहा है और उसकी नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन दूसरे को मान्यता दे रहा है। अब इस स्थिति में होना ये चाहिए कि जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने जिसको मान्यता दी है उसी को ही अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी में रिप्रेजेंटेशन तो वही करने जा रहे हैं। एम आई राइट जी? पीटी उषा जी ऐसा ही है, मैम ऐसे ही है।
तो सबको क्लियर है इस पे, और ये कहीं ना कहीं लिखित रूप में भी आना चाहिए, और आप सबकी स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी वेबसाइट पे भी जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी उसका नाम, नंबर और टेलीफोन नंबर आए, ताकि खिलाड़ियों को पता हो कहाँ पर जाना है। केंद्र की वेबसाइट पर भी नेशनल फेडरेशन से लेकर स्पोर्ट्स एसोसिएशन तक का भी आता है, तब भी कोई हर्ज नहीं, हमें भी वो कर देना चाहिए। हिमाचल। सर थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सर लास्ट ईयर नेशनल गेम्स हुए थे अहमदाबाद में, उसमें जो हिमाचल के कबड्डी प्लेयर्स हैं उनको अभी 6 महीने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं, वो बार बार आ रहे हैं। तो एक सर सबमिशन था कि जैसे नेशनल राइफल एसोसिएशन है कि वो ऑटोमेटिकली उनके सर्टिफिकेट वहीं से वेबसाइट से निकल जाते हैं, QR कोड होता है, उसको स्कैन करके उसकी ऑथेंटिसिटी हो जाती है। तो सर पता किए कि कबड्डी एसोसिएशन जो है डिफंक्ट है अभी, तो प्लेयर जो है सफ़र कर रहे हैं, सर इसका कुछ सॉल्यूशन? ये एक रिटायर्ड जज बैठे हैं, पिछले 5 साल से वही रन कर रहे हैं। उसमें हमारे हाथ भी ये बंदे की कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कमेटी है। अब उनके चुनाव हैं इस महीने, हो सकता है तब तक समस्या का हल हो, लेकिन डिपार्टमेंट से कोई बात करे, विमल जी, डिपार्टमेंट से कोई बात करे गर्ग साहब से जो जज हैं रिटायर्ड, कि सर्टिफिकेट बच्चों के तो मिलने चाहिए 6 महीने में। लेकिन ये प्रक्रिया सभी फेडरेशंस को, आपको ही आईओ को बोलना चाहिए कि एक टाइम फ्रेम तय कर दीजिए कि 15 दिन के अंदर सर्टिफिकेट चला जाए। कितना समय लगता है? Sir, has to be cleared, then only they will give. But I think now it is cleared. How it is clear? सर सभी फेडरेशन को भेज दिया गया है। हमें अहमदाबाद से मिला था कुछ 2 महीना पहले, और हमने सभी फेडरेशन को भेज दिया सर्टिफिकेट की कॉपी। अब हो सकता है कबड्डी डिफंक्ट है तो उनके पास नहीं गया होगा। कोई और फेडरेशन, कोई और क्वेश्चन? झारखंड। थैंक यू सर। सर ये स्पोर्ट्स कोड की बात करना चाह रही हूँ सर। ये स्पोर्ट्स कोड मुझे लगता है कि बहुत स्टेट में एसोसिएशंस में नहीं लागू हुए हैं, तो क्या ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से या IOA से इंस्ट्रक्शन जाने से ज़्यादा अच्छा हो सकता है सर? जी छत्तीसगढ़। वो भी बात आ रही है कि स्पोर्ट्स के बाद में, सॉरी, बच्चों के कैरियर की बात आती है सर, तो शिक्षा के समतुल्य अगर खेलों को बनाया जाए, ऐसा कुछ प्लान अगर मिनिस्ट्री कर सके, दोनों हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन से मिला के, सॉरी, तो अभी स्कूल एजुकेशन में CBSE में ऑप्शनल सब्जेक्ट है सर, और अगर इसको स्टेट गवर्नमेंट्स और बाकी बोर्ड्स में भी इम्प्लीमेंट करें खेलों को, फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को, तो हेल्थ पे भी फ़ायदा होगा, हेल्थ का बजट भी हम मिनिमाइज़ करेंगे, और दैट वे उसको मैंडेटरी सब्जेक्ट बनाएं। और स्टेट PSC और UPSC में बहुत सारे सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं जो कुछ अब चल भी नहीं रहे हैं, UPSC तक जा रहा हूँ सर, सॉरी सर। तो अगर फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स को उसमें जोड़ते हैं तो बच्चों को जो कैरियर वाइज जाना है अपॉर्चुनिटी, वो जा सकता है सर। दैट वे एंड हेल्थ, हमारा यूथ का हेल्थ इम्प्रोवाइज होगा सर। थैंक यू सर। Anyone else? Yes, please. Sir, this issue pertains to the regulation, not directly with the sports arena, but regarding the education institutions which are giving the certificates, like BPED and graduation certificates. As we know that regulation in the higher education per se is not very effective, particularly in these sports institute, it has gone very down. In a recent, like last 2 months, I have been in sports and I have noticed that there are instances where even the people are not present and they just complete their BPEDs without their presence and all. So if we can regulate this, that will improve the overall impact on the coaches, the quality of the coaches and all those things. Thank you, sir. Sir, this is Director Sports Manipur. I have a small observation. My observation is to DG Sai. Like in the last Chintan Shivir held at Kebadia, I have put the observation that in certain discipline, say for instance in football, AFC certificate, AFC coach certificate, coaching certificate, it has become more prevalent and more prominent. And with this certificate, they become the coaches of football, professional football clubs. But we have an essential qualification that NIS diploma course is mandatory for becoming the coaches. So in that case, if NIS diploma course be met equivalent with AFC certificate course, then we can get many professional courses from NIS also. So this,
I request the DG side to look into this matter, and if this can be done, then we will be getting more NIS course who are equally equivalent with AFC certificate holders. Can I respond, sir, to this? Yes, you can. Yeah. What you can do and what we are planning to do in the National Sports University, we had started a dialogue with the All India Football Federation. We also have signed a MOU. When our students are doing various courses, whether it's undergrad or the postgrad, simultaneously we are enrolling them in these certificate courses of the Federation. So they have that qualification as well as the one which the university is giving. So they are equipped to apply for all the job which requires the Federation certification. Perhaps the NIS Patiala can also do the same. Sir, in my department, we have AFC B license holder, AFC A license holder. They are very qualified, but they cannot become the coach now. They are working as a PET, physical education teacher. So in case if their AFC B certificate or C certificate be equivalent with NIS diploma courses, then they can become the professional coaches. The issue is in cricket also, they have the level A, B, C coaches. Now the state associations prefer the level A, B, C coaches done by the BCCI rather than the NIS diploma. But for the government job, they prefer for the diploma holders from the NIS. So that is a challenge. So we need to work on that. Internally we'll work on that and we'll get back to you. Thank you for highlighting the issue. Now we have a 15-minute tea break, and we shall assemble sharply at 11:15 hours. Honorable ministers and the officers joining there for discussions over the tea are requested to join in the hall at first floor, and the other guests may please join at the hall on the ground floor. Office of the Imphal Municipal Corporation. Order. Order asigi matung ina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khwairambal ima kaithel Mari, Lamnong kaithel, Kongba kaithel, Singjamai kaithel, Pisum kaithel, Kaisamtung kaithel, Kwa kaithel, Tera kaithel, Lampen Supermarket kaithel, New Lampen Supermarket kaithel, hairiba kaithel sing asigi Association Loop Amadi Kaitel Pamiribi Imai Bilasing Mafamda, Gariguma Karadan Kanganjari, Madudi, Imphal Municipal Corporation Ayaba Yauduna, Kaitel Manumda, Kaitel Lairembigi Sanglen, Sajanba Amadi, Dharmaga Mailinaba, Makalamatageba, Tabak Thorum Sing, Pangtok Payaroi, Kaitel Pamiribi Imai Bilasingna, Isagi Kudong Chab Kaki Yanglaga, Makalamatagi Oiba Mongda, Semdokpa, Sadokpa, Yakshinba, Sanjanba Amadi, Napshin Minasingba, Tobayaroi. Karigumba hairiba mathakta paleba thabok thorom sing asi torom labadi Manipur Municipalities Act 1994 gi makhada action lokhatkani khangal liba K Chandrakumar Singh, Municipal Commissioner, Imphal Municipal Corporation.
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 km away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration cum admission open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibidra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiwan amadi Sangai Pro Kudong chaba si mangan bigano masima contact tawbirau terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ka loinana multi specialty service singi kudong sabasing pizari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine ni. Office of the Imphal Municipal Corporation Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khoirambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel hairiba kaithel sing asigi Association Loop Amadi kaithel Phamiribi ima ibil singi mafamda gariguma kharadang khanganjari madudi Imphal Municipal Corporation dagi ayaba yauduna kaithel manungda kaithel lairembigi sanglen sajanba amadi dharmaga mailinaba makhal amatagi oba thabak thorom sing pangthokpa yaroi kaithel phamiribi imaibil singna isagi khudong chab khaki yenglaga makhal amatagi oba mongda semdokpa sadokpa yaksinba sangjinba amadi napsinbina singba tawba yaroi karigumba hairiba mathakta paleba thabak thorom sing asi toromlabadi Manipur Municipalities Act 1994 ki makhada action lokhutkani khangal liba K Chandrakumar Singh Municipal Commissioner Imphal Municipal Corporation
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School Channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commence and open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibibra? Suknagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marol kidamak contact tobirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si mangan bigano ngasi mag-contact tobirau. Terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ka loinana multi specialty service singi kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine ni. Office of the Imphal Municipal Corporation Order asigi matungina Imphal Municipal Corporation manungda leiriba ima kaithel sing haibadi Khoirambal ima kaithel Mari Lamnong kaithel Kongba kaithel Singjamai kaithel Pisum kaithel Kaisamtung kaithel Kwa kaithel Tera kaithel Lampen Supermarket kaithel New Lampen Supermarket kaithel haiba kaithel sing asigi Association Loop amadi kaithel phamiribi ima ibil sing mafamda kariguma kharadang khangan jari madudi Imphal Municipal Corporation dagi ayaba yauduna kaithel manungda kaithel lairembigi sanglen sajanba amadi dharmaga mailinaba makhal amatagi oba thabak thorom sing pangthokpa yaroi kaithel phamiribi imaibil singna isagi khudong chab khaki yenglaga makhal amatagi oiba mongda semdokpa sadokpa yaksinba sangjenba amadi napsin minasingba toba yaroi karigumba haiba mathakta paleba thabak thorom sing asi torom labadi Manipur Municipalities Act 1994 की मखादा एक्शन लखुतकनी खंगलिबा के चंद्रकुमार सिंह म्युनिसिपल कमिश्नर इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन
Are you looking for an affordable hotel in New Delhi? Well, here it is. Hotel Ambrosia, located at 217 Road number 6, Mahipalpur, just 15 minutes distance from Indira Gandhi International Airport. Isn't it good? Well, we provide 24/7 pickup and drop service, free Wi-Fi in all rooms, 24/7 restaurant service, daily housekeeping, proper car parking, fitness center, and many more. So what are you waiting for? Please contact Hotel Ambrosia, A217 Road number 6, Mahipalpur, New Delhi. Phone number 964-3504-772. To touch the pinnacles of success, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNACO School, Excellence in Education. Welcome you all to UNACO School channel Imphal East, an exclusive co-educational residential school located on a sprawling 50 acres campus just 24 kilometers away from Imphal city. The school will be affiliated to CBSE New Delhi. Academic session will begin on 1st April 2023 for classes 4 to 8. Registration commence and open for 2023 and 24 session. The legendary brand Vespa was born in 1946. The Vespa has a unique design with a V-shaped grille to complement its sleek cast. The Piaggio emblem at the front gives you the pride of ownership, innovative appearance. The design was inspired by the wasp, hence the name Vespa. Adom gari macha darkar oibidra? Supnagi minute kuntragi manungda document ichang changdana Vespa amadi Aprilia gi apamba model sing supna dagi lupa lising tara khaktang puthok piduna loan oina lawba yabagi khudong chaba pizare. Akupa marul kidamak contact tawbirau 9089895330 amadi 9615823252 Tulasi Motors Private Limited Thangmaiban amadi Sangai Pro Kudong chaba si mangan bigano masima contact tawbirau terms and conditions apply. American Oncology Institute AOI amadi Babina Specialty Hospital anigi makhada comprehensive cancer care ga loinana multi specialty service singi kudong sabasing pijari kudong sabasing adudi neurology, urology, internal medicine, general surgery, critical care ICU amadi palliative medicine. Office of the Imphal Minister. Please be seated. Welcome back. We begin the next session for the day, improving engagement amongst stakeholders in sports sector. In this session, we have two presentations by subject matter experts and a presentation by Odisha. No, ma'am, the subject matter experts. I invite Shri Pranshu Jain from PwC to make the presentation on district index and school rating. Good morning again to all of you. The presentations that we are going to see now, one is about the district index of sports and school rating, and the next one is going to be by Zach about geotagging of sports infrastructure. The background behind these two ideas is to discuss them with you and put forth ways in which we can all collaborate. In this house right now, sitting next to the Honorable Chair is Usha ji. She heads the IOA. We are the central government. All the state government's esteemed colleagues are here. So we need to sit together and discuss
as to how we can improve the atmosphere, climate of sports in this country, and what are the ways in which we can engage with each other. So the next 2 sessions are about that. And then we have a presentation from Mr. Vinil Krishna of Odisha, where they have done some enormous work in sports which the whole country reads about. So Mr. Pranshu is presenting the idea that we have developed. We welcome your suggestions, we welcome discussion, and based on the deliberations here, then we will go ahead and move in this particular direction. Thank you. You can start now. Good morning, everyone. Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Honorable Ministers on and off the dais, Secretary Sports, ladies and gentlemen. I have the privilege and opportunity to present 2 ideas to you. As ma'am mentioned, these are at very initial concept stage, and the whole idea is to run it through all the stakeholders, take your feedback, and then the department would engage with all the states to take this forward. So the first up idea is to think of a possible district sports development index, which can be implemented in the country. And there are broadly 4 objectives, which we thought we can achieve through such an index. One is, can we look at promoting more competition as well as cooperation between various districts on sports development, sports culture, sports excellence? Can we use this index to, nudge the districts to do more sports development activities? And in the process, make incremental changes in the ecosystem of sports, in the country. And also perhaps, we can identify some role model districts, from which we all can learn and, replicate some of the good practices. As we were thinking of, developing this index, we said that we should not be only looking at inputs. So it's not that, number of sports infrastructure that you have developed or number of schemes that we have, but the entire value chain of both sports development or sports culture as well as sports excellence should be looked at. So be it the processes that the districts have set up, be it the output that they have achieved, as a result of the inputs and the processes that they have set up, and ultimately, whether they have achieved the outcome. So the index, looks at the entire value chain, all 4 KPIs, if you like, or 4 sets of KPIs, and I'll explain those as we go forward. Just taking a minute on, the precedents that we have. Such an index is not new in India. There are a number of indices that various other ministries have launched. Ease of Doing Business Index is one of the prominent ones, where various states as well as districts are evaluated on the reforms that they have undertaken. Similarly, Swachh Sarvekshan has evolved over the last 7-8 years into a very prominent index, and there are about 4,400 cities who are evaluated on the measures that they have taken for promoting Swachhta. Ease of Living Index, City Finance Rankings, various ministries have done these various indices to promote cooperation, to nudge the cities and districts to take initiatives. In sports also, Indonesia has implemented a sports development index, and we've done some bit of benchmarking with them and some bit of learning from them as well. This is the heart of the proposed index. So when we started creating it, we thought we could look at it in terms of 8 broad parameters. And I'd like to take a minute just to go through all the 8. Sports infrastructure, what's the quality as well as quantity of sports infrastructure that the district have set up, both at grassroots level as well as, at the elite level. In terms of organization of competitions, what is the number of competitions that the district is organizing, and what's the diversity of sports, that they're looking at. What's the competition? What's the performance of the athletes coming from the district, at a state, national, international level? What kind of incentive structure, if at all, district is driving some incentive structure beyond, what the state and the country at a federal level is doing? What are the initiatives which are happening in the sports schools of the districts, in terms of sport development activity and promoting sports culture? Promotion of health and fitness initiatives which the district is taking up. In terms of inclusivity, promoting women, promoting para-athletes, promoting disabled athletes, and so on, what kind of initiatives, if at all, the district is taking, and what kind of governance framework has been set in place. We also said that
when we were deliberating, we said that we should not be only looking at sporting excellence, but through this index, can we look at sports development and culture as well as sports excellence. So broadly, these 8 parameters have been divided into 60 odd indicators, which are almost equally split between sports culture and sports excellence. This is the further breakup of those parameters into sports development and sports excellence. So we are saying there could be a district which is doing a lot of initiatives on sports development. There could be another one which may be doing a lot of work on sports excellence. Can we look at a district which is doing both? And we want to recognize the initiatives in both very distinct areas for development of sports. One more idea is that we will not look at all districts uniformly. A small district versus a large district, there could be a very differentiating level of maturity. So could we look at distributing all the districts in the country into 3 different categories depending on the population, and then look at these categories differently, and then perhaps start look at grading the districts into 4 broad categories. And this is again open to ideas, as ma'am mentioned, but can we set some categorization for districts? And as we go along over years and as we proceed, this entry percentage for each of the criteria can improve. So these are the various indicators. I know we are short of time, so I'm not going through each of the indicator, but within sports infrastructure, say number of sports infrastructure which is present in the district, monthly usage, online availability of information which the district has projected, percentage of sports facilities which are providing online facilities for booking. So the ones in orange color are contributing towards sports development, so 44 odd percentage contributing sports development, and others towards excellence, number of sports hostels per capita, number of high performance centers per capita, sports science centers per capita, and so on. So, similar parameters or indicators have been defined for other parameters also, in terms of organization of competitions, how many competitions are organized, what's the diversity of those competitions, how many people per capita are participating in those competitions in the district, number of competitions which are organized, at the district level, state level, multi-sport competitions by the district. Again, performance in competitions, how many medals the people from the district are winning at various levels. So this is an excellence parameter, and so on. So if the district has set up any incentive framework, again, sports in schools, there are a number of indicators which we have proposed, to nudge the districts in improving the sports, health and fitness activities, within the district. Again, a lot of parameters between excellence as well as development. Promotion of health and fitness, inclusivity in sports, and governance, measures that the district is taking. So all of these indicators combined, about 60-65 indicators, we want to give it to the districts and seek response from them on a portal on the initiatives that they are doing, and hopefully over years we will see an improvement in the performance of the districts on promoting sports development. So that's on that. Can I take the school one? Okay, if there is any question or I feedback. think you can complete the another one also, so that then I think Sir, my request, madam, so that this school shall connect we- and the district shall both we do one present. by one? Okay, go ahead. Sure. The second idea is to have a better connect with schools and look at the initiatives that the schools are taking up for promoting sports health and fitness. The previous one was focusing on districts, and idea is, can the schools self-evaluate themselves on the initiatives that we would ideally like the schools to take up. This would not just improve the awareness in the schools, but also promote hopefully some kind of competition, promote sports and fitness overall in the schools. And obviously there's a lot of benefit to the schools as well, for them to take such an initiative. It will improve their visibility, maybe there will be better spirit within the school, and a lot of competition can drive also a lot of secondary benefits that we can envisage, for all the implementation of various schemes of the government of India. It will hopefully nudge
the schools to take up these initiatives. And again, this has precedence across the world. Australian Sports Commission has a similar program. There are districts or states who have implemented, similar program for promoting schools to take up such initiatives. So in this one, the broad idea is, can we pick up 4 areas? One is promoting fitness and healthy lifestyle amongst the students of the school. Second is, their participation in the Fit India Mission school engagements. Third is excellence in sports, kids from the school who are excelling in sports, and talent development initiatives that the school is taking up. Within each of these 4, there are some indicators which have been identified. So for example, in terms of fitness and healthy lifestyle, how many outdoor and indoor stadium facilities they have, what kind of, time they are giving for physical education, is there a standard curriculum, with the board for sports promotion, what is the number of PE teachers which are available and so on. So this is towards fitness and healthy lifestyle. What kind of initiatives they are taking up for Fit India missions, school engagement. So for example, Fit India School Week, Fit India School Quiz, what is the participation level from the school, what is the performance of the school in Fit India School Quiz, Khelo India Physical Fitness Assessment, how many kids are taking the assessment, whether they are participating in the Fit India Freedom Run and so on. So this will also help us implement some of the Fit India initiatives. In terms of excellence, what is the performance of the kids at district, state, national sports events? What is the performance in the indigenous games? And how are the school performing at international sports events? So some parameters around that, can nudge the schools towards excellence in sports. And in terms of talent development, what are the initiatives that the schools are taking in terms of setting up dedicated sports academy, promoting sports among girl students, how many students from the school are becoming Khelo India athletes. So all of these coming together, again, our proposal here is that we will let the schools do self-evaluation, again, these parameters, instead of, the department doing it. And, they can submit some documents on a common portal. And then can we recognize some of the better performing schools in terms of, best government school, best private school, residential school, and so on. And again, some kind of rating framework could be set in place. So I'll stop here and open to any feedback, comments that the dignitaries may have. Thank you. Request is that, you're going to come out with an index for the entire country, and then there'll be some kind of a competition also. Have you defined the sports? Because then there has to be Olympic sports, or cognitive sports can also be included. Have sports been defined? Pranshu, I'll answer. Sir. So, sir, with your permission, this is just a preliminary presentation prepared by PwC. So, this is for ideation. So, these are the issues which we will request all of you to highlight, so that all such issues can be incorporated when the ranking system is suggested to the ministry. No, I'm just asking whether sports have been, how will we define sports? Yeah, so I'll offline discuss with you, but for culture of sports and excellence, we need to identify the sports. There are 2 ways of having an index. One is a combined index, or you can have a culture of sports index and an excellence index separately. The general view would be probably to have just one index. So, but if you are working only for culture of sports, then it is immaterial whether the sports is an Olympic or not. If you are working for an excellence in sports, and that too, you have to decide whether excellence in Olympics. Because you may work for Kabaddi excellence, you may work for Kho-Kho excellence, that is a state's call. And also, just to complement, sir, once the parameters and indicators are all frozen, we will support that with a guideline, so that there is, no interpretation, possibility on that. Any other comment or suggestion, please? Sir, if you permit, sir, what we can do is, because we have a lot of agenda to cover, we have already enabled the sharing of all these presentations. We would request a few states to join us to finalize this design, and if you can volunteer or send us Tamil Nadu, Atulya ji is already raising his hand, so Vinil is already there, Suhas ji, Ravindran is ready. So what we'll do is we'll engage with everybody, it will be open to all for suggestions. First we'll form this small group,
we'll do a meeting on VC, etc. Come up with the next version, sir. Share it with everybody, then close it. And then we can start working on it for actually implementing it. So I think on that note, we can close both these presentations, sir. एक इशू जो अभी अतुल्या जी ने उठाया और संदीप जी ने जवाब दिया, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। ठीक सर जी। क्योंकि इसको वाइड ओपन छोड़ोगे राज्यों के ऊपर तो उचित नहीं और कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। Let us decide that for the Olympic sports there has to be a priority. Then for the overall culture of the sports, whether you want to have it the traditional games or the non-Olympic sport, there should be a different category for that. I think we should be very clear with that. और जब भी आपका एक डिस्कशन हो तो उस पर होना चाहिए रैंकिंग अलग अलग हो। हमें देश के लिए मेडल जीतने तो उसके लिए अलग दिशा में ही काम करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कल्चर क्रिएट करना है फिटनेस के लिए तो बिल्कुल अलग दिशा है। तो मेरा मानना है कि छोटा ग्रुप जब बने बड़ा स्पेसिफिक उस पर देखें और उसकी रिकमेंडेशंस भी ऐसी हो कि सबके लिए एक समान हो। जी सर, राइट सर। Thank you. Yeah. So thank you, Pranshu. Thank you very much. I'll request Vinil now to come up and present. Now I request Shri Vijay Singh, Project Director, Bhaskaracharya National Institute for Space Applications and Geoinformatics. After this. Oh, sorry, then you have to wait for me. To make the presentation on geotagging of sports infrastructure. Will you just wait for a second? I'll just. सर इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहती हूँ सर कि आपको याद होगा सर 2021 से हम लोगों ने डेटाबेस बनाने का प्रयास किया सर। विभिन्न राज्यों में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है उसका एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अपने पास होना चाहिए और वो हमारे किसी एक पोर्टल पे उपलब्ध होना चाहिए। ये एक सिंपल मिशन था। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रगल किया, कई बार डेटा नहीं आया, कई बार नॉन स्टैंडर्ड डेटा आया एंड कई बार वो डेटा जो आया उसको क्लीन करने या वेरीफाई करने के लिए हमें दिक्कत हुई। तो लेटली सर जो गति शक्ति मिशन आया है उसमें हम लोगों ने भी अपना ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और उससे सर हमारा एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन गति शक्ति की टीम से हुआ, बाइजैक ये इंस्टीट्यूशन से हुआ और अब सर हम लोग इसमें स्टेट्स के साथ बहुत स्पेसिफिक और अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का, चूँकि हमारी हेल्प कर रहे हैं बाइजैक, तो वो किस प्रकार से हम करेंगे उसके लिए सर एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। उसके बाद इस पर अगर स्टेट्स को और कुछ चर्चा करना है तो अगेन वी कैन डिस्कस। सो यू कैन गो अहेड प्लीज। Okay. Honorable dignitaries on the dais and off the dais. Yeah, basically before going for geotagging of sports infrastructure, I would like to go back for a little bit of a brief discussion on PM Gati Shakti. Under this program itself, we are integrating all the sports infrastructure, developing the mobile application as well as the web portal. So it is basically an interministerial state collaborative program where till now 33 ministries and all the state governments, 25 departments have integrated their data sets in this national master plan. And the overall coordination is done by DPIIT, Ministry of Commerce and Industry. And basically the overall scope of this program is that it's a national master plan for multimodal connectivity and its connectivity to all the economic zones for sustainable development. PM Gati Shakti National Master Plan is supposed to break the departmental silos and do the holistic planning and sustainable planning for all the departments, जिसके तहत एरिया का डेवलपमेंट और उस एरिया के साथ साथ वहाँ के सोशल डेवलपमेंट भी हो सके। इसको ध्यान में रख के ये फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है। इसके अंदर जितने भी टेक्नोलॉजीज़ हैं प्लस जितने भी डिपार्टमेंट्स के मल्टी सेक्टोरल डाटाबेसेस हैं उसके ऊपर जितने भी प्रोसेसेस और अप्रूवल्स अप्लाई हुए हैं उसके तहत यूज़र डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के अनुरूप एप्लीकेशंस डेवलप किए गए हैं
जो क्विक डिलीवरी मैकेनिज्म, लो कॉस्ट और इजी टू यूज़ है, और इसके अंदर हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का भी ध्यान रखा हुआ है। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है जो माइटी ने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के मदद से इसका कंसेप्चुअलाइजेशन किया है। सर एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि इसमें बेसिकली एक फूड और सिविल सप्लाई गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बनने से पहले उन्हें इसकी आइडिया नहीं थी कि यहाँ से एक हाई टेंशन लाइन जा रही है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर दिया, पर साल भर के बाद उन्हें ये पता चला कि यहाँ से एक 400 kV की लाइन जा रही है, जिसकी वजह से उनको अपने एक फ्लोर डिमोलिश करनी पड़ी। तो सर जब हम स्पोर्ट्स की भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट स्टेट्स के डिपार्टमेंट के जितने भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम प्लानिंग करें ताकि इस तरह की कहीं पे भी हमें परेशानी ना आ सके। सर जहाँ तक डाटाबेस का सवाल है, ये मल्टी सेक्टोरल डाटाबेस का इंटीग्रेशन है। ये सब डाटाबेस ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है और मिनिस्ट्रीज़ के ऑफिसर्स ने सर इन डाटाबेस का ऑथेंटिकेशन और इसके अपडेशन की मैकेनिज्म को डेवलप किया है। ये सब डाटाबेस एक दूसरे के तहत कॉम्पैटिबल है और सीमलेस है सर। इसके अंदर सर इन हाउस ओपन सोर्स और इन हाउस डेवलप टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ की गई है। इसमें कोई कॉस्ट का इसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं है, कोई भी कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं की गई है और इतने टेक्नोलॉजीज़ का इसके अंदर इंटीग्रेशन है और ये आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया है। इसके अंदर सर जितने भी डाटाबेस हैं इसमें इतने तरह के रेगुलेशंस ऑलरेडी हमने इंटीग्रेट किए हुए हैं, तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की कहीं पर भी आती है तो उनको पहले से खबर होगा कि कौन से रेगुलेशंस इसमें अप्लाई होते हैं, चाहे CRZ हो चाहे हमारा कोस्टल रेगुलेशंस जोन है, वो उनको पहले से पता चल सकता है और उसके आधार पे वो अपने अलाइनमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं ताकि कम से कम परमिशंस लेने की ज़रूरत हो। सर ये जो गति शक्ति है बेसिकली इसका जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो DPIT के थ्रू है और बाइसैक एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जहाँ तक स्टेट डिपार्टमेंट्स इसके अंदर कंसर्न है सर, स्टेट नोडल एजेंसी है और इसके अंदर नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति हुई है और वो नोडल ऑफिसर्स हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट्स DPIT और बाइसैक के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जो उनके प्रॉब्लम डेफिनेशंस हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वो डेवलप करते हैं और बाइसैक उसको ध्यान में रखते हुए यूज़र की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशंस डेवलप करता है ताकि प्लानिंग में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके सर। सर ये जो एक स्मॉल सर है फिर हम सीधे कैसे डाटा इंटीग्रेट होगा उस पर हम चले जाते हैं सर। ये एक डाटाबेस का स्ट्रक्चर है। कोई भी डाटाबेस पहले इस पोर्टल पे अपलोड होगा या क्रिएट होगा, उसकी डाटा वैलिडेशन की एक सर्टेन मैकेनिज्म है जिसमें चेकर मेकर और अप्रूवल का हमने कंसेप्ट डाला हुआ है। एक बार डाटा अपडेट हो जाता है उसके साथ उसका मेटा डाटा इंटीग्रेटेड है, डाटा स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है उसकी एक सर्टेन फॉर्मेट बनी हुई है और इसके तहत क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत डाटा की सिम्बोलॉजी भी हमने इसके अंदर की है और यूज़र्स को ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशंस, टूल्स और मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं जो फ्यूचर प्लानिंग में डिपार्टमेंट इसको यूज़ करती है सर। सर एक ये छोटा सा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के जो जितने भी उनके एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमने इसके अंदर दिखाया हुआ है और इसके साथ सर हमने इंडस्ट्रीज़ को भी साथ में दिखाया। तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ रही है वहाँ पे हमारा स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट्स है कि नहीं और जहाँ पे वाइसे वर्सा स्किल डेवलपमेंट की इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हमारी कोई इंडस्ट्रीज़ है कि नहीं, ताकि ये डिमांड और सप्लाई गैप को ये फुलफिल कर सके। और सर इसका रिपोर्ट भी जनरेट होता है और रिपोर्ट के आधार पे हम इसको देख सकते हैं कि कहाँ पे ये इसके लोकेशंस हैं सर। सर यूपी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक एप्लीकेशन हमारे बाइसैक के साथ ये PM गति शक्ति के तहत पहुंच का एक पोर्टल डेवलप करा है जिसके तहत उनके जो अनसर्व्ड विलेजेस थे
उसकी उन्होंने आइडेंटिफाई की डिस्टेंस क्राइटेरिया के द्वारा, ताकि वहाँ पे नई स्कूल्स की व्यवस्था शॉर्टेस्ट रूट के साथ की जा सके। सॉरी, अब सर हमने इसके अंदर डैशबोर्ड भी डेवलप किया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लिए, खेलो इंडिया और प्ले फील्ड के रूप से, ताकि जिसके अंदर सर डिसिप्लिन वाइज, स्टेट वाइज हम इसका नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। अदर देन दैट स्पोर्ट्स वाइज भी हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी इसमें हमें मिलेगी। बताना चाहूँगी सर, अभी हमने जब इनके साथ एंगेज करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने वो डेटा डाला है जो हमारे खेलो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम सर स्टेट्स को आज ये दिखाना चाहते हैं कि हर एक स्टेट को एक पोर्टल पे एंट्री मिलेगी, उनका एक पेज होगा और उनका भी कोई नोडल व्यक्ति होगा जो इसमें सर अपना डेटा डालना शुरू करेगा, जिसको सर बाइजैग हमारी हैंड होल्डिंग करेगा। सर इस तो उसके बारे में आप स्टेट्स कैसे आएंगे वो यस बताइए। मैम, हम जस्ट बता दे रहे सर। इसमें हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स का पोर्टल है। इसमें हमने खेलो इंडिया के जितने भी सैंक्शन स्कीम्स हैं 293, उसका हमने इसके अंदर डिपिक्शन किया हुआ है। डिफरेंट कलर्स से उसके स्पोर्ट्स की आइडेंटिफिकेशन है सर, और इसके एट्रीब्यूट्स भी हैं, जो स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर दिखाई गई है सर। इसके तहत सर हमने प्ले फील्ड्स जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके भी जो लोकेशंस हैं सर, इसके अंदर हमने इंटीग्रेट ऑलरेडी किया हुआ है, चाहे आर्चरी हो या फिर उसकी इंफॉर्मेशंस हो, एथलेटिक्स की हो, तो सर हमने उस तरह से इसको डिपिक्ट किया है कि कहाँ कहाँ पे इसके लोकेशंस हैं। इसको सर ये स्केल बेस्ड है, जैसे जैसे हम जूम करते जाएंगे ये चीज़ें हमें और भी क्लैरिटी से दिखती जाएंगी सर। और ये इसके तरह इतने सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स के लेयर्स हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर खेलो इंडिया स्कीम की भी इसके अंदर इंटीग्रेशन हमने की हुई है। इसके तहत सर इसके अलावा इसके अंदर और भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लेयर्स हमने ऑलरेडी इंटीग्रेट किए हुए हैं, जिसके सहायता से गैप आइडेंटिफिकेशन इसमें किया जा सके। अब वो बस आ गया मैम। ये मॉड्यूल्स सर हमने इसकी कनेक्टिविटी की मॉड्यूल्स से इसके अंदर डाली हुई, जिससे कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से, चाहे रोड की हो, चाहे एयरपोर्ट की हो, चाहे रेलवे की हो, वो हम जान सकते हैं। नेक्स्ट 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 गो टू द यस नेक्स्ट। ये वो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके अंदर वो ऑटोमेटिक बताएगा सर। नेक्स्ट। हाँ, मैडम का एक कंसर्न था कि जो भी डाटाबेस अभी तक इसके अंदर इंटीग्रेट हुआ है उसकी वेरिफिकेशन की एक मॉड्यूल सेट की जाए, जिससे कि वो डाटा वेरीफाई हो सके। तो हमने सर इसके अंदर एक वेरिफिकेशन का टूल डाला हुआ है, जिसमें कोई भी ऑफिसर्स अपने जगह पे बैठ के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के ये बता सकते हैं कि अगर ये एक्यूरेट है तो वो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई करेक्शंस है तो हम नीड करेक्शंस के ऑप्शंस को क्लिक करके उसको सबमिट करेंगे, तो वो डाटाबेस में डायरेक्टली वो अपडेट हो जाएगा। और इस तरह से हम देख पाएंगे कि कितने से कितने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर्स वेरीफाइड हो चुके हैं और कितने इसके अंदर पेंडिंग है, और कितने का करेक्शंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी करने की ज़रूरत है, तो वो हम इसके तहत कर पाएंगे। इसके नेक्स्ट, इसके अलावा सर इसके अंदर क्वेरी बिल्डर भी है, जिसके तहत हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स क्वेरी करके कोई भी गैप एनालिसिस हम इसके द्वारा कर पाएंगे। नेक्स्ट सर, इसके अंदर कोई भी अगर नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप करनी है तो ये ऐड टूल के द्वारा हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर के लोकेशंस को मार्क कर सकते हैं या उसके एरिया को भी डिमार्केट कर सकते हैं। और जैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे, ऑटोमेटिक एक इसका जो फॉर्मेट है सर वो ओपन हो जाएगा, जिसके तहत वो उसके स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट्स और तालुका और विलेज को वो अपने आप आइडेंटिफाई करके फिलअप कर देगा। और सर जो उसके बाकी के जो फॉर्मेट है वो सिर्फ यूज़र को ड्रॉप डाउन के तहत सेलेक्ट करनी है
और कोई भी हाथ से कुछ भी एंट्री नहीं करनी है, तो जिसके वजह से डुप्लीकेशन या उस तरह की कोई एरर होने के चांसेस नहीं है। और जैसे हम इसको सबमिट करेंगे, ये डायरेक्ट हमारे डाटाबेस में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सबमिट हो जाएगा। मेरा एक सवाल है, मैं बीच में ही आपको रोक रहा हूँ। जी सर। जितना डेटा हम लोगों ने अब तक इकट्ठा किया है, जी सर, वो कहने के लिए आ जाता है फुटबॉल फील्ड है, ना उसका कोई साइज़ है, ना उसकी कोई फैसिलिटी की डिटेल्स है। कहने के लिए मेरे पास 5000 फुटबॉल फील्ड्स होंगी और मेरे पास 4000 इंडोर स्टेडियम्स होंगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं कि उसका साइज़ क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, वो इस पे कहाँ एड्रेस हुआ है? सर उसके लिए सर हमने एक मोबाइल ऐप, मैडम सेक्रेटरी मैम का एक कंसर्न था सर, कि जो जैसा आप भी कल बता रहे थे कि पिछले चिंतन शिविर में जो हमारा इतना सारा डाटाबेस है उसकी डिजिटाइजेशन आज भी हुई नहीं है, तो हमने मोबाइल ऐप डेवलप किया जो बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जो स्टेट्स अपने यहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सर उसको डायरेक्टली वहाँ पे जियो टैग करके जैसे वो इसको अपलोड करेंगे सर, ये हमारे वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड है, तो हम लाइव डाटा देख पाएंगे अपने वेब पोर्टल पे भी कि फील्ड से कितना डाटा कलेक्ट हुआ है और कहाँ कहाँ पे अभी भी पेंडिंग है सर। तो ये मोबाइल ऐप पे सर ये बेसिकली OTP बेस्ड हमने डेवलप किया है सर, मैम के गाइडेंस के तहत। क्या भाई संदीप जी बताओ, आप दोनों यहाँ पे, पिछली बार के डेटा में दिक्कत इतनी आ रही थी कि जो स्टेट से डाटा आया है उसमें कोई सिर पैर नहीं था, 1.5 साल हो गया इकट्ठा करते करते, आपकी ही भलाई के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, सबके लिए ही। अब अगली एप्लीकेशन लेकर आ गए हैं आप लोग, लेकिन उसमें भी जो पहले का है उसमें क्या फ़र्क है बताइए, इससे क्या प्राप्त होने वाला है? कोई समझाएगा मुझे, मैं ही नहीं समझ पा रहा इसको। तो सर जो हमने पीछे जो मंगवाया सर डेटाबेस जो आप जिसकी बात करें, वो हमने एक फॉर्मेट सर्कुलेट करके लिटरली मतलब पेपर बेस्ड मंगवाया था, वो हमें बहुत दिक्कत भी हुई और हम उसको न स्क्रीन कर पाए, न स्टेट्स देख पाए कि हमने क्या उसको किस तरह से किया। और हमारे पास सर जो हमने जो पोर्टल बनाने की कोशिश की वो रूडिमेंट्री था सर काफ़ी, और उस पर फिर आगे बढ़ने में दिक्कत हुई बिकॉज उसको वेरिफिकेशन वगैरह का कोई तरीका नहीं था। वी हैड नो डिजिटल ऑनलाइन इंटरफेस विद द स्टेट्स। सर दिस इज़ अ टूल विच इज़ फ्री टू एवरीबडी, दिस इज़ अवेलेबल टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स एट वंस, this is the integrated infrastructure database of the government for the country for the benefit of states as well as center। तो अब सर ये जब एक्सेस दिया जाएगा जैसा ये कह रहे हैं मोबाइल ऐप वगैरह से, तो अब स्टेट सर इजीली इसको अपलोड कर सकते हैं। आपका जो कंसर्न है सर कि कोई स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ही इसमें आना चाहिए, कचरा नहीं आना चाहिए, आप जो बोलते हैं उसका मतलब मुझे यही समझ में आता है। तो वो हम सर जब हम रूल्स बनाएंगे कि क्या अपलोड होगा, तो वो हम स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को ही उसमें एल्गोरिदम में रूल्स बना के डालेंगे, ताकि स्टेट के एंड से जब कुछ डाला जाएगा तो नॉन स्टैंडर्ड विल नॉट बी एबल टू कम सर। दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड इट सर, बिकॉज वो जो लिखित में मंगवाया था सर वो थोड़ा इंटरैक्टिव नहीं था, तो हम एक बार मंगवाया फिर हम आगे उसका कुछ खास स्टेट से इंटरेक्शन ही नहीं कर पाए। So this is where we have an advantage. सर इसके अंदर हमने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज का भी बैकअप रखा हुआ है। भाई साहब मुझे उस टेक्नोलॉजी में आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपनी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। जी सर। सर मैं आई आप रुकिए, 1 मिनट रुक जाइए। मूल कारण ये बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि राज्य क्या फीड कर रहे हैं और हम क्या मंगवा रहे हैं। अगर उस गैप को हम नहीं भर पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में भी सर इसमें बाइसेक, 1 मिनट रुकिए ना साहब, आप 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। किसी राज्य के लिए हो सकता है जो मनरेगा में इन्होंने खेल मैदान बनाया उसको भी खेल मैदान गिन रहे, मैं नहीं गिन रहा। वो पहले भी थी, आज भी फील्ड है, वो कहाँ फर्क पड़ जाएगा उसका। पहले हम एक कैटेगरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो चलें। सिंथेटिक ट्रैक कितने हैं, किस साल में बना, उसका ड्यूरेशन कब तक खत्म होने वाला है, केवल इतना चाहिए। इंडोर स्टेडियम है तो किस साइज का, 20x40 है या उससे बड़े साइज का है, उससे छोटे साइज का। देयर शुड बी सम कैटेगरीज ऑफ इट। फिर उससे अगला आएगा, अगर हमने हॉकी टर्फ बनाई है तो कई जगह केवल मिट्टी की है, कई जगह घास लगी, कई जगह हॉकी टर्फ लगी है, उसकी कैटेगराइजेशन कैसे होगी।
आप तो जियो टैगिंग करके छोड़ रहे हैं, वो तो अगली स्टेज आएगी। सर इसमें सिर्फ जियो टैगिंग नहीं है, इसके अंदर स्पोर्ट्स वाइज सर जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट मिनिस्ट्री ने बनाई है सर, वो ड्रॉप डाउन मेनू से कोई भी फील्ड पे अधिकारी उसको सिर्फ सेलेक्ट करनी है। दिखाइए सर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले फील्ड है और फिर नेम ऑफ द प्ले फील्ड है, ये सब ड्रॉप डाउन मेनू से ही सेलेक्ट करनी है सर। नेम ऑफ द प्ले फील्ड आ गया, फिर आगे फिर सर जैसे डिसिप्लिन नेम है तो हम जैसे डिसिप्लिन नेम को क्लिक करेंगे सर, कोड टाइप इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नहीं, आप कोड टाइप खोलिए, इसमें सब डिसिप्लिन नेम के नीचे कोड टाइप। हाँ सर, ये अभी इसमें ये हम डायरेक्ट पीपीटी में देख रहे हैं सर, बट इसके अंदर जो भी हमें क्या कोड टाइप में क्या क्या ऑप्शंस हैं? इसमें क्या क्या ऑप्शन है जी कोड टाइप में? सर इसमें शायद कोट टाइप में क्ले कोट है या इस तरह के जो है सर इन मिनिस्ट्रीज बेसिकली कोट टाइप में होना यही चाहिए जो आप कह रहे हैं कि अगर टेनिस है तो क्ले कोर्ट है या ग्रास मतलब किस टाइप का कोर्ट है। वो फिर सर का क्या एडवाइस है बेसिकली कि अगर फुटबॉल ग्राउंड का आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहेंगे तो फुटबॉल की ग्राउंड की कैटेगराइज करना जरूरी कि 60/90 का है, फुल साइज़ यहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप या फेडरेशन की हेल्प से हमें करना होगा। फिर 6 साइड अगर या फुटसाल खेलते हैं तो फुटसाल का साइज स्टैंडर्ड क्या होता है, तो ये हमें ABCD फुटबॉल में जाकर के 8-10 कैटेगरी बनानी पड़ेंगी। बिल्कुल सर, बनानी तो पड़ेगी। सर का यही एडवाइस है, तो वो हमें और आपको मिलकर के वो काम और फेडरेशन के साथ वो सर इसके तहत मिनिस्ट्री के एडवाइस और गाइडेंस से सर इसके अंदर हम वो सब ऑलरेडी डिफाइंड इसके अंदर फील्ड वाइज कर पाएंगे। जो सर फील्ड के ऑफिसर्स को सिर्फ ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट ही करनी होगी, स्पोर्ट्स वाइज वो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के इसके अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं सर, ताकि जो भी डाटा कलेक्ट हो पूरे स्टेट से एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही डाटा कलेक्ट हो, और डायरेक्ट ये जो भी डाटा सर इस मोबाइल ऐप से कलेक्ट होगा वो डायरेक्टली हमारे वेब पोर्टल पे उसका डिस्प्ले होगा, और डायरेक्टली हम इस वेब पोर्टल पे देख पाएंगे कि स्टेट वाइज और स्पोर्ट्स वाइज कितनी डाटा का कलेक्शन अभी हो चुका है। Actually, good morning. Just I want to intervene to the point that sir was raising. Actually, sir, जो आप कह रहे हैं कि फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड या जो भी फील्ड है, yes, myself Rahul Shresh, Director DPIT, looking after this PM गति शक्ति aspect. Sir, इसमें जो आप इंफॉर्मेशन कह रहे हैं ना, that is with respect to the attributes of the data layer. जैसे आप अगर फुटबॉल ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री हमें फुटबॉल ग्राउंड बनाते समय ये इंफॉर्मेशन देंगी कि ये टाइप के A, B, C, D इस कैटेगरी के ग्राउंड्स हैं जिनका साइज़ ये है। तो आपकी वो जो इन्फॉर्मेशन है कि ये फुटबॉल ग्राउंड कब कमीशन हुआ, इसकी सिटिंग कैपेसिटी क्या है, इसका साइज़ क्या है, इट ऑल विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ attribute to the data layer of the football ground. Now the football ground is one data layer. Accordingly we can have cricket ground or hockey ground. और इसमें जो डेटा लेयर्स और उससे रिलेटेड जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि हम इसमें क्या क्या फीचर्स या क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं, विच विल बी टाइम स्टेप्ड ऑल्सो। मतलब ये डेटा कब अपडेट हुआ है रियल टाइम बेसिस पे, और इसमें हम और क्या इम्प्रोवाइजेशन कर रहे हैं या हम कोई फ्यूचर इस पे टूल बनाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें उस डेटा लेयर के क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान का पार्ट है। जैसे ही कोई डेटा हम अपलोड करेंगे उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें सैनिटाइज की जाएंगी। So, sir, हमारा अभी जो रिक्वेस्ट है, पर्पस टू शो दिस वाज दैट वी आर बिगिनिंग टू वर्क ऑन दिस नाउ। एक आपको दिखाने के लिए हमने ये खेलो इंडिया के अपने प्रोजेक्ट्स इस पे दिखा दिए। वी विल एंगेज विद द स्टेट सर एंड विल क्रिएट अ मेन्यू वेयर वी डू नॉट गेट नॉन स्टैंडर्ड इनपुट्स इनटू इट सर। वो हम इनके संग काम करके उस तरह का लॉजिक या उसका फ्रेमवर्क बना के स्टेट से शेयर करेंगे। और सर ये फिर हमेशा के लिए एक लाइव इंटरेक्शन रहेगा सर, फिर इसमें कभी किसी को पेपर बेस्ड रिपोर्ट्स वगैरह देने की ज़रूरत ही नहीं, एंड इट्स ऑल रेडीली अवेलेबल फॉर फ्यूचर प्लानिंग ऑल्सो सर। सो वी जॉइन द बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एज डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स सर, सो दैट विल बी द गुड टेक अवे फ्रॉम दिस। ये तैयार है आपका? ये सर 80% तैयार है, थोड़ा बहुत खाली डिटेल इंफॉर्मेशन सर मिनिस्ट्री से चाहिए कुछ स्पोर्ट्स के लिए जो इसके अंदर हम इंटीग्रेट कर कितने दिन और लगेंगे? मिनिस्ट्री में तो हम पूरी इन्फॉर्मेशन तो विद इन 1 वीक कि क्या क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए वो तो सर आपसे पिछले 1 साल में जो इंटरेक्शन हुआ वी आर अवेयर ऑफ 10 मई तक ये सारी स्टेट्स के साथ शेयर हो जाए। बिल्कुल हो जाए। शेयर्स स्टेट्स अपना 1 हफ्ते के अंदर इनपुट दे कि इसमें क्या बदलाव करने चाहिए, और बहुत ज़्यादा चीज़ें मांगने की बजाय जो चाहिए प्ले ग्राउंड्स की डिटेल
वो लेनी चाहिए, और राज्यों के पास उपलब्ध क्या है। केवल आप अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट तक सीमित मत रहिए। कहीं पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ बनाया है, कहीं पे किसी और डिपार्टमेंट ने कुछ बनाया, बट दैट ऑल्सो फॉल्स अंडर द क्वालिटी स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड, इंडोर फैसिलिटी या वैसे बाकी होंगे। हर जगह केवल खेल डिपार्टमेंट ही सब कुछ नहीं कर रहा, कहीं पे शिक्षा विभाग है, कहीं अन्य विभागों ने भी अपना कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर किया है, तो वो सब उस पर आ जाए तभी मैपिंग हो पाएगी। और सर इसके तहत हम स्टेट्स के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हम सर ये मोबाइल एप्लीकेशंस की ट्रेनिंग और बीसी के द्वारा या हमारे बाइसेक में आने के बाद भी उनको हम 2 दिन या 3 दिन की ट्रेनिंग हैंड होल्डिंग हम करेंगे सर, जिससे सब डाटा हमारा इसके अंदर जल्द से जल्द सर आ जाए। थैंक यू सर। Thank you very much. Thank you very much, and we are very optimistic about your help to us. And I will request the states, it's extremely useful. You all know about the magical transformation that is going on with Gati Shakti. So we are all now going to be part of it. So that's a good thing, I think. Thank you. Now we have the last presentation in this session by Odisha, and I invite Honorable Minister of Sports and Youth Services, Government of Odisha, Shri Tushar Kanti Behera sir, and Shri R. Vinail Krishna, Commissioner cum Secretary Sports, for this presentation. All the dignitaries on the dais and of the dais, a very good morning one and all. At the outset, I would like to thank Honorable Union Minister Sri Anurag Singh Thakurji and Minister of Youth Affairs and Sports for organizing this Chintan Shivir. Also, we would like to thank him for his continued support to Odisha. We are grateful to you, sir. Under the leadership of our Honorable CM Sri Naveen Patnaik, Odisha has been making huge investment in sports in recent years. His vision is towards making Odisha as a global sports powerhouse to create a sports culture for a healthy society. And he believes sports is the only platform which can be used as the channelization of energy of the youth. His visionary statement, Sports for Youth and Youth for Future, has been really justified that statement. Sports need larger partnerships, as it is not just a scheme but a movement. All of us want tricolor to fly high at international events. We need to converge our resources and energies towards that common goal. Therefore, our Honorable CM believes in the model of partnerships with all the stakeholders. We have partnered with the corporates and elite sport persons and sports agencies and national federations towards creating excellence. We have to leverage the strength of the partners. Government has strength in investing huge amount of infrastructures and conducting large number of competitions, while the corporates have advantage of flexibility in recruitment and procurement. Therefore, they are best suited to bring in the coaches and critical staff and high quality kits and equipments. In short, government takes care of the hard components while the corporates take care of the soft components. We are experimenting with this model and it has started showing some results. As the credibility of the programs is established, more corporates are wanting to partner with the government. We have come up with 4 or 5 examples as case studies. Now I would request our Secretary, respected Sri R. Vinail Krishna, to make a detailed presentation. Thank you. Honorable Minister, dignitaries on the stage and off the stage, good morning. So as our Honorable Minister has mentioned, our model of partnership which we engage with all the stakeholders is in terms of the hard component is something that we take care, and the soft component, HR and related issues, is something that we're trying to engage with the corporates. So we are having a very brief presentation. We'll touch upon what we are doing with the corporates in the sports management agencies and sports persons, and also what we are doing with the partnership with the
National Sports Federation. We have AFF here. We work very closely with AFF and many other sports federations. Broadly, if I have to explain it, we as a government take care of the infrastructure, the competitions, right from the state level to national and international level, cash rewards, incentives to the sports persons and also jobs, coaches education program, which is a major vertical that we all need to address, and also the athletes promotion in terms of athlete, not only the cash rewards, they also need recognition. That's what really actually motivates them. And therefore, we do large-scale PR and media publicity for the athletes as well. And our partners, the corporates and the sports management agencies and elite sports persons, they bring in the soft component, that is in terms of the coaching program, deployment of coaches, including foreign coaches, international level, and also our good reputed national coaches. Grassroots training centers, in some of our sports disciplines with our corporate partnerships, they are engaging the coaches at the grassroots level also. For example, for hockey, with the Tatas, we are running around 25 hockey training centers with synthetic turf. This just we have launched it. So here again, we are investing in the infrastructure. We are taking care of the housekeeping, security, all those aspects. They provide the manpower in terms of coaches and assistant coaches and having the detailed coaching program at those levels. Then, of course, the nutrition is also very important. So again, if weightlifting requires different nutrition from, let's say, hockey or athletics, and therefore the nutrition is also sometimes we have the corporate partners taking care of it. Sports kits, again, there is need for flexibility. One of the major issues apart from HR, what we struggle in government is procurement. So if you have to procure very high quality equipment for customized for some of the athletes, again it becomes very difficult in the government system. So again, sports kits is something that the partners bring in. And science, sports is currently driven by science. If we really need to get medals at the Olympic level, we have to bring large scale science into our coaching programs. And therefore, that is again something with respect to equipment or the experts. It's a very high cost activity, and therefore again the corporates have that flexibility to bring in the right kind of resources for that. So a combination of all these is what we run our high performance centers in partnership. And these are the different sports and different partners that we have currently, and they are established and they are running for last few years. Some of it we have just started. I'll take hockey as an example, and then later on in the presentation we have other sports as well. If time permits, I will go through it, or otherwise the presentation is available for reference of everybody. Hockey again is something that is very close to the heart of our Honorable Chief Minister, and we are making huge investment in hockey. Hockey has that emotional connect with Indians. Somehow we believe that it is our national game, even though it is never notified as such. And when India was not even a country, hockey was something that has brought that identity to the Indians at the international level much before independence. And therefore, Honorable Chief Minister desires to, he has been making a lot of investment, our state government, in hockey. And we are able to bring Tata Steel and Tata Trust as our corporate partners in hockey. So here, infrastructure is something that we invest. We have built the not only India's, it's the global best 2 stadiums in hockey are in Odisha, in India. So recently for the World Cup, we have built this stadium in Rourkela, which is currently having the Guinness World Record. Then we have Kalinga Stadium in Bhubaneswar. This is also the venue for the World Cup. So our hockey players get the best of the facilities when they practice and play the competitions. This is the high performance center building. This is where the hockey players are being accommodated. This is just about to be inaugurated. So it is a fully it has accommodation, it has classrooms for education, dining hall, kitchen, practice space, gym, physio. So it is a complete, comprehensive facility that is created in the same campus as the stadium.
The coaching program is run by the Odisha Naval Tata Hockey High Performance Center. So they bring in all the staff, the entire coaching staff, the support staff that is required for doing this high performance coaching program. And here, very strategically, we are only concentrating on the sub-juniors and the juniors, because our idea is that once we concentrate on sub-juniors and juniors, the pathway is for them to get into the Indian junior teams. Then they have a pathway to go into senior teams and have a career for themselves. So our focus is entirely on the junior programs through the corporate partners. Then competitions is again something that the government invests a lot. So we have been doing large number of international competitions, national level. So this is basically to create an atmosphere for the game and also motivating the budding hockey players so that when they see these competitions, they all get quite inspired. Coaches education program is again something that is very important. So we have Hockey India and FIH, different certification levels are there. So therefore, we regularly conduct these programs in partnership with Hockey India so that we have certified coaches at all levels to take care of our coaching programs across the state. Then grassroots training centers, what I was explaining. So these are the 22 are already ready and another 3 will be ready shortly. So these grassroots training programs, what we call as the hockey training centers, these are also spread, some even in the block level where hockey is very popular. And this again, the coaches come from the Tata Group. And they also conduct these grassroots leagues regularly to identify the talent and pick them up for the high performance center. Then again, to promote the game, we are conducting currently summer camps across our hockey training centers, and it's a huge response from the kids of various age groups. Athlete promotion, I was briefly mentioning. So for an athlete, it's very important to give that recognition so that they are constantly motivated to work hard. So we do it through social media and media. And of course, we give a lot of awards, cash rewards, one of the best, like whatever Haryana gives, we are also giving on par with that. And also we give directly job. If they get a medal at the national level or get selected to the national team, then they automatically get the job in the government. So that's again a great motivation for most of them. Sports science, as I was mentioning, so this again, the corporate partner, the Tata, they bring the video analysts, the sports psychologists, sports diet, nutrition, physiotherapy, rehabilitation, injury management. Again, in all these things, they bring in the required experts and resources. We are very keen that the education is very important for all our athletes, the hockey players and also the other sports persons. Because even the success rate is hardly 5%. So if you are taking 100 hockey players into our high performance center, then hardly 5 or 10% will actually go into the national level. So therefore, what happens to the remaining 80–90% of the students? So we try to say that education is something that we have classrooms and tutors are engaged so that they don't neglect their education. And we are in talks with Tata Strike to create career progression, career counseling support also, so that because they are physically fit, they can easily get jobs in police, they can get jobs in army or any physical oriented. Even in our physical education college, we have given 15% reservation to whoever is a sports person who is part of our hostel or the HPC. So holistic development in terms of the education, recreation, everything. This is jointly done by both the government and also our partner. So some results have started coming in. I will just want to mention one thing regarding Sunilta Topo. She is only 16-year-old and she is already in the camp for the senior women's team. So a lot of talent is coming up. Now they are getting the right kind of a nutrition, right kind of a support, which is helping them in making quick progress. So like how I have explained in hockey, I will quickly go through some of our other partnerships. So similarly, we have it in athletics. So here our partner is Reliance Foundation. So we are again taking care of the infrastructure. We are building the India's first indoor athletics stadium.
so that our athletes can practice throughout the year, whether it's winter or summer or rainy season. So this is something coming up, and we are also investing in synthetic tracks across the state, because athletics is something that is like a basic discipline from which kids can go into many other sports as well. So we are trying to invest in this one. So again, the coaching program is conducted by the High Performance Center, here in this case the Reliance Foundation. So they have deployed 2 British coaches, and also we have large number of our own national and state level coaches who take care of this. We organize competitions, not only the international level competitions, but also the national level and state level, and also we have performance graded competitions, which are also organized regularly to identify the talent. So again, coaches education program is very important for us. Grassroots training, again, summer camps, daily coaching programs across our synthetic tracks, this also keeps going on. Talent scouting, again, this is something that we have a elaborate program through which we scout. And awards and recognition, this is just one example of Bapi Hanstra. Currently, he is world #1 in 400-meter hurdles in the under 18 category. So he shifted to 400-meter hurdles. He used to be an 800-meter athlete, and he shifted to 400-meter based on one of our coaches' suggestion. And within 1 year, he is able to achieve the world #1 ranking. So that shows the kind of talent that is there in the country, and providing the right coaching and resources, we will definitely be able to dominate, because athletics is something, Madam is here, so it's supposed to be very difficult in international level because of the competition from Western countries. But it shows that definitely we have the talent, and with right resources, we should be able to achieve it. And we give good kind of a cash rewards for the athletes whenever they perform. So this is again the Sports Science Center for Athletics. And I wanted to mention one more. Honorable Chief Minister's vision is not only for Odisha, but it is also for the entire country as in India. He wants a as our Honorable Minister said, the tricolor our flag has to fly high in the international events. And therefore, in our High Performance Center, it is not only Odisha athletes or the sports person, but we allow almost like up to 25% from other states as well. So here you can see Jyoti Eraji, who's from Andhra Pradesh, and she is now, I think she has broken 5 national records in 3 weeks. She has been performing so well in recent time. Similarly, we have Amlan. Amlan is from Assam, so he was training in our Kalinga Stadium in our High Performance Center, and currently he has also broken the national records. In swimming, we have the partnership with JSW, and we are constructing an indoor aquatic center. We already have swimming centers, and we are also investing in 25 swimming training centers, where again the same model, the JSW is deploying the coaches and assistant coaches, and also lady coaches, while we are investing in the infrastructure, we are maintaining it, housekeeping, security, pool operator, the lifeguard, those categories we are taking care of, and coaching program is run by JSW. So these are some of the visuals of the coaching program. So we have a South African coach and also one of the Asian medalists from India, Sandeep. He is also part of the coaches program. And we also support the Swimming Federation, and we conduct the competitions also regularly. Recently, we have conducted the Khelo India League as well. So this is again the coaches education program at all levels. Swimming again is something little bit risky is there. So therefore, we try to see that we take care of all the safety factors so that the parents are confident to send their kids to the swimming. So again, the grassroots. Some performances. Weightlifting, again, we have with one of our local company and also 10-week sports of Sri Kumble. So weightlifting, again, we are setting up 47 training centers. So these are the visuals of some of our big centers. And again, the coaching program, competitions, coaches education. Sports science, as we are partnering with Abhinav Bindra Target Performance Center. So this, again, we have established it. Now we are expanding it. So we have a large number of experts in these fields who are helping our athletes across the sports disciplines. So similarly, we are upcoming with the Gopi Chand, the badminton high performance center is coming up.
We already do badminton with Sai Regional Center. We partner with the Sai and it has shown really good result. We have some Sai coaches and we also are investing in the badminton competitions. So badminton again, we are now currently constructing 90 indoor halls where badminton will be trained. Similarly with shooting, we have Aditya Birla Group, who's our corporate partner, and Gaganarang is there. Recently, we have signed an MOU with ArcelorMittal Nippon Steel. So we are establishing the Gymnastics High Performance Center and also grassroots at 3 other locations. It's almost ready. We'll be inaugurating it. We would request Honorable Minister also will request for time. This Gymnastics Center, sir, the part funding for the building, the indoor hall has come from the ministry's infrastructure fund. And since we are trying to create the ecosystem overall, so sports management is also very important in terms of the sports management degree and also the certification courses. So this we have tied up with Xavier Institute, which is based in Bhubaneswar, and they have tied up with France Emilion Business School, and we have created these. So currently, second batch is running in sports management. So the advantage that they have is that whenever we have the competitions or other activities, they intern with us, and therefore they get that live experience of learning. Secondly, very quickly regarding our partnerships with the federations. So hockey is something that we sponsor. Yesterday only Cabinet has further approved for another 10 years of sponsorship for hockey team. So it's not only just about sponsorship, but we also partner with them in the competitions, the international championships, and also coaching camps and coaching certification programs. Kho-Kho, again, we partner with them. We supported them with the Kho-Kho Nationals and also Kho-Kho League, which was launched last year. We have partnered and taken one team, Odisha Juggernauts, which also won. And Kho-Kho we are very keen on developing because it's a low-cost model. It can be spread very quickly. Kho-Kho is popular in Odisha as well. Rahul Bose was here. We partner with rugby. We sponsor the women's team because he has shown his commitment to take rugby into the Los Angeles 2028. So therefore, we are partnering, and our girls also do very well in rugby. So we help them in the coaching camps and also the competitions. We are partnering with the AFF, so we have developed some of the best FIFA level grounds. So we had conducted the FIFA Under-17 Women's World Cup. We were one of the venue, and luckily as a legacy, we have got really good quality football stadium and pitches. So again, we regularly conduct the competitions with them, championships. We are going to host the 4-Nation Intercontinental Cup in June again. And Bhubaneswar has been the base for the under-16 and under-19 teams over the last 4 or 5 years. So we have not only given our infrastructure, but we also part fund the entire coaching program for the football teams, youth football teams. And one of the main focus that we have is on women's football. So we have Odisha FC, which is also, again, we support. The Odisha FC is a privately owned club. So we support in terms of no cost for the infrastructure and facilities. And they make the Bhubaneswar as their home ground. And it is one of the, I think it is only ISL club which is also having a very strong women's team as well. So that has been at our request because we want to promote women football. So this some visuals from the Women's League tournaments that we had organized. We do a lot of these coaching certificate programs also on referee programs, technical official program in partnership with AFF. And we have a large number of grassroots level programs that we are doing. Swimming again is something that we are supporting the Swimming Federation in a way. And their focus is there on water polo, because once upon a time we were good in water polo decades back. And the only other team event where India can do well at the Asian level is water polo. So they have brought Serbian coaches, and we supported them with some funding and also the infrastructure. One important thing that we are doing is the Olympic Values Education Program. This we are doing it in coordination with Indian Olympic Committee and IOA. So this is a program that we are currently running in 90 schools in Odisha, and we are expanding it to another 250 schools.
So overall, another major intervention that we do is we support the federations in terms of organizing big events so that we also develop the capacity to organize, and at the same time we are trying to popularize the sport. So we do at the international level and also many national and state championships also we are trying to see how we can organize it in a very standard manner so that they get the right kind of an atmosphere for competition. Thank you. Yes, that's. Thank you so much, sir. Thanks for giving Thank you. Your sports budget? What is your sports budget? We used to be in the range of 150 crores. In the last 2 years, we are now at 1200 crores. 1250. Can I request, whenever I think we talk about budget, let's differentiate between three things: infrastructure budget, second is a salary, and some of the states have a salary component of PE teacher also, which is important if it is included. And then what is the soft component for training or grassroots development? Then that I think will reflect whether it's a balanced budget or not. Yes. That is my personal view. Yes. Actually, currently we are in the process of doing infrastructure large-scale projects. So almost 80% of our budget is going towards infrastructure development. So the remaining 20%, which is also a large sum currently, it's almost like 200 to 300 crore is going towards the competitions, coaching programs, and at various levels. Sorry? No, that is apart from this. So what the corporates are, so we are also not aware of how much budget they are doing it, but they are providing all the coaches and nutrition and all those support. Thank you. Jatin, wait. So that was an excellent presentation. So thank you, Government of Odisha, Honorable Minister and Venil. Sir, yesterday, now we have concluded the formal presentations round. Yesterday we had formed some groups and the Honorable Ministers and the officers have worked and some themes and presentations have been prepared. So I would request the first group headed by, we had actually put it like the first state will present. So Honorable Minister Shri Tinku Roy will be on Tripura's side present, and the presentation will be done by Shri P.K. Chakrabarti, Secretary Sports, Tripura. So if you are ready, we can start. So the subject... Jaldi karna padega, we are running very late. Sir, subject is scouting of grassroots talent. इतना बता दीजिए कि इसमें किस किस राज्य के रिप्रेजेंटेटिव थे और उसके बाद फिर अपने सजेशंस पे आ जाइए. Namaskar, sir, and other dignitaries on the dais and off the dais. The topic is scouting of grassroots talent. The states which have contributed to the making of the presentation is Andhra Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Assam, Chhattisgarh, Haryana, in addition to Tripura. So there are 6 slides only. The first, sir, the need for scouting grassroots talent, and then there will be stakeholders. Who are the stakeholders actually? And what is the current methodology of scouting? And normally how scouting is done at present, and how to go about it out of box, sir. The first is the need for scouting for identifying the talents at the grassroots level, sir. So there is the need for widening and the increasing the talent pool actually. The second is there should be a continuous supply of talent to sports centers of excellence, sir. The need to unearth and nurture the hidden talents and hidden jewels, sir. Sir. Then providing platform to showcase the talents, sir. Then we need to assess the sports scientific skills and physical attributes. Who are the stakeholders? Next slide, sir. National federations,
sports federations, state, district sports associations, sir. There is the government bodies, sir, central, state, district, block level, even at the village level also, sir. Schools, colleges, universities, and other academies, government and private, sir. They are all the stakeholders, the main stakeholders, sir. Next. The current methodology is to organize the local tournaments and championships for talent search, sir. Then holding of camps, sir. Then partnering with schools and other colleges. देखिए भाई साहब, अगर आपने इसको पढ़ना ही है तो आप हमें वैसे प्रेजेंटेशन दे दीजिए, इसमें क्या फर्क है? 7 राज्यों का ग्रुप बन के इकट्ठा हुआ, उसका निचोड़ निकाल के आपको कुछ समझाना है। ये तो आपकी प्रेजेंटेशन बन गई, किसी ने टाइप कर दिया, वैसे आ गया सब कुछ। जब आपकी आपस में चर्चा हुई तो निकल के क्या आया? क्या वे फॉरवर्ड है? Just a couple of minutes, sir. नहीं, couple of minutes नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है जी, ऐसे नहीं चलती है मीटिंग। Sir, may I request someone from the group to? ग्रुप में से कोई, आप में से कोई कुछ? Suhasji, would you like to speak? Would you like to talk? You are in the group. In the group, ma'am. महाराष्ट्र है ही नहीं उस ग्रुप में, पंजाब था उस ग्रुप में, हरियाणा था, असम, पंजाब, हरियाणा, असम। आप में से कोई कुछ ऐड करना चाहता है? Haryana was in the group. नहीं, आप बैठ के बोलिए ना, आप प्लीज बैठ के बोलिए। Haryana can also, sir, throw light on, they have started the nurseries at a very small level. So how they are doing grassroots talent identification, probably in 1 or 2 sentences they can describe. Sir, I already gave it in my presentation regarding the nursery that is being run in the schools or in private grounds and everything. And the focus is to catch the talent and nurture them at the young level. And one of the very good thing about the gradation of those school nursery is that we have that landmark that every nursery should be getting some medals in the recognized national event, state level event, international event. And based on those results, we promote them. We give them 3 lakhs rupees also per year so that they can upgrade. So whoever is performing better will keep on getting support, and those who do not perform will be weeded out. So वो आपने सुबह बता दिया था, तो उनका 1 साल का एक्सटेंशन होगा, 3 लाख रुपए मिलेंगे, नेक्स्ट कैटेगरी को 2 लाख मिलेंगे, 1 साल की एक्सटेंशन। राइट सर। उसके अलावा कुछ ऐड ऑन करना है तो रेपिटेशन की बजाय लेट अस यूटिलाइज द टाइम इन अ इफेक्टिव मैनर सो दैट वी शुड टेक बैक समथिंग। सर, जैसे टैलेंट में सर द कैच देम यंग मोटो को लेते हुए, जैसे 14 इयर्स तक सारे बच्चे स्कूल में ही होते हैं, तो जो स्कूल की गेम्स हैं जो हम बात करते रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सो देयर हैज़ टू बी कन्वर्जेंस इन द स्पोर्ट्स along with the school games separate हो रहा है, sports department का separate हो रहा है. If we can converge them and dedicated talent district level squads are built to at the district level to identify the talent, and enlarging that pool and our center of excellence, we can increase our capacities also by, let us say, 50% or 100%. So that is the way forward, sir. We can enhance the this talent search as well as taking it forward, sir. इस मीटिंग का हिस्सा मिनिस्टर्स भी थे कि केवल ऑफिशियल्स ही थे? ऑफिशियल्स केवल ऑफिशियल्स बैठे थे। चलिए अगली प्रेजेंटेशन पे। सर, कैन आई गिव 2 पॉइंट्स सर? आप इसी मीटिंग? नहीं सर, आई वाज नॉट इन दिस। सुझाव देना है? है सर, दीजिए। सर नंबर 1 जो हमने इम्प्लीमेंट किया, मैं बता रहा हूँ सर एज ए सजेशन, बच्चे को एक बार ट्रायल में ला के आप स्काउट नहीं कर सकते हैं सर, बिकॉज बच्चे उस दिन बीमार होंगे, इंजर्ड होंगे, या घर में प्रॉब्लम होगा, आ भी नहीं पाएगा, तो एटलीस्ट यू शुड गिव 6 चांसेस सर, सो दैट ही इज अवेलेबल, नंबर 1. नंबर 2, डोंट कंडक्ट ट्रायल्स at place of your convenience. Go to his place and conduct the trials. 2. Number 3, there is always anthropometric measurements for each and every game, sir. आप आर्चरी ले लीजिए, शूटिंग ले लीजिए, they have a battery test conducted, sir.
which is called as World Beaters Test, which is implemented throughout the globe, sir. So let us implement that and do the anthropometric test, and we can identify कौन बच्चे किस गेम के लिए लायक है. So these are the 3 suggestions I wanted to make, sir. Thank you. Thank you. So we go to the next group. The group is एक suggestion और पीछे से आ रही है जी. Mr. Oza. हेलो सर, माई सेल्फ भौमिक कुमार ओझा, आई एम फ्रॉम गुजरात. हम सर स्टेट में खेल महाकुंभ करते हैं, वहाँ पे हम टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं. मैं सर सबको बताना चाहूँगा, हम 2 तरीके से टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं. एक हम करते हैं प्रूवन टैलेंट के जो ऑलरेडी कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, उसमें कुछ अचीव कर रहा है, और दूसरा हम तालुका लेवल से फिटनेस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हैं, जहाँ से हम हर एक तालुका से 8 बच्चे लेकर आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. वहाँ पे उनका बैटरी टेस्ट होता है, उनका फिर फिटनेस इंडेक्स बनता है, उनको फिर हम वहाँ से सिलेक्ट करके स्टेट लेवल पे ले जाते हैं. स्टेट लेवल पे जो हमारे टेस्ट होते हैं वो सारे सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक पे होते हैं, और उन पर फिर उनका मेरिट लिस्ट बनता है. 21 मार्क्स का हमारा एक चार्ट है पूरा, और फिर वो मेरिट लिस्ट के हिसाब से फिर हम उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स स्कूल में लेके आते हैं, और वहाँ पे मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपोजर देते हैं. और 2 साल के मल्टी स्पोर्ट्स एक्सपोजर देने के बाद उनको प्रूवन टैलेंट में, जो स्पोर्ट्स में वो बच्चा अच्छा है, वहाँ पे उनको कन्वर्ट करते हैं. तो इसमें सर हमें काफ़ी सफलता मिली. हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वाईटी में सिलेक्ट हुए हैं, वो जूनियर में इंडिया में भी रिप्रेजेंट किया है. तो सर ऐसे भी हम एक मॉडल डेवलप कर सकते हैं सर सारे स्टेट. थैंक यू सर. थैंक यू. Sir, the next group is competition framework development. The member states were Goa, Gujarat, Mizoram, Madhya Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Karnataka, and Shri Rushin Bhatt, Secretary Sports Authority of Gujarat, will make the presentation. Check. Is he here? Yes. Please, वहीं से करिए, जल्दी करिए. जी. तो सर जो नेक्स्ट पे चले जाइए. स्लाइड चेंज करिए. स्लाइड. सर जो स्ट्रक्चर्ड कंपटीशन फ्रेमवर्क है उसकी बात की है. स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट और ग्रासरूट लेवल से कंपटीशन स्ट्रक्चर होना चाहिए. उसका पर्पस टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स, एलिट कैरियर पाथवे और क्वालिफिकेशन फॉर मेगा इवेंट्स होना चाहिए. डिफाइंड रोल होने चाहिए. सर सुबह से जो डिस्कशन हो रही है, प्रधान साहब ने भी बताया है कि किस किस का क्या रोल होता है. गवर्नमेंट का क्या रोल होता है, एसोसिएशन का क्या रोल होता है, उसमें भी स्टेट और सेंटर का क्या रोल हो सकता है. सभी को एक स्टेज पे आके अपने रोल में क्लैरिटी लेके हर एक को अपना रोल डेफिनेटली प्ले करना पड़ेगा. उसमें कोई किसी को डोमिनेट करना चाहेगा तो इसमें अच्छा नहीं हो पाएगा. एक हमारे जो मेंबर हैं उन्होंने अच्छा सजेशन दिया था सर कि एक नेशनल कैलेंडर पहले स्पोर्ट्स का, हर एक स्पोर्ट्स का एक नेशनल कैलेंडर फ्रेम हो जाना चाहिए. वो नेशनल कैलेंडर के आधार पे स्टेट अपने इवेंट्स का कैलेंडर बनाए, जिससे कोई उसमें एक सिनर्जी रहे, कोई क्रिस क्रॉस ना हो और बच्चे अच्छे से सभी लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाएँ. सर हमने एक रोल हमने ये भी किया है सर. हमने एक मॉडल गुजरात में अभी डेवलप किया है. We have entered into MOUs with 14 associations, different associations, and we have taken some responsibility on ourselves, and their responsibility has also been identified. They have consented that they will get certain number of state and national level competitions to the state, and we will make financial support in whatever way we can. सो ऐसा एक मॉडल भी डेवलप करके हम कंपटीशन की संख्या बढ़ा सकते हैं और इससे हमारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है. सर एक और अच्छा सुझाव था मैडम की ओर से, एमपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी मैडम की ओर से, कि ये जो भी कंपटीशन होता है उसका सबका एक जीएमएस में एंट्री होना चाहिए और उसके आधार पे पूरा ट्रांसपेरेंसी से जो जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका एक मैट्रिक्स बनाया जा सकता है. सर और सिलेक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने अम्बुड्समैन का एक प्रोविज़न रखने का सुझाव दिया था. सर तो मोटा मोटा हमने ऐसा अगर कुछ मतलब सुबह जो सर, क्योंकि कल हम जो ऐसा डिस्कस कर रहे थे वो ऐसा हुआ था कि जो सिलेक्शन होता है उसमें
एक न्यूट्रल एंटिटी होना चाहिए जो इंश्योर करेगा कि पूरा ट्रांसपेरेंसी से सिलेक्शन हो रहा है और उसमें भाई भतीजावाद नहीं चल रहा है। तो उसके लिए ये एक सजेशन आया था सर। क्या वो हमारा डोमेन है वहाँ पे जाना? ऐसा सर ने सर सुबह बताया था ये नहीं कर सकते। And the federations also encourage that because good federations also want a kind of टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए, कैंप्स के लिए, बाकी एकेडमीज के लिए तो यू कैन सेंड टू सेलेक्ट अ टीम, वेदर दैट इज योर प्रेरोगेटिव, नो, दैट इज द स्टेट एसोसिएशंस एंड द फेडरेशंस प्रेरोगेटिव. We should not jump into their domain area and we should try and stay with. That is my request to all of you. I mean that we should maintain. And secondly, as far as the selection is concerned, ये कभी भी ऐसे नहीं होता कि मान लो एक ने 900 रन बनाए, दूसरे ने 700 रन बनाए तो 900 वाला ही सिलेक्ट हो. डिपेंड्स किस गेम में किसके खिलाफ किस स्थिति में किसने क्या बनाया है, कैसा बॉलिंग अटैक, तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है. ऐसे हॉकी में पड़ता होगा. तो लेट अस नॉट गेट देयर. बट one thing which came, not only one trial which Mr. Ravindran said, कि जिसमें केवल बच्चों को साल में एक ही ट्रायल मिले, एक ही मैच मिले, तो उसका पूरा साल उसके ऊपर निर्भर ना हो. He should have more opportunities, you know, any athlete. वो उसका सुझाव था. आपका हो गया. Thank you. Thank you very much. Group 3 is Sports Infrastructure and Coaches Development. Odisha, Tamil Nadu, Rajasthan, Nagaland, Manipur, West Bengal, Meghalaya. Presentation will be done by Shri R. Vinil Krishna, Commissioner cum Secretary Sports, Government of Odisha. Sir, we have many points, sir, but I will highlight only a few points. We need to have a differentiated approach, sir, in terms of what we are building at the state level and what is actually required at the district and block level. While we do it at the state level is more in terms of how do we create that excellence in terms of the top class facilities so that they can go further to national and international levels, and that is all quite standardized, sir. We have very good manuals and very standardized. But if our objective is to develop a sports culture at the district and the block level, since it's a very costly aspect of the standards and specifications that is there, probably we need to customize it and make it more low cost so that we are able to actually create those infrastructure. Otherwise, everything is becoming very high cost in sports. So our request will be to the ministry if we can develop certain engineering models where it can be easily understood by our local level engineers also, and then they'll be able to construct it easily within a short period of time. And probably we should concentrate more on our indigenous sport, at least at the panchayat and block levels. Like kabaddi, kho-kho, they don't really require great infrastructure, but some minimum infrastructure can take care. Even in something like athletics, if you look at the throw events or the jump events, they don't really require very big infrastructure. So like that, many games are there. So probably we can focus more on those kind of infrastructure development. And certain standards can also be fixed. For example, in terms of urban areas, if the kids have to go and play somewhere. So probably we can say that within a 1 kilometer radius, it is desirable that they should be having some kind of a basic ground or basic infrastructure, so that goes into the urban planning as well. And maybe in a 5 kilometer radius, some medium standard sport infrastructure facilities are also there. And there are grounds across the urban areas in terms of the schools and colleges. While during the school period or the college period, the school and colleges will utilize, but we should move towards co-sharing so that during the morning and evening, there can be a large number of coaching programs in these grounds, and they are fully optimally utilized. Fund is definitely a problem in terms of creating the infrastructure at such a large numbers, and therefore we need to develop different models in terms of convergence of funds from various sources, and also maybe some private partnerships and some kind of other corporates and PSUs also pitching in, and local level different sources of schemes. Also some suggestions have come that we need to probably, after expanding it to the 1,000 Khelo India centers, probably in phases we can expand. And Haryana has given a very good model of the nurseries. Probably that is something that that can also be standardized, and we can take it forward.
With respect to the coaching development, it's a major gap across the country. We are not able to find, it's not only about finding very good quality coaches at a top level, but it is also about getting the basic coaches at the grassroots level. So therefore, the coaches is the catchment we will have to see. The catchment is definitely the PET teachers who are there in large numbers. Probably we need to have certain incentive schemes whereby whether it's an increment or a promotion or some other way of a reward, so that they are motivated to take up the coaches certification programs. And these coaches certification programs also we need to standardize. Many of these sports federations have done it, but many other, it's still not in a desirable level. So probably the quality of coaching training also needs to improve a lot. And another suggestion is that the validity of this certification probably should not be for a longer period. It could be 3 year, 5 year, that can be determined, but that can also be standardized. Because one problem we are facing is that somebody has done an NIC diploma 20 years back and is still following the same methods in terms of coaching, whereas many new things have come up in the field. So refresher courses and validity of this certification, if we say only for a particular period, they will be forced to go for a refresher course and update themselves on the new methods. Also, coaching is also being kind of left to the whims and fancies of the coaches. So the curriculum has to be there, and wherever we are having the coaching programs, they have to follow, like how in a school or a college, they have a proper sessions and curriculum. That also can be standardized, and it is there in some fields, but probably it needs to be done more rigorously and enforced. And using the technology, we can have very good quality of coaching videos, different techniques, skills and rules and games related, and those can be freely be available. A lot of work has gone into making the videos, but probably it can be translated into many other Indian languages, so that at panchayat and block level also, kids, many times the local PET teacher, if he is very enthusiastic, he learns it on the YouTube and try to do it for the kids. So probably that standardization also can be given, and of course the national level medalist and other players are through the Khelo India centers are being utilized currently for coaching. And the foreign coaches exposure, because our coaches also learn a lot from foreign coaches, which we have seen during our programs in Kalinga Stadium. So probably at the state level also there can be some kind of a support given, so that we also engage, or some standardization in terms of rates and other aspects, how do we engage them, so that we bring in some of the good foreign coaches, so they bring in the coaching methodologies and skills that they implement in places like Australia or Europe or America, so that that can also help in our own coaches getting used to it. Secondly, the scientific aspect of the coaching in terms of the holistic coaching, not only just about what they do on the play field, but also what is required in terms of the nutrition and sports science, video analytics, injury management. All these, they are being taught, but probably the coaches' education needs to incorporate these in a more vigorous manner, and all the national sports federations and the central and state government will have to fund a large-scale coaches' education program. So that we are able to create that large pool of coaches across the age groups and different levels, so that our programs can run in a very professional manner. So, thank you, sir. Thank you. The last group for today is Group 4, Partnerships for Development of Sports, Himachal. इसके बाद ओपन हाउस है, वहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर सब इकट्ठे पूछेंगे. Himachal Pradesh, Ladakh, Telangana, Bihar, Jammu Kashmir, Delhi, Kerala. Presentation will be done by Shri Ravinder Kumar, Secretary Sports, UT Ladakh. Good afternoon, sir. Sir, we have discussed the topic within our group, sir. We discussed about the present setup that we are following at present in the different states, sir. At present, sir, we have 5 main points that we are doing, sir. We have less focus on the key stakeholders, and mainly the activities of department or the sports are being driven by only the department driven mainly, or few associations which are active and which are doing some good work, sir. Second, sir, the involvement of grassroots level stakeholder is very less. So it's a top down approach, and
mainly the stakeholders which are main from the ground, they are having no as such active role in the present setup, sir. Third, sir, CSR role is vital, sir, and we need to learn from Odisha and other states also which are doing some good CSR work. Though we have started some work, sir, but still most of the states are not focusing on CSR-led work, and mainly the department is driving the few events, and there is no as such focus on CSR support, especially for the soft skill development. Fourth, sir, the role of private school or private institution is very less, sir, at present setup, sir. Government is mainly focusing on the government schools or government institutions. So the private schools, private institutions are not the key stakeholders, and as per the new education policy, the sports is the important component in all the schools and higher education. So their role to be increased from the present setup, sir. Last, sir, the lack of information sharing between the different states and different associations, sir. Every state is having a different challenges and problems, sir, and if we engage a different expert, they are charging high fees. So there should be open platforms where we can share the best practices to help our sports development, sir. Sir, we identified mainly, sir, these 8 stakeholders, sir. Few we are already aware, and sir, private sector is a major stakeholder in the present development, sir. Academia, mainly the private schools and colleges and universities are also main stakeholders, sir. Then international organizations and communities as such, we can call the different NGOs, we can call the some active sports group, and we can call the different youth clubs. So these are our main stakeholders that we have discussed during our meeting, sir. Sir, one main thing, sir, that we saw during the discussion that, sir, for example, in Leh, sir, we have maximum participation from the private schools. In government schools have very less number of students, and the private schools are hesitant to start any kind of sports activities. So we can support them through the PPP project, or we can, even government can fund through the VGF funding so that the sports can be developed. That can be part of policy, sir. Second, sir, interstate collaboration, sir. For example, Ladakh and Kerala can have a interstate collaboration for development of athletics, for development of high altitude training center, and our players can train at the lower altitude and the higher temperature also. So these kind of interstate collaboration is very important, sir. Similarly, sir, sharing of infrastructure in the different parts of country. Every state is not capable of developing all the infrastructure in all the sports, sir. So at least we can nominate one state for that. This state can facilitate the other states. So that will be very useful, sir. Sir, corporate sponsorship was also discussed, sir. And few corporates are coming forward, like JSW, NTPC, Tata Reliance. So these are already helping our players also. And sport-specific targeting can be done with the partners and in the different parts of country, sir. Sir, intercontinental MOUs with the countries also can be done. We are already talking with the Canada and Germany for development of our coaches and also import of some equipment, sir. So that was also discussed, sir. And role of, sir, academia institution in research, awareness and analysis and survey, sir. That can be part of their internship program, or that can be part of their full-time program with the universities. So we have very less research program with the universities, so that can be done, sir. Sir, collaborating with the IIHF, FIFA and other international organizations with the support of national associations, that is being done in Ladakh and other parts of the country also. So that can be a part of our development plan, sir. Sir, though we are already doing some work in different states, and there are issues with this partnership model also. So I will just highlight 4 or 5 issues, sir. One important issue, sir, is the who will do what kind of role, sir. So there is no role clarity in these kind of things, sir. And also, sir,
The funding and resource constraint is a major challenge. So some states are doing work on infrastructure, some are doing on coaching. So there should be a funding and resource guideline also, so that can be uniform for all the states, sir. Then legal and regulatory challenges, sir. Sometime there is a lapse of terms and condition, and legal issues comes between the two parties, sir. So that can be a part of discussion, sir. Then, sir, long-term engagement and sustainability, sir. If one agency starts with work and it goes down after some time, then it's a loss for both the agencies. So that can be also a thing, sir. And monitoring and evaluation for these things, sir. So these were the few issues that we discussed during the meeting, sir. And this is from my side, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I will invite. Let me first thank all the 4 groups. They have come out with good suggestions and details. But the way forward will be to have again a smaller group who could look at the findings of these 4 groups or the suggestions, and then can prepare a template for the a standard operating procedure for various things. For example, low cost infra, coaches or coaching app, digital or maybe physical coaching, train the trainer program, coaching the coach program, such kind of things. What are the suggestions which have come and how they could be implemented by various states? If there is a centralized plan, I think that could help us to implement it. It will put the model in place. And if you all agree, we can put few officers, because officers will be more relevant and available for this job. Certain states which can play an important role, one could be Odisha, second could be Madhya Pradesh, Punjab, Kerala and Haryana. 4-5 officers can come together and they just need to go through these presentations. And once they prepare something, they can give it back to you so that all of you can have a look at it and come out with your suggestions before we adopt the final template. Is that fine with everyone? Yes, sir. Is that okay? So एक सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आ जाएगा, एक ऑफिसर, बाकी ये 5-6 जो राज्यों का नाम लिया वही है जो आपने ही सुझाव दिए हैं, उन पे ही ध्यान देना है. जब आपको एक तैयार करके दे देंगे, कोचेस के लिए क्या करना है, फील्ड्स के लिए क्या करना है, स्कूल्स को क्या करना है, राज्य की सरकार को क्या करना है, वो सब लिखित में आ जाएगा. उसके बाद आप अपने अगले सुझाव दे सकते हैं. Now we have the open house discussion for this session. Honorable Minister wanted to say something. गुड आफ्टरनून. मेरे को बोलने का था, जो हम लोग इतना टाइम से चर्चा सुन रहे हैं, जो सेंट्रल से भी स्टेट से भी उन लोग इतना ट्राई कर रहे हैं, सब लोग ट्राइंग हार्ड टू अचीव द गोल. लेकिन मेरे जो ख्याल है, ये सेंटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पड़ेगा कोचेस ट्रेनिंग के लिए. विदाउट कोचेस ट्रेनिंग, जो बच्चा जा रहा है कोचिंग कैंप में, एकेडमी में, पहले से ही टेक्निकली उनको भूल सिखाया गया तो वो कभी सुधरेगा नहीं. तो मिनिस्टर अनुराग जी से मेरा रिक्वेस्ट है, आप कोई फॉरेन कोच लाइए, हर स्टेट से 10-15 आदमी को लेके 15 दिन 1 महीना का कोचिंग सेंटर होने से वो जाके फिर दूसरा स्टेट में एक सीनियर कोच जाएगा, वो जाके ट्रेनिंग लेके फिर जूनियर लोगों को देगा तो होगा. नहीं तो कोचिंग के बिना हम लोग जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, जितना भी कुछ कर ले, विदाउट कोचेस कुछ नहीं होगा. ये हमारा ख्याल है, इसलिए बोलने के लिए उसी टाइम मांगा था. और एक दूसरी चीज़ है जी, ओपन सेशन है, मैं बोलना चाहूँगा. देखिए इतना तो सेंटर से भी हो रहा है, आप लोग इतना कुछ चर्चा हो रहा है, 3-3 दफ़ा चिंतन शिविर भी हो रहा है. लेकिन एक चीज़ हम लोगों को सोचने पड़ेगा, जो पॉलिटिकल एफिलिएशन इन द स्पोर्ट्स, इसको सबसे पहले नहीं हटाने से कभी स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट होगा नहीं. पॉलिटिक्स फॉर द स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उन लोगों के लिए छोड़ना चाहिए. पॉलिटिशियन लोग स्पोर्ट्स में चला जाएगा तो ये कभी नहीं होगा. एक एसोसिएशन में आप लोग देख लीजिए, फेडरेशन में देखिए, सारे जगह पॉलिटिशियन लोग बैठा हुआ है. एक एसोसिएशन में आप देख लीजिए, कोई आदमी
10 साल, 15 साल, 20 साल से प्रेसिडेंट या तो सेक्रेटरी बन के बन रहा है। तो मेरे ख्याल है जे आज क्रिकेट में लोधा आ चुका है, 3 साल के बाद कूलिंग ऑफ होता है, तो क्यों इसमें नहीं होगा, हमारे सारा इसमें क्यों नहीं होगा? और क्यों ऐसा नहीं होगा जो हर स्पोर्ट्स एसोसिएशन में 50% प्लेयर को रहना चाहिए, मैंडेटरी होना चाहिए। इस चीज़ में मैं ध्यान देने के लिए बोलूँगा। टिंकू जी, उन्होंने जो बोला मैं भी वही थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। त्रिपुरा में इससे बहुत सारे रेसिशन, मैं जस्ट 1 महीने हुआ स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना हूँ, तो मेरे नज़र में जितना आया इससे बहुत सारे रेसिशन है जो 25-25 साल एक ही बंदा, जैसे कॉर्पोरेट हाउस चलता है ना, कंपनी का मालिक वो है, तो ऐसे ही एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है तो चलते आ रहा है, वही 25-30 साल से एक ही एसोसिएशन चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे है। तो ये मेरे ख्याल में सेंटर में जो एसोसिएशन है इनको एफिलिएशन देना बंद करे, जो कम से कम 5 साल 6 साल या एक क्राइटेरिया फिक्स हो, जो एक बंदा प्रेसिडेंट 6 साल रह सकता है या 2 टर्म 3 टर्म, ये जिंदगी में, और मतलब वही है, और अभी उसका बेटा, तो बेटा भी उस एसोसिएशन चलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन है, वो भी एक थोड़ा सा ध्यान देना है। एनी मिनिस्टर? आई हैव अ सबमिशन। जी, नमस्कार सर, मैं 2-3 पॉइंट्स पे ही इलेबोरेट करना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश से मैं संबंध रखता हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग हिमाचल, और हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर्स के बारे में सभी लोगों ने यहाँ पे बात करी है। इसमें आई वांटेड टू ड्वेल ऑन वन थिंग कि दो वी ऑलरेडी हैव स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वे बैक एक हमारे इलाके शिलारू में एक हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर बनाया था, बट दैट हैज़ नॉट बीन एबल टू डेवलप एज इट शुड हैव बीन। उसमें जो है आपके जो पटियाला में आपका इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी बच्चे ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे आते थे। इसमें मेरा सर एक निवेदन है आपसे कि इसमें जो है आप स्टेट्स की ग्रुपिंग करके, पर्टिकुलरली इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल की एक ग्रुपिंग करके, क्योंकि वी हैव सिमिलर स्पोर्ट्स और सिमिलर टेरेन है उन एरियाज़ का, अगर उसको हम डेवलप करें और इस एरियाज़ में विंटर स्पोर्ट्स को भी डेवलप करना एक बहुत बड़ा हमारे पास बोनस आने वाले समय में हो सकता है। अभी वी अंडरस्टैंड कि गुलमर्ग में एक आपका खेलो इंडिया के तहत विंटर स्पोर्ट्स हुआ था, बट इट हैज़ टू बी एनुअल एक फीचर होना चाहिए, कैलेंडर होना चाहिए। उसके लिए भी हमको आने वाले समय में वर्क करने की आवश्यकता है। विंटर ओलंपिक्स हो, स्कीइंग है, आइस स्केटिंग है, इसको हमें पर्टिकुलरली इन जो हमारे ये 3 स्टेट्स के बारे में मैंने बात कहा, यहाँ पे हमें ड्वेल करने की आवश्यकता है। और कोचेज़ के बारे में भी सभी माननीय सदस्यों ने यहाँ पे उस पर हार्प किया है, उसको मैं भी जो है उस पर हार्प करना चाहूँगा कि एक्सपर्ट कोचेज़ शुड बी हायर्ड ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस एंड शॉर्ट टर्म बेसिस, और चाहे वो लॉन्ग टर्म में 1 से 2 साल के लिए हो और शॉर्ट टर्म में 2 से 3 महीने के लिए हो। उड़ीसा, we have to compliment them that they are doing a phenomenal job, and especially जो CRS initiatives उन्होंने वहाँ पे लिए हैं। We will also try, अनुराग जी का अपना होम स्टेट भी है, and we will definitely try कि वहाँ पे जितने भी हमारे लीडिंग, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स है, फार्मा सेक्टर्स है, उनके साथ हम टाई अप करके इन द टाइम्स टू कम हम उनके इनिशिएटिव से एक स्पोर्ट को, एक इंडस्ट्री को जो है उनके हवाले कर देंगे। एंड इन द टाइम्स टू कम वी विल ट्राई टू स्टार्ट विद द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड देन गो विद द स्टेट लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट। तो और अंत में मेरा एक ये निवेदन भी है। निवेदन तो क्या है, ये चीज़ ऑलरेडी चल रही है वैसे, मगर जो आपके चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है, आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसके साथ हर स्टेट में अलग अलग तरीके से कोलैबोरेशंस तो हो रहा है, विच आई थिंक इज़ बीन डन इन आवर स्टेट ऑल्सो टू सम एक्सटेंट, पर उसका भी एक नेशनल फ्रेमवर्क अगर आपके डिपार्टमेंट द्वारा एक फ्रेमवर्क हो कि किस तरीके से हमें इंटर डिपार्टमेंटल एक मॉड्यूल हम बना सकते हैं, ताकि उनका सहयोग भी हमें समय समय पर whatever we want to whatever practices we want to have from our department, उसमें उनका भी हमें सहयोग मिलता रहे। तो इस चीज़ को भी हमें इस पे भी हम जो है अपना एम्फेसिस आने वाले समय में ले कर सकते हैं। तो ये मैं कुछ चीज़ें कहना चाहता था। थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी सर, थैंक यू।
Stage वाले. Any minister wants to add anything? जी गोविंद जी. नमस्ते, गुड आफ्टरनून. माननीय प्रधानमंत्री जी, 2-3 कार्यक्रम सारे देश में फैला था ताकि ये जन आंदोलन बन सके. एक है फिट इंडिया मूवमेंट. हम लोग यहाँ पे तो चर्चा कर रहा हूँ कैसे हम लोग मेडल जीत सकता हूँ, इसीलिए सारे देश इसमें लगा हुआ है, सारे राज्यों ने लगा हुआ है. लेकिन मेरा एक चिंतन है ऐसा ताकि हर गांव में एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट अगर बनाने के लिए हम लोग सभी कोशिश करेंगे ताकि वहीं से हमारे टैलेंट हंट भी हो जाएंगे और पैरेलली हमारा जो स्टूडेंट्स का जो पकड़ लीजिए स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन उनका जो स्वास्थ्य है, उनका जो हेल्थ है, ये स्पोर्ट्स एक एक्सरसाइज में, प्रैक्टिस में, ताकि वो कामयाब हो सके हर काम में के लिए. इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हर गांव में एक स्पोर्ट्स का माहौल बनाना ज़रूरत है. हमारा गवर्नमेंट ने इस बार तय किया है कि एवरी गांव में हम लोग 5 इवेंट में हम लोग कंपटीशन करेंगे. उसका बाद में ब्लॉक लेवल में होंगे, उसका बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल में होंगे, उसका बाद में स्टेट लेवल में हम लोग का ये प्रोग्राम होगा. इसीलिए हमारा 30 करोड़ इस बार बजट में हम लोग पकड़ भी रहा हूँ ताकि उसी में टैलेंट हंट भी हो जाए, साथों साथ हर गांव में एक स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट भी बन जाए ताकि ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है एक जन आंदोलन रूप में स्पोर्ट्स को ले जाना है, ऐसा एक हमारा सुझाव है ताकि सारे देश में एक बढ़िया से स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट बने. Good afternoon. Ladakh representative have rightly placed some few points which are very important. Like in Manipur, हमारा यहाँ पे अंडर 19 का हम लोग अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अबव 90 इसमें यहाँ पे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स और ये फॉरेन कोचेस हम लोग नहीं ले पाते क्योंकि वी हैव गॉट ए वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट ऑल्सो. इसलिए मैं भी ऐसा चाहूँगा कि इंटर स्टेट कोलैबोरेशन और शेयरिंग ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ द हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाइक उड़ीसा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहे हैं और ये कोचेस बाहर से ला रहे हैं, बहुत कोचेस ला रहे हैं मध्य प्रदेश में और विभिन्न राज्य में जो रिसोर्सफुल राज्य में आ रहे हैं. तो इसमें यदि हमारा स्टेट का कुछ ये खिलाड़ी लोग को वहाँ पे भी मौका मिल जाए ताकि हमारा देश का ये देश के लिए, तो वही बोलना चाह रहे थे. जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पे AIFF और हमारा स्टेट सरकार के साथ एक जुक्ति हुआ है, उसमें वी आर गोइंग टू पुट अप वन फुटबॉल एकेडमी. So here also we will request all the states to send their players. This will be a high performance center because Honorable Chief Minister himself is a good football player. So मैं विनती करना चाह रहा हूँ कि ये इंटर स्टेट कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस सेंटर प्लेटफॉर्म with different states is need of the hour. That is what I just like to place. PT Usha ji. Sir, one request is from my side for the players. When I was doing sports, whenever we go for the competition, we used to get the accommodation and train, travel, everything free. Maybe association will take or maybe state government will take at that time. And now already athletic players, especially for athletics and all, already association started registration fee. And apart from that, they have to do their own for the train ticket and their accommodation, everything. Maybe for the elite group, maybe they may arrange something, but not for the upcoming youth. So in that case, something has to be done for the players. This is from the players' side. Anyone else? राज्यों ने पहले तालियां मार दी, तैयारी करने के लिए तैयार हैं सब आपके सपोर्ट करने के लिए. सर मैं कल्याण बोल रहा था जी. जैसा कि सभी ने बता रहे थे कि फॉरेन कोच की आवश्यकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंप्लीट यूटिलाइजेशन के लिए, लेकिन फिर फॉरेन कोच लाने का एक पेरीमीटर भी हमें बनाना चाहिए क्योंकि हमारा फुटबॉल का जो अनुभव रहा है
कोई भी व्यक्ति जो फॉरेनर हो और स्पेशली जो इंग्लिश मैन हो, ब्रिटिश हो, आके बहुत अच्छे से इंग्लिश बोले, तो आकर के वो पहला ये बताते कि आप आज तक आपने जो किया है सब गलत किया है, आगे से मैं जो बताऊंगा या तो हम जो बताएंगे वही सही होगा। तो क्या होता कि मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि सभी ब्यूरोक्रेट हैं यहाँ पर और ऑनरेबल मिनिस्टर्स भी है, तो आप जिस स्पोर्ट के लिए फॉरेन कोच को रिक्रूट कर रहे हैं तो उनके नेशनल फेडरेशन के साथ ज़रूर बात करें, और उनका एक पेरीमीटर है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी। कहीं उनके लिए स्पोर्ट्स टूरिज्म तो नहीं है, एक साल आए, अच्छा कमाया, अच्छा रहा, भारत को देखा, फिर चला गया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहा। तो ये हमारा फुटबॉल में बहुत ख़राब अनुभव रहा। बाकी स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी मैं चाहूँगा यदि करे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। एक तो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के वीसी श्री आर.सी. मिश्रा जी कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं, वो ज़रूर दिखाएं। दूसरा मुझे लगता है डिपार्टमेंट जो हमारा DPIIT और बाइसेक के गति शक्ति पर हमें साथ में जुड़ने का अवसर एक मिला है, क्योंकि उन्होंने प्रेजेंटेशन दी कि कैसे वो बाकी क्षेत्रों में मदद कर रहे हैं, जियो टैगिंग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मैंने उस समय बीच में इंटरव्यू सिर्फ इसलिए किया था कि पिछले 18 महीनों से तो कम मैं ही ट्राई कर रहा हूँ, और मैं टेक ओवर करने के बाद मेरा पेट प्रोजेक्ट था एक कि डेटा इकट्ठा हो, देश में किसी खिलाड़ी को कहीं खेलने जाना तो उसका कोचेस और इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी उसके मोबाइल फ़ोन पे हो, और वो आप सबके सहयोग के बिना नहीं पूरा होगा। और मेरा कई बार गिला अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी उनसे भी रहती है, मेरा गिला आप लोगों से भी उतना ही है। क्योंकि हम नया तो बाइसेक वालों को हम कह रहे हैं बेचारे वो भी आके मदद कर रहे हैं हमारी, लेकिन अगर नीचे आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो हम लोग देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बच्चों के लिए ही है, उनके हित के लिए ही है। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, आपके फील्ड ऑफिसर्स ने वो डेटा बीच में फीड करना है। यू जस्ट नीड टू ब्रीफ देम व्हाट इज रिक्वायर्ड। इट इज़ नॉट योर जॉब, यू जस्ट नीड टू टेल देम व्हाट इज टू बी डन, एंड इट शुड बी डन इन द स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तब तो मज़ा आता है काम करने का, कितने दिन में हमने सब इकट्ठा करके डाल दिया। तो मुझे लगता है उसके ऊपर अगर जब आप वापस जाएं तो एक बार वीसी के थ्रू फिर वापस सबको बता दें क्या क्या फीड करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर एनएसयू की आपके पास वीडियो है शर्मा जी, मिश्रा जी, प्ले कर सकते हैं आप, प्ले कर दीजिए, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे मणिपुर में बन रही है। देश को स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने का संकल्प लेकर के चल रही है। भारत सरकार ने अभी तय किया है, मणिपुर की ताकत का परिचय करते हुए हमने निर्णय किया है कि मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी। एक प्रकार से विश्व में खेलकूद की दुनिया में भारत का नाम कमाने में मणिपुर का बहुत बड़ा योगदान है। In 2018, Prime Minister Narendra Modi ji laid the foundation stone of the National Sports University to revolutionize sports education and research in India. With a visionary outlook and unwavering determination, Shri Narendra Modi ji sees the NSU as a key initiative in unleashing India's true potential as a leading sports nation. The NSU is not just shaping the future of Indian sports, but also creating an inclusive community that nurtures a fiery passion for the game. It is a symbol of India's unwavering commitment to sports and a testament to the power of dreams and aspirations. The National Sports University is not simply a university. It is a beacon of hope for aspiring athletes and sports enthusiasts alike. It is a place where excellence thrives and passion is nurtured. Located in the heart of Manipur, a state known for its unwavering dedication to sports, NSU represents a melting pot of cultures, ideas, and aspirations, all united by the common goal of achieving greatness in the world of sports. NSU is where dreams come to life,
where champions are born and where the impossible becomes possible. It's a hub of excellence in sports education, research, and innovation. As India transforms into a sporting nation, NSU is committed to meeting the growing demand for skilled sports professionals. At NSU, we don't just train athletes to be successful on the field. We create champions who understand the science of sports, the technology that drives it, and the social and cultural factors that shape it. Our programs in sports science, technology, and management, as well as specialized training for athletes across various sports, are designed to produce world-class sports professionals who can compete at the highest level. From state-of-the-art facilities to world-class faculty, NSU is committed to providing its students with the best possible education and training. At NSU, innovation is at the heart of everything we do. The university's state-of-the-art research facilities and laboratories are dedicated to pushing the boundaries of sports science and technology. From developing new training techniques to improving equipment, NSU is at the forefront of sports innovation. Translating research done in our labs to the sporting and training fields, combined with internship opportunities and access to international experts, our students are excelling in every area of the sports industry. The National Sports University, Manipur, is a place where students come to realize their dreams, where passion and hard work are celebrated, and where excellence is the norm. But it's not all nose to the grindstone for our talented students. In addition to their rigorous studies and practice sessions, they also have the opportunity to let their creative flags fly through a variety of cultural and recreational activities. अहमदा इकाई खुमनजरबा भारत की प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी बु मणिपुर द नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लिंक पीबगीदमक इकाई खुनब फोंदोकचरी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेरपसिना इरमदमगी सानारोइसिंग कोचेस अमदी स्पोर्ट्स साइंटिस्ट सिंगदा यामना चावबा अचौबा अहोंबा अमदी कानबा कया पीदुना सानाबगी लमदा ममांग थादुना लाकदोरिबा ओलंपिक कयादा अथोइबा इरमदम ओरकलगनी अरोइबदा नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बु आइगी माइकेदगी याइफबा मंगोल पिजरी. Present, NSU is offering undergraduate courses in sports coaching and physical education and postgraduate courses in sports coaching, physical education and sports psychology. Competitive sport is an integral part of the academic program of the university. And in a short period of time, NSU is already making waves in the sporting world. Students from the university have gone on to participate in various national and international sporting events and have earned accolades. मैं हूँ मीराबाई चनू। ऑनरेबल पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने मणिपुर में इंडिया के लिए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन किया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मणिपुर में ऐसा यूनिवर्सिटी ओपन करना बहुत अच्छे है क्योंकि मणिपुर में खेलों के मामले में पावर हाउस माना जाता है। इस यूनिवर्सिटी में नई जनरेशन की कोचेस, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और आने वाली जनरेशन की प्लेयर्स ट्रेन करने वाली है। आई विशिंग नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑल द वेरी बेस्ट।
NSU is making every effort to realize the vision of PM Shri Narendra Modi ji to make India a sporting powerhouse, and in a short span it has already come a long way towards realizing that vision. Even as NSU prepares to shift its operations to a new campus with world-class facilities for its students, it has successfully created an enabling environment for knowledge transfer and training in differentiated fields related to sport. In the coming years, it will occupy center stage in sports education and innovation, as it nurtures sporting talent not just at home but from across the world. Come, join us, be a part of the future of sports education and achieve excellence in sports through education, research and training. Thank you everyone for such a tremendous response and the insightful exchange of ideas. Now I request Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji, for the concluding remarks. मैं सबसे पहले तो सभी माननीय खेल मंत्रियों का, अधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 2 दिन का समय इस महत्वपूर्ण चिंतन शिविर के लिए निकाला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका ये कीमती समय भारत में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हर राज्य का सहयोग और राज्यों की भूमिका को और मजबूत करेगा। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, खेल संघ और कॉरपोरेट्स को भी इसमें जोड़ने का जो आपके सुझाव हैं वो बहुमूल्य हैं, और मुझे पूर्ण आशा है बहुत सारे राज्यों ने उसको करके दिखाया है, अन्य राज्य उस दिशा में कदम उठा सकते हैं। बहुत सारे मॉडल से हमें कुछ सीखने का अवसर भी मिला। वैसे तो ऐसी मीटिंग्स का, चिंतन शिविर का क्या लाभ है? पहला लाभ ये है कि दूसरा जो अच्छा कर रहा है, हम कोई गलती किए बिना उसके मॉडल से सीख सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरा ये हमें दिखाता है कि हम बाकियों के मुकाबले कहाँ खड़े हैं। तीसरा मुझे लगता है ये भी दिखता है कि किसका कितना अध्ययन है, किसके टिप्स पे अपना सब्जेक्ट है, कौन अपने विभाग को कितनी अच्छी तरह जानता है, क्योंकि जो उसमें जितना गहराई से काम कर रहा होगा वो उतनी जल्दी अडॉप्ट भी कर पाएगा, ग्रास्प कर पाएगा, अपने बात को भी बड़ी सरलता के साथ सबके सामने रख पाएगा। अगर 4 विभाग हैं और खेल को प्राथमिकता नहीं है, युवा कार्यक्रम को प्राथमिकता नहीं है, तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। आपकी टीम की प्रेजेंटेशन, आपकी अपनी बातचीत में सब सामने नजर आएगा। और जब मैं युवा कार्यक्रम और खेल की बात करता हूं तो 140 करोड़ के इस देश में सबसे बड़े वर्ग के साथ अगर कोई डिपार्टमेंट काम कर रहा है तो आप लोग काम कर रहे हैं, उनके भविष्य को निखारने के लिए, बनाने के लिए। देश की सॉफ्ट पावर की बात करता हूं तो उसमें भी आप स्पोर्ट्स में काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कई बार किसी कोई विभाग दिया जाए तो लोग ये सोचते हैं पता नहीं हल्का डिपार्टमेंट मिल गया, लेकिन मुझे लगता है डिपार्टमेंट में बहुत दम है। अगर हम लोग इसमें कुछ कर दिखाएं तो शायद आपके किसी काम के लिए 140 करोड़ देशवासी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन एक मेडल जब कोई जीतकर दूसरी धरती पर लाता है तो पूरा देश इकट्ठा मिलकर जश्न मनाना शुरू करता है। ये ताकत है इसकी, ये कोई और डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। आप जितना मर्जी बड़ा ब्रिज बना लीजिए, रेलवे चला लीजिए, एयरपोर्ट बना लीजिए, स्थानीय लोग खुश हो सकते हैं, लेकिन आपके किसी ग्रामीण क्षेत्र का, गरीब परिवार का व्यक्ति या किसी परिवार का कोई व्यक्ति, जैसे उदाहरण आपने देकर बताया कि कहां से गरीब बस्तियों से आकर भी आपके कार्यक्रमों के माध्यम से वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करता है,
तो आपका तो जीवन उसी में सफल हो जाना चाहिए। और अगर 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज इसको गंभीरता से लेकर शुरू करेंगे, मैं जानबूझ के गंभीरता इसलिए कह रहा हूं कि अभी गंभीरता की और आवश्यकता है। कई बार संसाधनों से ज्यादा गंभीरता चाहिए, हमारे एफर्ट्स और चाहिए। मैं देख रहा हूं ज्यादातर बात ये आती है कि क्या फंड्स किसके कितने, कौन कितना बजट इकट्ठा कर रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं, विक्रम जी यहां बैठे हिमाचल से ही हैं। मैं सन 2000 में हिमाचल क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बना। मेरी 25 साल की उम्र थी। मैं खेलता पंजाब से था, पंजाब की टीम का कैप्टन था, नॉर्थ जोन की टीम का कैप्टन था क्रिकेट का, लेकिन हिमाचल के क्रिकेट संघ का मैं अध्यक्ष बना। कोई खेल मैदान नहीं था, कभी कोई मैच नहीं जीते थे। एसोसिएशन के पास केवल 7 कुर्सियों, एक टाइपराइटर और 2 रजिस्टर थे, एक अलमारी थी और बैंक खाते में 9-10 लाख रुपया होगा। तो उस समय अखबार वालों ने बड़े बड़ा लिखा कि 50 साल में कुछ नहीं हो, 25 साल का व्यक्ति क्या करेगा। लेकिन मैंने उसको चुनौती के रूप में लिया और हमने उन्हीं 5 वर्षों में हिमाचल में कम से कम 4 से 5 बड़े मैदान, जिनमें से एक धर्मशाला का क्रिकेट स्टेडियम जो 300 फीट के पहाड़ को काट के हमने दुनिया का सबसे खूबसूरत मैदान वहाँ पे बनाने का काम किया, बगैर गवर्नमेंट का 1 रुपया लिए हुए। उसमें गवर्नमेंट का 1 रुपये का सहयोग नहीं है, गवर्नमेंट ने केवल जमीन दी है। फिर इसी तरह से हमने एकेडमी चलानी शुरू की, महिलाओं की एकेडमी चलाई क्रिकेटर्स की। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, एसोसिएशन के अंदर कहा कि ये पागल है, पहले स्टेडियम बनाने के लिए चलता था, महिलाओं की एकेडमी के लिए। आज जब वुमेन प्रीमियम लीग शुरू हुई तो हिमाचल की 4 लड़कियां उसमें चुनी गई। किसी को 2 करोड़ मिलता है, किसी को 1 करोड़ मिलता है, जो बाकी आपने अपने अनुभव बताए। तो मेरे लिए उससे बड़ी प्रसन्नता कोई नहीं, चाहे करोड़ों रुपए लगा होगा पिछले 8-10 साल में, लेकिन वो पूरा हो गया। अब वो मॉडल ये है कि मैं कभी किसी सरकार के पास मांगने नहीं गया। देखने के लिए क्रिकेट में बाहर से पैसा लगता, उस समय उतना नहीं था, लेकिन मैं मांगने में किसी से शर्म नहीं करता था। किसी को 10,000 रुपये भी देना हम वो भी ले लेते थे, 5,000 देना वो भी लेते थे, टूर्नामेंट कराने के नाम पे स्पॉन्सरशिप लेते थे। आपके यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि आप किसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं तो आप उसके लिए आगे आ जाइए। आप किसी गेम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, कोई, हर किसी की अपनी क्षमता है। हो सकता है कोई अनाज ही देना चाहता हो, किसी के पास 10 गाय है तो दूध ही देना चाहता हो, कोई और देना चाहता हो। ये तो लोकल मॉडल्स आपको डेवलप करने पड़ेंगे। बहुत सस्टेनेबल मॉडल लोकल लेवल पर हो सकते हैं, लेकिन मैं उससे ज़्यादा आपने ही जो यहाँ पे सुझाव दिए, मैं चाहता हूँ आप उसको कृपया करके बड़ी गंभीरता के साथ अगले 7 से 10 दिन के अंदर अगर आप नहीं करेंगे तो फिर जैसे बॉटल खुलती है ना, उसकी गैस चले जाती है, तो वैसे हमारी भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस खत्म होगी। 15 दिन के बाद आप भी अपनी दुनिया में, मैं भी अपनी दुनिया में लग जाऊंगा। तो ये अगले 10 दिन के अंदर हम कैसे करें। आपने बात कही हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की। कुछ राज्यों ने बहुत अच्छा किया, कई राज्यों में है ही नहीं। तो आपने जो अपने 2-3 खेल चुने, क्या आप उसके लिए अपना हाई परफॉर्मेंस सेंटर, क्या राज्य एक नहीं बना सकता? बना सकता है। उसको प्राथमिकता देकर शुरू करना चाहिए। फिर आपको कुछ एकेडमी शुरू करनी चाहिए, रेजिडेंशियल करनी है या डे बोर्डिंग करनी है, आप लोग तय कीजिए। फिर नर्सरीज की जो बात की गई कि जमीनी स्तर पर बेसिक फैसिलिटीज, आप कबड्डी का एक मैट दे देंगे और वहाँ पे कोई एक वॉलंटियर करके कोच आता है या कम खर्चे में आता है, या आप अपनी कोई स्कीम, जैसे हमने खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर लेकर आए, आप कोई अपनी लेकर आइए, तो आपके 50-100 सेंटर आराम से शुरू हो सकते हैं। आप उसको जरूर कीजिए। दूसरा, टूर्नामेंट्स। हम में से किसी का बच्चा खेल रहा हो, कहीं पे खेलने जाता है, ACTC से मैडम पैसा देती हैं, सुजाता जी, लेकिन हमारा कोई अधिकारी आज तक नहीं देखने गया होगा कि वहाँ पे क्या होता है। मेरे पास ढेरों कंप्लेंट्स आती है क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। कहीं पे टूर्नामेंट होता है, मान लीजिए चेस के आए 2000 खिलाड़ी, टॉयलेट्स 4 हैं, ब्रेक में उनको टॉयलेट भी जाना और वापस खेलने भी आना, लाइन लंबी लगी हुई है, उसको साफ करने तक का समय नहीं है। बच्चियां, किसी की बेटियां खेलने जाती हैं, वहाँ पे उस तरह की सुविधाएं नहीं हैं।
क्या हम एक क्राइटेरिया बना सकते हैं ACTC में कि जहाँ पे भी वेन्यू चुना जाएगा वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ तो बेयर मिनिमम भी होनी चाहिए, हाइजीन क्वालिटीज़ क्या हो, राज्य भी ये सुनिश्चित करें आपके यहाँ पे कोई भी खेल संघ कोई भी टूर्नामेंट कराए उसका एक सेट परफॉर्मा होना चाहिए कि आपको ये इसके मापदंड ये पूरे करने ही हैं, खिलाड़ियों के लिए हमें कम से कम वो करना चाहिए। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी की आपने बात कही, इससे पहले मैं टूर्नामेंट्स पे आ जाऊँ, आपने कहा कि शेड्यूल, दुनिया भर के देशों में 4-4 साल के कैलेंडर पहले तय होते हैं, ओलंपिक्स कब होगा, किस शहर में होगा, कौन सी तारीख को होगा, कौन सी गेम कब होगी, 4 साल पहले तय है। एशियन गेम्स कब होगी ये भी पहले तय है, वर्ल्ड चैंपियनशिप कब होगी ये भी 2-2 साल पहले तय है। लेकिन हमारे खेल संघ इस पे काम क्यों नहीं करते? We should not release even a single penny to the state associations and the national federations if they did not give you the chart in the next 21 days. आप 1 महीने का समय भी दे दीजिए, मैं कहता हूँ आप मई एंड तक का समय दे दीजिए, लेकिन उसके साथ लिंक करना पड़ेगा कि उनको अपना राज्य के साथ साथ किस जिले के किस वेन्यू में मैच होगा, दे शुड डू इट। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप ऑनलाइन अपनी मीटिंग्स करते हैं जी, दे शुड फिल द डिटेल्स एंड सेंड इट टू यू। और अगर उनको कोई वेन्यू चेंज करना है, दे शुड बी पेनल्टी फॉर दैट, क्योंकि माँ बाप अपनी टिकट बुक कराते हैं, लास्ट मिनट पे किसी को एयर टिकट बुक करानी है, ट्रेन बुक करानी, मिलती नहीं है जी। गरीब परिवार के बच्चे खेलने तक के लिए नहीं जा पाते हैं। PT उषा जी ने कहा कोई पहले भेजता था, वो भी नहीं भेजते हैं, तो वो भी एक दिक्कत है। पहले होगा तो लोग प्लानिंग बेहतर कर पाएंगे। दूसरा, टेक्नोलॉजी की बात आई, आपने इसमें सुझाव भी दिया, पोर्टल्स बनने चाहिए, हमने सेंट्रलाइज पोर्टल भी बनाया है, रजिस्ट्रेशन का भी हो, उनकी परफॉर्मेंस भी दिखे, उनका फिटनेस लेवल भी वहाँ पर दिखे, वो अप्लाई कर सकें अपने अवार्ड्स के लिए, पेंशन्स के लिए, अपने सर्टिफिकेट्स के लिए, वो वहाँ पर हो। आजकल क्या लगता है, मोबाइल फ़ोन से आपका रिकॉर्डिंग होकर लाइव स्ट्रीमिंग हो जाती है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो करती हैं। मैं चाहता हूँ भारत सरकार भी इस और देखे, फेडरेशंस के साथ मीटिंग करे, जितना ज़्यादा आप स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हो, जब तक उनके मैच ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पर लोग नहीं देखेंगे, वो स्टार्स कैसे बनेंगे? टीवी दिखाएगा तो करोड़ों रुपए लेगा, इस पे आप हज़ारों नहीं लाखों रुपए में दिखा सकते हैं। हज़ारों रुपए में तो नहीं दिखा, लाखों रुपए में दिख जाएगा। क्वालिटी प्रोडक्शन हो सकती है, 4 कैमरा लग के ही इसमें हो जाएगा। क्या हम सेंट्रलाइज कुछ ऐसी सुविधा तैयार कर सकते हैं? उस दिशा में हमें देखना चाहिए। एक रिकॉर्ड कीपिंग होगी, टैलेंट स्काउटिंग में आपको लाभ मिलेगा, सेंट्रलाइज्ड आप उसको कर सकते हो। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी, चाहे स्पोर्ट्स इंफ्रा की बात करें हम, या डेटा खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का करें, उनकी फिटनेस का करें। और डेटा माइनिंग करने की हमें आदत पड़नी चाहिए, और ये भी सेंट्रलाइज्ड हमें कम से कम केंद्र सरकार की ओर से, कुछ राज्य जहाँ पे टेक्नोलॉजी पर काम होता है, मान लीजिए तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्रा है, कुछ और ऐसे राज्य होंगे जहाँ टेक्नोलॉजी हब्स हैं, हमें उन लोगों को ऑन बोर्ड लाना चाहिए कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टार्टअप्स इस दिशा में कैसे बन सकते हैं, क्या हम स्टार्टअप स्पोर्ट्स में बनाने के लिए, लाने के लिए किन किन एरिया में हमें स्टार्टअप्स शुरू करने चाहिए, क्या उसके लिए आप कुछ सुझाव दे सकते हैं कि आपको इन क्षेत्रों में लोगों को स्टार्टअप्स अपने शुरू करने चाहिए ताकि उनको स्केल अप करके एक बड़ी इंडस्ट्री का गठन हो। अगर आप ऐसे कुछ सुझाव देंगे तो उसका लाभ मिलेगा। फिर टेक्नोलॉजी का कोचिंग, आपने कहा कोच अच्छा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप कोई अंतर्राष्ट्रीय कोच लेते हैं या कोई राष्ट्रीय कोच उच्च कोटि का लेते हैं, कैन वी रिकॉर्ड, कैन वी हायर देम टू क्रिएट अ करिकुलम कि क्या क्या कोचिंग हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होती, राष्ट्रीय स्तर से लेके स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही कोचिंग होनी चाहिए, ताकि जो स्थानीय स्तर पे खिलाड़ी उसको पता है कि उसको अगर देश के लिए खेलना है तो उसका फिटनेस लेवल क्या हो, स्किल्स क्या हो, बेसिक स्किल्स क्या हो, और ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। क्या हम इस पे पार्टनरशिप कुछ लोगों से करके आगे आ सकते हैं? क्या कुछ राज्य कुछ हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे? किसी एक खेल को लेके कोई एक राज्य आ जाए, दूसरे को लेके दूसरा राज्य आए, कुछ कंपनीज को हम लोग हायर करने के लिए तैयार होंगे, और हम एक सेंट्रलाइज्ड कोचिंग द कोच, ट्रेनिंग द ट्रेनर एंड प्लेयर्स के लिए भी कोचिंग उसी फ़ोन पर उपलब्ध करवा सकते हैं, उसी एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवा सकते हैं।
हमने एक मिशन ओलंपिक सेल बनाया है, जो भूतपूर्व खिलाड़ी हैं, कुछ फेडरेशंस हैं, कुछ अधिकारी हैं, उनको जोड़ के वो लगातार हर महीने मिलते हैं जी, शायद 2 बार मिलते हैं। 15 दिन बाद उनका ऑनलाइन और महीने में 1 बार फिजिकल मीटिंग होती है। हम लाखों रुपए लाखों के, अब तो करोड़ों से ऊपर चले गए होंगे खर्चा, लेकिन हमें ये पता है कि 2024 के ओलंपिक्स में कौन कौन सी गेमों में कौन कौन प्लेयर मेडल जीत सकता है। क्या आपके राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था है? क्या आपके माननीय मंत्री को, माननीय अधिकारी को या कोच को ये पता है कि किस खेल में आपका कौन सा खिलाड़ी जीतने वाला है? क्या उसके लिए आपका कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम है कि 20 खिलाड़ी ऐसे नज़र आते हैं जो 4 गेम्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग पे राज्य की सरकार खर्चे पे भेज देती है। हो सकता है वो हमारे टॉप स्कीम में ना आया हो सकता है वो हमारी खेलो इंडिया अकेडमीज में ना आया हो, लेकिन फिर भी उसमें इतना दम है, हमसे ना देखा गया हो, लेकिन आपको उसमें विश्वास है, तो क्या आप अपने 10, 15, 20 खिलाड़ियों को देश या विदेश में खेलने के लिए कोई ऐसी स्कीम ला सकते हैं? तो हमारे देश भर में एक बड़ा टैलेंट पूल उसमें आ सकता है और आपको भी कौन खिलाड़ी मेडल जीतने वाले उसका जानकारी मिलेगी। एक जो कोचिज का कहा, मुझे लगता है NIS में हमें बहुत तेजी के साथ काम करने की आवश्यकता है। बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, लेकिन नए करिकुलम, नई डिमांड जो उसके अनुसार हमें उनको तैयार करने की ज़रूरत है। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी NIS का टाई अप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ भी हो, टाई अप्स जल्दी हो, और जो राज्यों की डिमांड से हमें उनको मीटअप करना चाहिए, करके उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें, उस दिशा में हम लोग कदम उठाएं। एक वर्किंग की बात आई जो हमारी फेडरेशंस, एसोसिएशंस हैं। अगर हम अपने राज्यों के खेल डिपार्टमेंट भी देखेंगे तो आपका जो बजट है वो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट पे ही बहुत चला जाता है। अधिकारी, कर्मचारी, MTS, कोचिज, इन्हीं पे खर्चा है। 70% से ज़्यादा खर्चा इस पे होगा, 20% आपका शायद आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, 10% मुश्किल से आपके इवेंट्स एंड कंपटीशन पर है। आपको इस पे वापस वर्किंग करने की आवश्यकता है। अगर आप तनख्वाह और पेंशन पे ही अधिकतर पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आप आगे क्या करने वाले हैं। इस पे रीवर्क करने की ज़रूरत है, वो आप राज्यों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे लगता है जो हमारी फेडरेशंस है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस, उनकी कार्यप्रणाली और प्रोफेशनल हो। क्या सुजाता जी, हम अपने ACTC वाले प्लान में, मान लीजिए आप इनिशियली जो हाई प्रायोरिटी आपकी गेम्स हैं, आप ऐसी 30 गेम्स के लिए कोई 30 प्रोफेशनल सेंट्रलाइज 3 साल के लिए हायर कर लीजिए, कोई CEO या GM की भूमिका निभाने वाला हो। वो पूल हमारे पास अच्छे प्रोफेशनल्स का हो जो हम अलग अलग फेडरेशंस को दे सकें, उनकी बॉडी को रन करने के लिए खर्चा हम लोग सहें। तो क्या होगा, कम से कम राष्ट्रीय फेडरेशन में तो वो प्रोफेशनलिज्म आएगा। जो आप लोग तय करेंगे कि ये सिस्टम उनको अडॉप्ट करना है वो वैसे कर सकेंगे। उनकी फेडरेशन जो अपनी पॉलिसीज अडॉप्ट करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कम से कम वो अधिकारी वहाँ पे हम लोग नियुक्त कर पाएंगे तो बेहतर हो पाएगा। डोपिंग के ऊपर आपके लगातार सेमिनार हों। नाडा से हम कह सकते हैं कि लगातार स्कूल्स में आपकी जो असेंबलीज होती हैं उसमें भी जानकारी इसके बारे में दी जा सकती है। वहाँ पे स्पोर्ट्स कंपटीशन होता तो वहाँ पे भी देना चाहिए। हमें क्रिकेट में 2 बड़ी समस्याएं आती थी, एक मैच फिक्सिंग और एक बैटिंग की। दोनों में बहुत अंतर है। फिक्सिंग जहाँ खिलाड़ी शामिल होता है, बैटिंग जहाँ बाहर सट्टा लगाते हैं। अब खिलाड़ियों को कई बार पता ही नहीं होता वो किससे बात कर रहे हैं। आप होटल के अंदर घुसे, 200 लोगों का क्राउड है, आपके साथ आए, फोटो खिंचवाई, वो गलत आदमी है, आपके साथ उसकी फोटो छपी, आप मर गए। कहते हैं जी आप उसको जानते हैं। दूसरा, आपके फ़ोन पे किसी ने फ़ोन किया, आपसे किसी ने हालचाल पूछा, 3-4 मिनट बात की, आपने कुछ बताया नहीं लेकिन फिर भी हो सकता आप गलत आ गए। तीसरा, किसी ने पूछा कि आपकी टीम कौन सी खेलेगी, आपने 4 खिलाड़ियों के नाम बता दिए, ये खेलेगा, हम पहले बॉलिंग करेंगे, तो उस पर भी सट्टा लगता है। तो हमने एंटी करप्शन यूनिट को और जागरूक किया और इसके अवेयरनेस कैंपेन हमने रणजी ट्रॉफी, अंडर 19, अंडर 16 इन सब टीमों के साथ करने शुरू किए थे। इसी तरह से ही हमें नाडा को
नाडा की भूमिका उस स्तर तक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जानी चाहिए और राज्य के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ नीचे तक हमें जाना चाहिए, एक करिकुलम तैयार करके उसको एक गेमिफिकेशन इसका करके कि बच्चे जान सके कि क्या चीज़ें हैं। नो योर मेडिसिन ऐप की और जागरूकता नीचे तक होनी चाहिए, आपको ही नीचे तक इसको पहुंचाना है ताकि हर खिलाड़ी को पता हो नो योर मेडिसिन ऐप में आप क्या क्या कर सकते हो। कोलैबोरेशन का बहुत अच्छा सुझाव आपका आया है कि पहाड़ी राज्य में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग से लेके किसी को आप बीचेस पे या समुद्र में जाके सेलिंग या बाकी सब वाटर स्पोर्ट्स करनी तो आप उसके बहुत अच्छा कोलैबोरेशन हो सकता है। यहाँ पर अगर बॉक्सिंग बहुत अच्छा होती है असम में तो कहीं और कुश्तिंग बहुत अच्छी होती है तो उसका आपस में कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है। मुझे लगता है ये अगर एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर ये सब हमारे बीच में आ जाएंगे तो एक भारत श्रेष्ठ भारत वाला मॉडल बहुत सूट करता आपके, उसके ऊपर बहुत शानदार चलेगा और आपको इसको आगे बढ़ाना ही चाहिए। और जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है वो भी इससे थोड़ी कम होगी क्योंकि वो जिस गेम में उसको ट्रेनिंग लेनी वो वहाँ पर जाकर कर सकता है। अडॉप्ट अ गेम, अडॉप्ट अ प्लेयर, जो मैंने कहा कि मुझे अगर अपनी तनख्वाह में से मान लीजिए साल का 1 लाख रुपए देना तो हो सकता है मैं खिलाड़ी अडॉप्ट करूं। मेरी अगर कंपनी है वो 10 लाख तक देना चाहती हो सकता है मैं गेम को अडॉप्ट कर सकता हूं। तो हमें अडॉप्ट करने का ये एक मुहिम चलानी चाहिए कि हम देश भर में सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इसको चला सकते हैं, सेंट्रल पोर्टल से चला सकते हैं, स्टेट लेवल पे चला सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जी, देखिए कईयों के बच्चे नहीं, कईयों के पास पेंशन का पैसा भी आता है। हमने ऐसे भी लोग देखे कोविड के टाइम पे जिनके पास पेंशन आती थी उन्होंने वो भी डोनेट कर दी कि लोगों का उपचार हो जाए। ये देश बहुत अलग मॉडल पे चलता है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकारों से पहले से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं देती आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे दानी सज्जन आपको मिलेंगे, बस ढूंढने की ज़रूरत है। कॉरपोरेट से लेके छोटे लेवल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है उस दिशा में हम बढ़ें। एक स्पोर्ट्स का इकोसिस्टम हमारे पास कब खड़ा होगा? आईपीएल एक शुरू हुआ, अब उसके बाद आपकी अन्य गेमों की लीग शुरू हुई। लीग मॉडल क्यों जरूरी है? लीग मॉडल में ये इंश्योर होता है कि आपको मिनिमम पैसा खिलाड़ी को कुछ ना कुछ मिलेगा। मान लीजिए आप अपने स्टेट की लीग शुरू करते हैं, 2 लाख रुपए ये खिलाड़ी को मिलता है लीग लेके। पंजाब ने मान लो कबड्डी लीग शुरू कर दी और उसमें गेस्ट प्लेयर हिमाचल, हरियाणा, नॉर्थ जोन के बुलाए। गेस्ट प्लेयर खेलेंगे, उनको भी उनका कद बढ़ेगा, उनको और अवसर मिलेगा सीखने का। आपके राज्य में और कंपटीशन बढ़ेगा। आपका कोई लोकल बड़ा कॉरपोरेट नहीं लेकिन कोई लोकल व्यापारी भी अगर एक टीम खरीदेगा तो 40-50 लाख खर्च करने वाले आजकल ढेरों हैं देश में। आसानी से हो सकता है। तमिलनाडु की क्रिकेट लीग होती बहुत सक्सेसफुल है, कर्नाटक की होती है, कुछ बाकी करते हैं। जब ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम खड़ा होगा, आपकी स्थानीय लीग शुरू होंगी, देश की लीग शुरू होती है, तो उतने आपको कोचेस की और आवश्यकता पड़ेगी, उतने ट्रेनर्स की जरूरत पड़ेगी, उतने मैनेजर्स की जरूरत पड़ेगी, उतने आपको डेटा एंट्री वालों की जरूरत पड़ेगी। ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम आपकी उतनी जॉब क्रिएशन करेगा। आज आप केवल कॉरपोरेट, पीएसयू या सरकार की ओर देखते हो, ये स्पोर्ट्स इकोसिस्टम आपकी जॉब क्रिएशन का काम करेगा। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी पॉसिबिलिटीज़ वहाँ पर खड़ी करेगा। तो हमें उस दिशा में काम करना चाहिए कि कौन कौन सी राज्य कौन कौन सी गेम में अपनी अपनी लीग शुरू कर सकता है, उनकी एसोसिएशंस या राज्य की सरकारें इकट्ठे मिलकर करें। कैच द यंग की बात आपने ही कही, इसमें भी स्कूल गेम फेडरेशन और राज्य की सरकार, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, इसको इकट्ठे आना है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स को इकट्ठे काम करने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अलग अलग ही टूर्नामेंट्स कीजिए, अगर लगता है कि उनको लगता है कि आप उनके डोमेन एरिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप इंटरवीन कर रहे हैं, लेट देम डू देयर प्रोग्राम्स, बट you can also go and identify, scout the talent in those tournaments also. Share your suggestions, share your list so that we can work on that. और दूसरा एक जो आता है कि लो कॉस्ट इंफ्रा की बात हुई, बहुत आसान है। मैंने पिछली बार भी कहा था, आज हम फिर उसी पे 1 साल के बाद बात कर रहे हैं। 10-15 लाख रुपए में भी सिंगल बैडमिंटन का कोर्ट बन जाता है, फुल फ्लेज उसका नीचे कोर्ट बनता है, ऊपर से
टीन की जो चद्दर आपकी जो ये शीट्स होती हैं इसी का बनता है, वो ऊपर कटर लग जाते हैं, गर्म हवा को बाहर फेंकते हैं। 2 कोट का चाहिए तो 25-30 लाख रुपए में बन जाता है। अगर आप एक स्टोर साथ में बनाएंगे तो आपकी मैट्स वहाँ पे होंगी, या 2-3 गेम्स के लिए करना तब भी आपका 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक सब बन जाता है, और आपको ब्लॉक लेवल पे इससे बड़ा नहीं चाहिए। और मनरेगा से लेके आपके बाकी डिपार्टमेंट्स भी इसमें सहयोग कर सकते हैं, उसमें आप कर सकते हैं। इसको जरूर करना चाहिए ताकि स्पोर्ट्स इंफ्रा हमारा नीचे तक तैयार हो। एक जो इंडोर स्टेडियम्स आज भी हमारे स्टेट्स में बन रहे हैं, आप बीच में स्टैंड्स बना देते हैं, स्टैंड्स की आवश्यकता नहीं है। पूरे साल में वहाँ पे कोई टूर्नामेंट्स नहीं होते, आपको केवल बेसिक इंफ्रा चाहिए जो उड़ीसा ने कहा। हालांकि उड़ीसा के अपने बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, लेकिन जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कह रहे हो आपको छोटा ही चाहिए, ब्लॉक लेवल पे भी छोटा ही चाहिए। आपको कमिश्नरेट लेवल पे हो सकता है एक बड़ा चाहिए जहाँ पे आके बड़े टूर्नामेंट्स हो, उससे ज़्यादा कहीं नहीं चाहिए। एक मुझे लगता है जो मॉडल स्टेट्स हमारे बीच में बनी हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज स्टेट्स, इनकी अगर हम कैटेगराइजेशन कर लेंगे तो हो सकता है मेरे लिए मणिपुर मॉडल, हिमाचल, उत्तराखंड, इसके लिए वो सूटेबल हो। हरियाणा, उड़ीसा का मॉडल हो सकता है मिड कैटेगरी के लिए हो। लार्जर स्टेट्स का मॉडल हो सकता है किसी और के लिए काम कर पाए। तो मुझे लगता है 3 मॉडल्स हमारे अलग अलग हों। एक दिक्कत यह है कि जो आपकी सक्सेस स्टोरीज हैं वो राष्ट्रीय स्तर पे शेयर ही नहीं होती। उड़ीसा की सक्सेस स्टोरीज हो, हरियाणा की हो, पंजाब की हो, किसी और राज्य की, केरला की हो, हम उसको कैसे शेयर कर पाए? ऑनलाइन करें, टेलीविजन पे करें, पेपर में आर्टिकल्स लिख के करें। लेट अस देयर बी ए कलेक्टिव मॉडल, और उसमें मुझे लगता है हमें एक सेंट्रलाइज स्टेट के साथ एक नोडल ऑफिसर लेना चाहिए, ताकि वहाँ की सक्सेस स्टोरीज को लेके, सफल ऐसी स्टोरीज को लेके हम देश भर में अलग अलग राज्यों में शेयर कर पाएँ। उड़ीसा की स्टोरी अगर केरला के न्यूज़पेपर में छपती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लिखने वाला चाहिए और छपवाने वाला चाहिए। तो मुझे लगता है हमारा सेंट्रलाइज वो प्लान हो, हम उसको इकट्ठा करके करें। और ये स्टार्टअप्स का भी एक हमें सेमिनार कभी जल्दी करना चाहिए। कोई एक राज्य उसको होस्ट करे तो अच्छा होगा। जहाँ स्टार्टअप सबसे ज़्यादा है वहाँ पे हो तो और भी अच्छा होगा। बेंगलुरु में हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, कहीं और हो सकता है, वो उसको सोचना चाहिए। एक पीएचडीज तो बहुत होती हैं, पता नहीं स्पोर्ट्स पे कितनी होती हैं। मिश्रा जी, कितनी होती होंगी स्पोर्ट्स गवर्नेंस पे, स्पोर्ट्स के इंफ्रा पे, या बाकी सब पे, सक्सेस स्टोरीज पे कितनी होती हैं पीएचडी? काफ़ी है सर, काफ़ी हैं। उन पीएचडीज को, थीसिस को भी देखना चाहिए, उसमें है कुछ इम्प्लीमेंट करने लायक, या हमें कुछ और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए जहाँ पे डॉक्टरेट कर रहे हैं लोग, कि हमें इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे कोई रिसर्च करेगा तो हमारे उपयोगी होगा। वाई कांट वी गिव देम द सब्जेक्ट एंड दे शुड डू देयर रिसर्च ऑन दैट। मुझे केवल इतना ही कहना था, पॉइंट्स मेरे पास और भी बहुत है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि हम ये इंश्योर जरूर करें कि फूड का स्टैंडर्ड मेंटेन हो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट में, शौचालय पर्याप्त हो, हाइजीन हो, और तीसरा जो हमें करना है, खिलाड़ी 1 साल मेहनत करता है। बहुत सारी एसोसिएशंस ऐसी हैं जो टूर्नामेंट ऐसे करती है कि एक मैच हुआ, हारे और बाहर हो गए। क्या वो किसी भी खिलाड़ी के साथ न्याय है? आप अपने आप सोचिए। देयर शुड बी ए मिनिमम नंबर ऑफ मैचेस विच शुड बी गिवन टू अ टीम। आई वॉन्ट से अ प्लेयर, टू अ टीम। कम से कम 3 मैच तो खेले बाहर होने से पहले। कैन वी एंश्योर दैट? I think IUA need to pitch in and speak to the various state national sports federation that state association should ensure that the district should participate and they should get at least 3 games before getting out of that tournament. और इसी तरह से क्लब लेवल टूर्नामेंट्स भी नीचे शुरू होंगे तो ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी ही। जो सेक्सुअल हरासमेंट की बात भी आई, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सभी को इंश्योर करना है। आपकी स्टेट एसोसिएशंस में आप चलिए, आप चल जा सकते हैं।
पीटी उषा जी की फ्लाइट है, इनको जाना है। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पीटी, थैंक यू। तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज आपकी बनी हो और आपके यहाँ पर उसके सेक्सुअल हरासमेंट के कोई चार्जेस लगे हैं तो उसका मिनिमम टाइम फ्रेम जरूर होना चाहिए जिसके अंतर्गत उसको डिस्पोज ऑफ आपको करना है, ये आपको इंश्योर करना चाहिए। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मणिपुर ने बहुत अच्छा आयोजन किया, गोविंद दास जी आपका, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपकी सारी टीम का। मेरा पीटी उषा जी से इतना निवेदन है, मणिपुर का लोकल खाना मिल रहा है, 5 मिनट में जरूर खा के जाइए, जल्दी जाना है तो आपको हम पैक करा के आपकी थाली फ्लाइट में भिजवा देंगे। आप सब जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Please remain seated. बहुत बहुत धन्यवाद। Please remain seated. I request all the delegates to please remain seated. अपने हाथ में पकड़ के कैसे चलेगा? थैंक यू। राइट कल्याण जी, थैंक यू। Thank you, sir, for the enlightening concluding remarks. We will meticulously strive to follow the instructions from the Honorable Union Minister, sir, and carry forward the deliberations. We have shared the presentations and also shared the feedback form. We request the delegates to please fill it. Before the vote of thanks, I want to inform all the esteemed guests that we have a sit-down customary lunch, Manipuri Chak, in the ground floor. After this, we will have a visit to the Loktak Lake, for which I request all the guests to start at 2:30 p.m. from here in the vehicles assigned individually to the guests for the proper coordination. I, on behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, thank all the esteemed participants for your significant presence in the 2 days Chintan Shivir under the able leadership of Honorable Union Minister of Youth Affairs and Sports and Information and Broadcasting, Shri Anurag Singh Thakur ji. I am extremely thankful to the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his presence and guiding us all through video address and enlightening us with his visionary ideas towards making India a sports superpower. I thank our Honorable Prime Minister for being with us despite his busiest schedule and sharing with us his finest views on sports development. We all are highly inspired and enthused. I would like to extend sincere regards and gratitude to the Honorable Union Minister, Shri Anurag Singh Thakur sir, for his constant guidance and benign presence during the Chintan Shivir. In spite of his busy schedule, his active presence and constant guidance radiated a source of energy within us. I sincerely express my gratitude to Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports and Home Affairs, Shri Nishit Pramanik sir, for gracing this Chintan Shivir. I also extend sincere thanks to Srimati Sujata Chaturvedi ji, Secretary Sports, and Srimati Meeta Rajiv Lochan ji for guiding us at every step of organizing this Shivir. Sincere and heartwarming thanks to the Government of Manipur for such a warm and lovely reception and their pain and efforts taken to conduct this Shivir. Words fall short while expressing thanks to the Honorable Chief Minister of Manipur, Shri Nongthombam Biren Singh ji, for such active involvement in organizing this Chintan Shivir throughout and having taken care of the smallest things personally, which have made this Shivir a grand success. I also thank Shri K. Govindas Singh ji, Honorable Minister for Youth Affairs and Sports, Manipur, for his constant support and involvement. I would like to extend my heartfelt gratitude to all the Honorable Ministers of Youth Affairs and Sports from the states, the senior officers, and the specially invited speakers who have invested their precious time and graced us with their valued ideas. We feel contented that such a large number of honorable ministers, senior officers, and speakers have given their vital time and actively participated in this Shivir. Organizing this Shivir required a lot of planning and bird's eye for the detail.
I would like to appreciate my colleagues and staff from Ministry of Youth Affairs and Sports who have put up their untiring efforts to make this a grand success. Sincere gratitude to Joint Secretary Development Shri Pradeep Kumar Jha and Shri Arun Kumar Yadav, Director, and all seniors for guiding us. Once again, thanks to all of you for making this Shivir a grand success. Jai Hind. Office of the Imphal Municipal Corporation. Order